very good morning to all of our distinguished guests from all over the world, and morning greetings to our students and other participants. We are going to start the second technical session today, the inaugural session, and I hope it will be a successful day till evening, since you have lots of interesting talks in our project, and we are already behind our time, and I request the chairperson of our technical session 2, Shri Narayan Kumarji, Honorary Director ARSP, to come over the dais. Okay. Okay, then should we wait for him or? Okay, he will join us later. Hello. Okay. Yes, we have a tight schedule, so many things to do and little time in hand, so we must go according to the time. I will request Professor Ananda Bose to come over the dais as he will be giving the keynote address. Has he arrived? Yeah. Please come over the dais. He is from the Center of African Studies, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Sir, please be seated. And I will call upon the speakers of this session. There are 4 speakers, distinguished guests. First, I will call upon Pandita Dr. Inaugural the visiting professor, Bharat of Guyana-India University. And I will call next Shri Anil Joshi, President, Vice-Chancellor, and also he is the Joint Secretary of ARSP. And please, we are very happy that the chair of this section, the Honorable Chair, Shri Narayan Kumarji, Honorary Director ARSP, has just arrived. I request you, sir, to come up from the dais. The chairperson. Thank you. And the next speaker is Dr. Rakesh Pandey. You are also invited to come from the dais. He is the editor of Antar. And the last speaker would be Dr. Jasvinder Kaur Bhimra. She is an eminent writer. Bhimraji, please. So, this is the gala opening of today's first session, which is actually technical session number 2, which consists of regional, cultural and linguistic perspectives of diaspora. And as we know from yesterday, this international conference is going on the interdisciplinary perspectives of Indian diaspora, the way forward. And it is a 3-day conference. The second day is today, and we will commence our program with the felicitations of the chair, Shri Narayan Kumarji. I request our students to felicitate our respected chair, Shri Narayan Kumarji. A big hand. I request our students to come
behind on the dais as it will go through. And the next, I request the students to felicitate our keynote addresser, Professor Ananda Bose. Memento watch and folder from the Department of Sanskrit will be given to him. Next, we will felicitate Pandita Dr. Inaugural with a folder, a memento, a dokra, gift, a watch, and folder. And then, yes, Pandita Dr. Inaugural will be felicitated now. With the tokens of gifts and admiration. This is all from the Department of Sanskrit. Since we are already enough behind our time schedule, so yes, please, this is a Dokra gift from the office of our Vice-Chancellor. Yes. A frame, photo frame from the Department of Sanskrit. Now we will first conclude this felicitation ceremony. I request our students to felicitate the other speakers, Folder and Uttariya. Please come to felicitate Shri Anil Joshi. Shri Anil Joshi ji is being felicitated now by the students of this university. Next, I request our students to felicitate Dr. Rakesh Pandey, editor, Pravasi Sansar. And Dr. Jasvinder Kaur will be felicitated by our students. Dr. Bindra. Now the felicitation is over. Being over, I will request Shri Narayan Kumar ji, the Honorary Director of ARSP, to chair the session and say a few words to the august audience and preside the session with a keynote address by Professor Ajay Kumar Dubey. The chair is requested to open the session. सभागार में उपस्थित विद्वजन और यहाँ मंच पर हमारे सहयोगी रिसोर्स पर्सन्स, यह हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ
मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद यह सेमिनार कर रहा है, जिसमें हम इंडियन डायस्पोरा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स एंड जो है पर चर्चा कर रहे थे। कल इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर बात हुई, जिसमें डायस्पोरा से बहुत उद्भट विद्वान चंद्रशेखर भट्ट जी का एड्रेस हुआ था और सारे विद्वान बोले थे। और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बाद आज चूँकि इंटरडिसिप्लिनरी है, इसलिए सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्षों पर हम विचार करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इंडियन डायस्पोरा के लिए कलकत्ता बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहीं खिदरपुर टीपू से पहले पहल 1834 में मॉरिशस के लिए कुछ मजदूरों को लेकर के जहाज चला था और पहले जहाज में कलकत्ता के, बांकुड़ा के और छोटा नागपुर के 30-34 लोग थे जो वहाँ पहुँचे थे और उन लोगों से सिलेक्टिव सिस्टम खत्म होने के बाद एक नई प्रथा के अंतर्गत काम करवाया गया था। मित्रों, डायस्पोरा का संसार बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जब हम इंडेंचर लेवल करते हैं तो एक सिस्टम के अंदर, इंडेंचर सिस्टम के अंदर कंटैक्ट करके जो लोग गए उन पर विचार करते हैं। लेकिन जहाँ तक सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश है, उसमें तो हम पूरे डायस्पोरा पर विचार करते हैं। कलकत्ता संस्कृत साहित्य संगीत की भूमि रही है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर और सत्यजीत रे की भूमि रही है। इस भूमि को नमस्कार करते हुए हम सबसे पहले अपने बड़े ही वरिष्ठ सहयोगी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में साउथ अफ्रीकन विभाग के अध्यक्ष, डीन रहे, डॉक्टर रहे और डायस्पोरा के लिए संसार भर में सुविदित नहीं नाम, जिनके बारे में मतलब कोई परिचय, कोई अपरिचित नहीं है, लेकिन यहाँ के छात्र विद्यार्थी लोग भी हैं, तो बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पास प्रोफेसर अजय दुबे हैं और अजय दुबे हमारे मेरे बाद की पीढ़ी से डायस्पोरा के सबसे बड़े दिग्गज विद्वान माने जाते हैं। देश विदेश में, संसार में कोई भी डायस्पोरा का देश नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ उनको आमंत्रित नहीं किया जाता है। आज यहाँ आकर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और हमारा गौरव बनाया है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि जो डायस्पोरा का एक सॉफ्ट पावर कल्चर है, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उस पर अपना बीज वर्क करने के लिए आप वहाँ से चाहें। Chairperson of the session, Narayan ji, a very old friend, mentor, senior, organizers of this conference, Calcutta University, Dean, Antarashtriya Sahayog Parishad, a Parishad where I learned my first lesson of diaspora, which was instrumental when I was a student to take me around the world and to expose me to Indian diaspora as a student when I was doing my PhD, which was around the same topic. So I'm very grateful and feel very humble to speak from a conference organized by ARSP. Ananda Bose is there. Earlier, Parishad was there, working over there. So it's a great pleasure also to have such a very eminent diasporic leader, Sahayog Buddhi, and we have ambassadors from Guyana and several other places, my colleagues from the ARSP, my colleagues from the academic students. We heard yesterday about historical journey of Indian diaspora. Diaspora for India is no more historical. There was a time where we treated the Indian diaspora more with a distant approach. Our people who had gone abroad, they are settled there, and we must not do much in terms of mingling with them, because that was a time when
Nehru was Prime Minister, he had his own socialist philosophy. But it was also a time where many countries were getting independence. And that time, complete loyalty to the state system was very, very important, which is still in some states which are not strongly formed, which are at the stage of evolution. There is external loyalty that is still not much recognized. But 90s, we see that globally different countries have their diaspora outside. They started connecting with each other. Diaspora became one of the mega forces to drive globalization, to bring the world together, largely for economic purposes. But for countries like India, which is moving fast with economic development, which has emerged as one of the major power of the world in terms of its demography, in terms of its knowledge economy, in terms of its values and civilizational essential which were missing in the past. The diaspora, which is spread all across the world, is a very important resource for India. And India realized this at the state level only when BJP government came to power. So as I said, for socialist regions or for other regions, diaspora was treated largely for cultural purposes by India. But to see them also as integral part of the Indian foreign policy, accepting that they are citizens of other country, their loyalty remains there. But the multiple loyalty does not mean that one loyalty is at the cost of the other. That's what globalization was also driving at. And it is in this connection that India under BJP government, starting with Vice-Chancellor, started this U-turn of connecting the diaspora for various reasons. To begin with, it was largely with the economic reason, because we were under severe economic stress, because of transition from the state control to market economy, which happened worldwide, not just to us. And at that time, we looked towards our diaspora, our initial policies were largely geared to us then. But over the period, especially under Prime Minister Modi, diaspora has been put in the top gear, not just for financial gain, but for the global aspiration of India, for people of Indian origin, for putting the civilizational and cultural heritage connect, and also for putting India at global stage, not just by Indian achievement, but also by associating with people of Indian origin who are spread in almost all countries across the world. And this new identification, the teaming up of India with Indian diaspora, realizing that they must work for the country of their adoption with full loyalty, but they will also serve their country of adoption by connecting with a country which is one of the emerging global powers. So there is no contradiction which persisted earlier. Countries after countries are now putting Indian diaspora as a catalyst, as a resource to India to connect with them. I remember when the Adam Singhvi Committee, which was formed and it went to South Africa, all of us were told that diaspora is not on the table. We are of Indian origin, please let us talk about other things. And then India decided that as a part of that experiences, mapping those expectations, that India will connect with diaspora only when diaspora is ready and the country of adoption. And probably across the globe that situation has come now. In fact, when President Zuma first time came to India
in clear contrast to the earlier experience. He brought in 2 plain notes of CEO of Indian origin, along with his first bill, and said, here are people of Indian origin, please utilize them and connect with them. I remember in 1900, 2010, when the mini PVD was in South Africa, in clear contrast to what you were told earlier, one-day PVD, all programs were finalized. Ambassador Viren Gupta was the ambassador. President, without prior appointment, said that he wants to visit Durban to address the PVD, mini PVD meeting, unscheduled visit. So that was also unprecedented. And if you hear his speech, which is available, he said, they are resource for us. India must utilize. So the point is that diaspora is now really globally, despite the previous experience, despite the previous restriction of the Cold War or the state-controlled global orders. Now borders have become very porous. 87 countries offer multiple citizenship. Citizenship, which was the sole criteria for the state loyalty, is not there. Now people think the loyalty to citizenship should be there, but the other loyalty must enrich the country, must enrich the culture and civilization that exists in the world. And it is in this connection that soft power is something that has come into big way. It has also come in a big way for India, because India, which was using its soft power with diaspora largely in developed countries, where connecting with diaspora was easy, where India was welcome to connect because they already have multiple citizenship, they were not suspicious of India. Now, India has spread that, proactively tried now to connect with the diaspora which went before independence. A diaspora which is historical, what we discussed yesterday. And in this connection, we hear speeches by Prime Minister Modi that the Kirmitia component, which was there also under Modi government earlier, Sushma Swaraj was involved, is not just one of the connect, but one of the most important connected government of India is going to work. Because it's not the financial need that India is looking toward. It's the right of India holding hand with people of Indian origin. That is important. And the soft power, as Ryan said, the soft power is the power where you attract people, you influence their decisions by appeal, by attraction, not by hard factors, whether economic or military or any other. And it is the first thing that is important is culture. Indian culture among Indian diaspora in India is something that has connected them. Indian culture is a culture of democracy. It's a civilizational heritage. It's a civilizational tradition which made Indian people all over the world as the most acceptable section of their society. And that has now surfaced because India has emerged as a country that demonstrates that culture, that presents to the world with the world respect, and therefore connecting with those cultural assets, the practices, tradition, people, community who are there, is the first soft power connect that India has. And that is altering the decision of which country towards India, towards people of Indian community. And in that, the government has also taken many steps. It has established Indian Cultural Center. It has established also several conferences and meetings and programs and policies to bring people of Indian origin, let them know modern India, and expose them to India. The second thing that is equally important is how diaspora of Indian origin as a soft power connect works for their country and works for India and works for itself. People of Indian origin, Indian descent have earned name in the knowledge economy. You see the CEO,
of all the big corporations, the way they are hired, they head most of the top organization, the graduates from IIT, our medical institutions, they fill most of the top positions. So this is something that presents India and its people their urge for knowledge and excellence, which has been the key feature of Indian civilization and distinction. The knowledge was the most valued thing in the past and even today. So that way Indians are seen as the one who possess knowledge, who excel in this, and this is ultimately the decision of several home countries and host countries to link with the diaspora. Similarly, our informal sources like Bollywood, literatures, artists, all of them have excelled, and they connect and they present the Indian excellence into that. The Bollywood has taken to several countries the Indian tradition, values, its drama, and they see India in a very different term, and the people of Indian origin get that respect, and that again helps connect India with those countries with its own diaspora. Similarly, in the social field also, the diaspora is contributing to philanthropy, connecting with India, and also increasing their earning powers. 125 billion a year is the remittance that India received last year. An amount which is many, many times higher than several countries' GDP. Amount which itself is so high because in 91, when we were transiting from state control to market economy, we were almost going to get bankrupt because we didn't have 2 billion US dollars to pay for our import bill. And the diaspora at that time gave us 8 billion as part of India resurgent bond, mostly from North America and Europe. So diaspora established its connect with India when we are in crisis. And when we are growing, when the world situation is such, the country after country want to respect Indian community, their achievement, respecting Indian global positions. The world is connecting to diaspora, not just with Indian diaspora, to different diaspora, that India must utilize its presence of power to connect with the world through diaspora, both in economic, political, social area. And that's what we will hear today from very distinguished panelists, different aspects of that. I'll stop with that. Thank you for your attention. बहुत धन्यवाद दुबे जी। दुबे जी की विशेषता यह है प्रोफेसर अजय दुबे की कि कम समय में समग्रता तक लोगों को पहुँचाते हैं, जिसको कहते हैं लॉजिकल एंड। और इन्होंने बताया कि सॉफ्ट पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, और सॉफ्ट पावर जहाँ पर पॉलिटिकल पावर फेल हो जाता है वहाँ से सॉफ्ट पावर शुरू होता है। तो आज की दुनिया में ही नहीं, भारत आज़ादी के बाद से ही सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता रहा है, और आज़ादी प्राप्त करने के लिए भी सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करता रहा है। यहाँ हमारे पास गयाना के हाई कमिश्नर, हमारे पास साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर है, मॉरिशस से खुद विश्वविख्यात विदुषी आई हुई हैं हमारी सरिता बुद्धू जी। ट्रिनिडाद इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय पंडितानी इंद्रानी, who is the scholar in BHU now in the Bharat Adhyayana Vibhag. Panditani has been doing cultural work and propagation of Hindi and Indian culture and Indian values since very beginning. And now I request Panditani Indrani that she will give her presentation in 10 minutes with the time. All protocols are observed. Namaste.
Ram Ram Sita Ram in the tradition of my ancestors. And I can say very little in Bhojpuri. Mar Naam, Hamar Naam in Grand. Yeah, that's not good. We have lots of language. So I'm going to try to do this in 10 minutes. I'm talking about the lived experience of the Navi, that is Bharat, in the Caribbean. So in terms of diaspora, I refer to a Navi from which we all emerge. And this is spread in tangible and intangible manifestations across the diaspora. My focus is on the Gurmukha diaspora, whose adornment is around Tritmanis, with its values and spiritual worldview, who embodied people who embodied their textual traditions and some of the Puranas. These people could not sometimes, they didn't have books in the early times, but they knew it. They embodied the knowledge. So when we talk about illiterate people that went, we need to revise that. And these people came from a village ecosystem. We very often forget. It's a village ecosystem. Bharat's village economy, the whole system is very different. And I have been studying this and I'm now able to understand myself better in the Caribbean by understanding village India. Those infrastructures, they underwent severe challenges with adaptation in a Creole and alien space. Creole space is referred to that kind of space where you're neither pure at one end, nor you're neither totally mixed at the other. But there's a lot of hegemony in the area. It's black dominated, it's Abrahamic dominated. And we have been trying to find ourselves in that space. How has India used its soft power versus China in the Caribbean? And I tell you as an observer, living in your little village, almost every nook and cranny in rural villages across the Caribbean, and High Commissioner from Guyana is here will tell you, in Guyana also, Trinidad, these little spaces have Chinese restaurants. I have come here and asked High Commissioners before, why can't you bring this, what's his name, the one who makes the streets and the Hadiram. Why can't you bring Hadiram? Nobody thinks about it. You can overcome that market. Look at how China has done it. In the recent years, India has achieved much success in its global thrust with its soft power as a yoga. Friendship with COVID sharing. Prime Minister Modi has won the hearts of the Caribbean people. There was a little problem in my own country, but I kind of gave my voice on that. I want to suggest a project management approach to India. A project management in managing your soft power outside. Do it like a project. You have aims and objectives. You have goals to achieve. At the end of it, you are able to evaluate. I don't see that happening. I don't see that happening at all. The right people in the right place is important. No square pegs and round holes like we had under the colonial structures. This government has changed so much. I'm so proud to be an Indian and an Indian. More so these days than before. I was never less proud, but I'm very proud of what's happening today in the global market. Now, the Westphalia Treaty had separated post-colonial independent countries by making the diaspora relationship illegitimate with the motherland, as Professor Dubey was showing. You couldn't show loyalty to Bharat. And today that relationship is changing. I'm third generation born, but I've never seen Bharat as my motherland. I've seen it as ancestral motherland. I've seen it as everything else, and I plan to come back here to live. So, but it's still ancestral motherland. We have grown in the diaspora to love where we are born.
as the, the motherland. And that kind of dynamics we will see in music, in the way we express ourselves. Indians do not write on these topics in academia. We need to offer grants to encourage these areas. We write about, the black community and challenges have been well documented. India needs to do more in terms of the diaspora. You have to see us from the outside, you have to see inside. We have done, I think, quite enough as it is. They have reached a kind of plateau right now, I believe, in academia. I'm so tired of these conferences. You go to tell you 50 ships came, 200 people came, they will have this cast. Oh my God. Let's talk as Bibi Lal has said, and given us a third perspective in studying. Look at the creativity and the innovation that we have done by ourselves. Until 1970s, there wasn't much exchange between Bharat and its diaspora. We were mainly cut off by communication. So I remember here being a student in 1970s. Once a month a letter would come. Nothing like a phone call, right? Didn't have phones then. So we didn't have that kind, yet still we kept the fires burning. The ordinary people, never forget that. It's not the middle class or the upper class. It was the performers who gave us a Ram Leela and all the Nautanki and everything. That's what kept us going. For my PPT, can I open the first one very quickly? This one shows you a very famous singer in Trinidad, and what you see the music, the mixing that has happened, the video link by Anil Beam is the Indian national anthem. We call it the Indian national anthem. Does he understand what I'm saying? The video link. And Sohani Rat is our national anthem, okay? So it connects way back to even now. And this young man, no, that's not the video link. That's the PPT. At the very top, you have the video link in blue. So I just give you a little bit there what he has done in mixing the music. So we are mixing music today. The young people in the Caribbean, reggae and so on, with their Indian music. So things are happening. Yeah, that's the one. Can you get that? And then I'm going to tell you a little bit about Nobel laureate Derek Walcott, who in 1992 delivered his Nobel lecture based on Ram Leela.
shiny things. I made my own border and my pallu, and I came all the way from Trinidad to Varanasi with the sari that I made. Thank you very much. बहुत धन्यवाद इंद्राणी जी। दोस्तों, ये उस जगह से आती हैं जहाँ वीएस नवपाल को रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद किसी भी इंडियन ओरिजिन के आदमी को नोबेल प्राइज उस जगह से आती हैं जहाँ दिवाली मेला बंगाल के दुर्गा पूजा से ज़्यादा जोरदार और वो सौंपा। लेकिन आप लोगों को समझने के लिए बता दूं कि कैरेबियन जहाँ गयाना है या ट्रिनिडाद है, जमाइका है, हमारे नए बच्चे उसको वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, और ये उस जगह से आती हैं जहाँ के लोग देश को, संसार को बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर किए थे और अब योग और क्रिकेट के शौक था। तो ऐसी जगह थी इंद्राणी जी अब ट्रिनिडाद से वाराणसी आकर के आमंत्रित कर रही है और अब आमंत्रित करता हूँ एक ऐसे वक्ता को जो पूरब और पश्चिम दोनों में भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, एक विचारक के रूप में, साहित्यकार के रूप में, लेखक के रूप में और राजनीतिक के रूप में हमारे पास बैठे हुए हैं श्री अनिल जोशी, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और हमारा हिंदी वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष हैं। लेकिन इसके अलावा ये लंदन में और फिजी में दोनों जगह भारतीय साहित्य और संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, अधिकारी रहे हैं और इन्होंने इन दोनों देशों में पूर्ण काम किए हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि दो बात अपनी जरूर बताया, मैं अनिल जोशी को आमंत्रित करता हूँ और इनके वक्तव्य से आप समझ जाएंगे क्या है। अनिल जोशी। आदरणीय नारायण जी, आदरणीय जयपुर जी, आदरणीय रानी जी, राकेश जी, जी और मेरे साथ बैठे हुए आदरणीय एक्सीलेंसेस गुयाना से और तो प्रमुख महिलाएं इंद्राणी जी और सरिता बंधु जी जो विदेश से आए हैं, ARSP के सभी सदस्य आदरणीय रानी जी और सभी साथी और विशेष रूप से विद्यार्थी जो हम सब लोगों को सुनने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हम सब लोग कमल किशोर मिश्रा जी का भी अभिनंदन करते हैं, जिसके कारण से इस आयोजन में हम सब लोग जुड़ कर यहाँ के कुलपति रजिस्ट्रार सभी लोगों का। मित्रों, जो आज का विषय है वो भाषा और संस्कृति, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। और जैसा आदरणीय नारायण जी ने मेरे परिचय में भी बताया, मेरी एक पुस्तक भी है प्रवासी लेखक नई जमीन नया आसमान, जो कि काफी विश्वविद्यालयों में शोध ग्रंथ के रूप में पढ़ाई जाती है। एक समय था जिस समय मैं 2000 में ब्रिटेन में गया था, उस समय में प्रवासी साहित्य कोई ऐसा विषय नहीं था जिसको भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता। समय बदला है और अब बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर प्रवासी साहित्य पढ़ाया जाता है और मेरी पुस्तक भी उस तरह से रेफरेंस बुक के रूप में तो बहुत सारे स्थानों पर इस संदर्भ में बात भी होती है। फोन आते हैं, लोग जो शोध करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। तो एक बड़ा विषय जो है वो उठकर आता है। वो विषय ये है कि ये जो प्रवासी साहित्य जिसको हम कहते हैं, NRI लिटरेचर बोलते हैं, क्या इसका कोई काल विभाजन है? ये किस टाइम पीरियड में डिवाइड किया जा सकता है? तो मैंने कोशिश की, क्योंकि अब ये विषय ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ एक सैद्धांतिक विषय विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। तो पहली बात तो ये थी कि प्रवासी साहित्य के किसी काल विभाजन की जरूरत है भी या नहीं है, क्या किसी ने उसका काल विभाजन किया है तो क्या काल विभाजन किया है,
जो काल विभाजन किया है क्या वो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, क्या वो काल विभाजन किसी देश को सापेक्ष संदर्भ में रखकर किया गया है, या वो यूनिफॉर्म तरीके से हम उसको इट भी अप्लाई टू अदर डायस्पोरा। तो बहुत सारे सवाल हैं इससे जुड़े हुए। तो मैंने ये देखा कि चूंकि प्रवासी साहित्य एक नया विकसित होता हुआ विषय और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत पुस्तकें भी नहीं है, जैसे मैंने एक पुस्तक अपनी पुस्तक का तो उल्लेख किया, तो जिन लोगों ने इस विषय में लिखा है उसमें डॉक्टर कमल किशोर गोयल का है जो कि बड़ा अच्छा लिखते हैं स्वयं, एक विमलेश कांति वर्मा जी हैं, और भी कुछ लोगों ने मोटे तौर पर प्रवासी साहित्य का इतिहास लिखा। तो उन्होंने जो काल विभाजन किया है उसके बारे में हमको जैसे मैं इनको देख रहा था, इनकी पुस्तक हिंदी प्रवासी साहित्य का इतिहास कमल किशोर गोयल का की, तो उन्होंने प्रवासी साहित्य को जो उसकी काल विभाजन किया वो उस तरह से किया है कि फ्रॉम 1834 से लेकर 1900 तक का एक काल विभाजन 1900, फिर 1900 से लेकर 1935, फिर दूसरा पीरियड उन्होंने उसको माना है, उत्तर प्रारंभिक काल माना, और फिर 1935 से लेकर 1935 से लेकर 1968 तक उन्होंने उसको संघर्ष काल माना, क्योंकि कई डायस्पोरा कंट्रीज इस पीरियड के बीच में आजाद हुए, जैसे फिजी आजाद हुआ, मॉरिशस आजाद हुआ, और 1968 के बाद के समय को आधुनिक काल माना। ऐसे ही एक जो पीरियड जनरल डायस्पोरा का भी दिया गया है। कई लोगों ने जो सामान्य डायस्पोरा, जिसमें केवल हिंदी डायस्पोरा नहीं, जिसमें अंग्रेजी में भी जो लिखने वाले लोग हैं, जुब्बा लहरी, अमिताभ घोष और ये सब जो लोग हैं जो बाहर लिख रहे हैं, उनका भी काल गणना की गई। तो ये जो काल गणना की गई है, क्योंकि हिंदी साहित्य में भी हम जानते हैं रामचंद्र शुक्ल ने इसको किया और काफी बड़ा महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य को समझने के लिए। तो जो प्रवासी साहित्य में ये जो काल का विभाजन किया गया है, क्या ये जैसे ये बात है कि वैज्ञानिक है, क्या ये किसी देश के संदर्भ में, क्योंकि गोयल विशेष रूप से मॉरिशस के विशेषज्ञ थे, इसलिए उनकी जो पुस्तक भी है प्रवासी हिंदी का प्रवासी साहित्य का इतिहास, वो काफी हद तक मॉरिशस केंद्रित है। और शायद यही कारण है कि 1968 को एक महत्वपूर्ण वर्ष माना गया, क्योंकि 1968 के अंदर मॉरिशस आजाद हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें, कुछ बिंदु तो जैसे मैंने आपके सामने रखे हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक जो काल विभाजन हो सकता है, जो प्रस्तावित काल विभाजन और जो विमर्श के लिए मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करें, जिसके ऊपर से कुछ एक विकसित करने, तो उस काल विभाजन को विकसित करने की कोशिश करें। कल भी जो है ये मॉरिशस की तरफ से आदरणीय सहिता बुद्धू जी ने जो कहा, वो ओरल जो साहित्य है, जिसको मौखिक साहित्य कहते हैं, उसकी बात की गई। अपने मुला राय ने भी ओरल नैरेटिव्स की बात की। तो 1834 1834 वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि गिलबिट का स्टार्टिंग का समय। तो 1834 से लेकर 1900 तक, और ये उन्होंने भी माना है, उसमें हमारे पास ओरल एविडेंसेस, ओरल डॉक्यूमेंटेशन ही उपलब्ध है ज्यादातर। उसमें हमारे पास मौखिक साहित्य है। तो जो पहला जो काल है 1834 से लेकर 1900 तक, 1834 से लेकर 1900 तक, ये एक प्रारंभिक काल है। इसमें मुख्य रूप से मौखिक जो है प्रमाण, जैसे गीतों में हो गया, लोकगीत हो गया, खासतौर से शादी में हो गया, कुछ स्थानों पर रामलीला प्रारंभ हो चुकी थी। मैंने सहिता बुद्धू जी से भी बात की, तो कुछ स्थानों पर रामलीला वगैरह इत्यादि ऐसे फंक्शन होने लगे थे, परंतु लिखित रूप में बहुत कम जगह पर उपलब्ध है। कुछ लोगों ने इंग्लैंड वगैरह जा गए, उन्होंने कुछ चीजें जैसे काका कालांतर का मिलता है कि वो गए 1883 के अंदर उन्होंने कुछ लिखा, लेकिन मोर और लेस ओरल एविडेंसेस जिसमें मिलते हैं वो है 1834 से लेकर 1900 तक का समय। दूसरा पीरियड जो हमें ध्यान में आता है वो है 1900 से लेकर 1980। ये पीरियड ऐसा क्यों है? क्योंकि 1918 वो पीरियड है जहां पर ये जो गिरमिटिया प्रथा है ये समाप्त हो। तो गिरमिटिया प्रथा समाप्त हुई और खड़ी बोली हिंदी लिखी जाने लगी।
इसके दो बड़े प्रमाण क्या है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मणिलाल है वो दो देशों में गए, पहले मॉरिशस में गए और फिर भारत के अंदर वो फिजी के अंदर गए। तो एक स्थान पर उन्होंने हिंदुस्तान, एक स्थान पर सेटलर नामक पत्रिका निकाली। इस पत्रिकाओं में जो गोयनका जी भी एविडेंस देते हैं कि उन पत्रिकाओं में एक जगह पर 1913 में होली और सत्य होली करके ऐसी कविताएं छपी, तो वो उसको प्रारंभिक कविता के रूप में मॉरिशस के लोग मानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हमारे सामने आता है वो तोताराम सनाडे का, जो कि यहाँ पर 1914 में पब्लिश है। तो ये वास्तव में लिखित साहित्य की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुआ वो तोताराम सनाडे की, जो बनारसी दास चतुर्वेदी ने जिसको लिखा था, और तोताराम सनाडे ने इसको बोला था, मेरे फिजी द्वीप में 21 वर्ष। तो पहला जो पीरियड आता है, जो ये पीरियड है 1900 से लेकर 1918 तक का, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक गिरमिट प्रथा थी, और यहां से हमको लिखित गद्य के प्रमाण मिलते हैं। एक बात और ये भी ध्यान में रखने की है कि जो पहला पीरियड है वहां तक खड़ी बोली गद्य बना भी नहीं था। भारतेंदु के आने के बाद 1870 से हमको खड़ी बोली गद्य भारत में दिखने लगता है। इससे पहले तो बोलियां ही ब्रजभाषा, अवधी, मगही, इस तरह की जो बोलियां हैं वो ही प्रचलन में दिखाई देती हैं। तो खड़ी बोली गद्य था ही नहीं, तो उन देशों में भी कैसे हो सकता था। तो इसलिए दूसरा पीरियड जो समझ में आता है वो 1900 से लेकर 1980 तक का पीरियड। तीसरा पीरियड जो है वो 1980 से लेकर 1947। अब 47 के बॉर्डर्स के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान आजाद हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान के आजाद होने का इन देशों से सीधा संबंध भी है और उसका प्रभाव भी है। हर देश के अंदर भारत के हाई कमीशन बनने लग गए, भारत की एम्बेसी हुई, भारत की किताबें गई, भारत का कल्चर सेंटर बना। तो संस्कृति की दृष्टि से, जिसे अभी अजय दुबे जी बता रहे थे, संस्कृति की दृष्टि से बहुत बड़ा प्रभाव 1947 से पड़ने लगा। और 1918 से लेकर 1947 तक there is ample literature in Mauritius and Fiji। मैं फिजी में तो स्वयं था, कम से कम 10 अखबार निकलते थे जो फिजी के अंदर निकलते थे। ये जो देश शांति दूत जो कि 70-80 साल चला, वो शांति दूत उसी पीरियड में 1935 के अंदर शुरू हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारे अखबार, बहुत सारे संग्रह, बहुत सारे लेखन, बहुत सारी कहानियां ये 1947 में शुरू होते हैं। और 1947 से शुरू होता है वो काल जिसको हम भारत की आजादी कहते हैं, और ये बदलाव का काल प्रारंभ होता है। 1947 से लेकर 1980 तक एक पीरियड है। वो पीरियड ये पीरियड है कि 1980 में पहली बार, जिसको कल भी भाषण के अंदर न्यू डायस्पोरा कहा गया, वो न्यू डायस्पोरा इमर्ज होता है। वो तब तक नहीं था। 1947 से लेकर 1980 तक, अभी जो हम 1834 से सोच रहे हैं, हमारे पास वही ओल्ड डायस्पोरा था, हमारे पास वही गिरमिटिया कंट्रीज थे जिनके लिटरेचर हमको ज्यादा दिखाई देता है। परंतु 1947 से लेकर 1980 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर जो साहित्य लिखा गया उसको हम एक काल गणना में रख सकते हैं। और 1980 में जब वेस्ट में हमारा इमिग्रेशन शुरू होता है, वेस्ट में डायस्पोरा बनना शुरू होता है, कंप्यूटराइजेशन शुरू होता है, आईटी प्रोफेशनल्स जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, बीबीसी इत्यादि जो है, वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी, इन सब में, और जर्मन में और फ्रांस में भी हमारे रेडियो के लोग जाते हैं। तो इन सब के कारण से जो डायस्पोरा, नया डायस्पोरा है, उसका जन्म होता है। आप पुराना डायस्पोरा जो है वो लिख रहा है, परंतु नया डायस्पोरा का जन्म हो जाता है। और जैसे इस पीरियड में 1980 से लेकर 2000 तक सिंघवी जी जो है वो वहां पर चले जाते हैं, ब्रिटेन के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह से अमेरिका के अंदर लोग सुषम बेदी, गुलाब खंडेलवाल और कई लेखक उसमें वही शक्ति सब लोग लिखने लग जाते हैं। बीबीसी के लोग लिखने लगते हैं, ओंकारा श्रीवास्तव है, कीर्ति चौधरी है। तो नए डायस्पोरा का जन्म 2000, हमारे मित्र भट्ट जी से कल मैं पूछ रहा था, उन्होंने कहा अपने भाषण में कि 2000 वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने उनको कहा कि आपको तो लगता है कि 2000 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई जगह 2003 का उल्लेख है आता है, परंतु ये राइटली सेड कि 2000 में पहली बार डायस्पोरा कमेटी बनी। तो जो डायस्पोरा कमेटी बनी, फिर डायस्पोरा कमेटी की रिकमेंडेशन आई और 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट।
पहली बार उसी समय के अंदर हम देखते हैं कि प्रवासी साहित्य शब्द का प्रयोग, ये जो पश्चिमी साहित्य, इसके लिए जो पश्चिमी हिंदी लिखी जा रही थी, फुटकर तरीके से लिखी जा रही थी, सत्येंद्र जी वगैरह लिखते थे, गुलाब कंडे वगैरह लिखते थे, सुषमा बेदी लिखती है कि मैं तो प्रवासी साहित्यकार के रूप में जाने नहीं जाते थे, परंतु 30, 35, 40 लेखक लिखने लगे और फिर 2000 में प्रवासी साहित्य शब्द आने लगा। हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अक्षरम के नाम से किए 2002 में, और बहुत अच्छी बात है, सहयोग है कि हमारे नारायण जी जो इसको चेयर कर रहे हैं। एक विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था सूरीनाम में, दैट वाज आल्सो अ टर्निंग पॉइंट कि 2002 का जो विश्व हिंदी सम्मेलन था, उसमें विश्व हिंदी रचना में जिसका गोयनका जो उल्लेख करते हैं वो छपी थी, तो उस समय में पहली बार वैश्विक स्तर पर प्रवासी हिंदी साहित्य ये शब्द प्रचलन में आने लगा। अब इसके बाद बात करते हैं जो अंतिम पीरियड है वो है 2014। अभी 2014 क्यों है? 2000 से लेकर 2014 तक। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रवासी साहित्य अब शब्द तो स्थापित हो गया, लेकिन विश्वविद्यालयों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, जैसे अभी हमारे गुजरात से और वर्धा से लोग आए हैं, उसके अतिरिक्त तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर JNU में सब जगह पर प्रवासी साहित्य पढ़ाया जाने लगा। जब पढ़ाए जाएंगे तभी तो व्यवस्थित रूप से, सिस्टमैटिक और वैज्ञानिक रूप से ऊपर विचार होने लगेगा। तो पहला बड़ा कारण यह है कि वैज्ञानिक रूप से वो स्थापित हो। दूसरा यह है कि भारत पहली बार विकासशील देश के बजाय एक महाशक्ति के रूप में दुनिया में स्वीकार किया जाएगा। तो भारत के बारे में दृष्टि बदल गई। भारत जो अभी तक विकासशील देश था वो अब एक महाशक्ति के रूप में हुआ, और इस काल के अंदर जो पश्चिम में लिखा, जो जिसको नया डायस्पोरा का, इसका साहित्य दुनिया भर में प्रमुखता लेने लगा, क्योंकि विभिन्न देशों में जो भाषा की स्थिति थी वो उतनी अच्छी नहीं रही जितनी अच्छी शायद 1980 तक थी या 2000। जैसे कल भी उन्होंने कहा कि 5वीं 6वीं जनरेशन है, तो 4थी 5वीं जनरेशन आते आते भाषा का ह्रास वहां पर होने लगा। लेकिन पश्चिम में नए देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, सिंगापुर था, कनाडा था, ये सारे देश जुड़ने लगे। तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर ये काल विभाजन हमारे ध्यान में आता है, और अगर हमको वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अगर हमें प्रवासी साहित्य पढ़ना है तो इस काल विभाजन को समझना पड़ेगा। धन्यवाद। विश्वविद्यालय में भी प्रवासी साहित्य पढ़ाया जाता है, हिंदी में पाठ्यक्रम भी है। और अभी तक जब हम डायस्पोरा के बारे में सोचते हैं, तो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के बारे में सोचते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमने जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद से डायलॉग विद डायस्पोरा में तमिल, तेलुगु, पंजाबी का कार्यक्रम रखा, अब बंगला और उड़िया का रखने वाले हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ साहित्य इन भाषाओं में लिखा जा रहा है जो प्रवासी भारतीय लिखते हैं। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि मॉरिशस में एक तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग के लिए वहाँ टैगोर इंस्टीट्यूट है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से उनको याद करते हुए स्थापित किया गया है। और वहाँ लोगों को सृजनात्मक साहित्य के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ कहा। 2003 में सूरीनाम में सम्मेलन हुआ था, जिसमें मैं सलाहकार था, और अंत में मैं कुछ कहूँगा कि अभी पत्रिकाओं के बारे में चर्चा हुई और हमारे पास प्रवासी संसार के संपादक और बहुत ही ऊर्जावान लेखक, इन्होंने महात्मा गांधी, भारतीय संविधान और प्रवासी साहित्य पर बहुत काम किया है, निरंतर काम कर रहे हैं। श्री राकेश पांडे से कहूँगा कि वे संक्षेप में बहुत सारी बात करने के लिए इच्छाएं हैं। नारायण कुमार जी, अजय जी, हमारी तामिल जी, रानी जी और पीर जी, और सामने सभी लोग जो बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर सभी लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, जिन लोगों ने डायस्पोरा पे बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। मित्रों, चूंकि समय कम है, पहले संक्षेप के लिए बोल दिया गया है।
तो हमको भाषा और संस्कृति में बात करनी है। एक चीज चूंकि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ तमाम देशों में जाने का, मैंने जो महसूस किया, क्योंकि जो लोग बाहर से संस्कृतियां भारत आए, भारत के लोग बाहर की संस्कृतियों से बहुत प्रभावित हुए, हमने उनकी संस्कृतियों को अपनाया। लेकिन गिरमिटियाओं के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं, जो हमारे गिरमिटिया बंधु हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को लेकर बाहर गए, उन्होंने उसको बहुत सहेज के रखा। वो उस प्रकार नहीं बदले जो लोग यहाँ रहने वाले बदल गए जिस परिप्रेक्ष्य में। इसकी जगह दोनों की तुलना करेंगे कि आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव मिलेगा कि हम लोग बदल गए जो यहाँ रह रहे थे, और जो लोग यहाँ से वहाँ ले गए हमारी संस्कृति को गए, वो लोग नहीं बदले। सरिता जी इसका प्रमाण बैठी हैं, मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ। इंद्राणी जी रावण जो है रामायण में बहुत काम है। मित्रों, हमारे सामने एक, मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर इस बात को और मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक बार मैं लगभग चूंकि अनुभवों से मैंने बहुत सीखा है। अब मैंने जो लोग जानते हैं कि प्रवासी साहित्य के, गिरमिटिया साहित्य के बहुत बड़े लेखक हिंदी में अगर प्रेमचंद के हैं, मौसम से प्रेमचंद भारत आए अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझको हमारी चाची को सिंदूर लेना है। जैसे अब तो सिंदूर की परंपरा भी प्राय बहुत नई लड़कियां नहीं लगाती हैं, तो मैं उनको दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेकर बहुत मोहल्ले की दुकान में, बड़े बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ मुझे लगता है संस्कृति के में बदलाव को लेकर, मैं उनको अनेक दुकानों पर लेकर गया कि सिंदूर लेना है। और वो सिंदूर कैसे अपने यहाँ होता है, दिल्ली में हंस रहे हैं, वो प्राय लाल रंग का होता है, और जो कि केमिकल होता है एक तरह का। वो बार बार उनको जो है वो दुकानदार उनको दिखाता था और वो मना कर देते थे, पति पत्नी दोनों लोग, कि सिंदूर नहीं चाहिए। अब वो परेशान हो गए कि वो मॉरिशस से आए हैं और उनको दिल्ली की राजधानी में सिंदूर नहीं मिल रहा है। अब वो एक हम छोटी दुकान पे गए तो उसने बड़े उलझ कर कहा, खींच कर कहा, क्या आपको हनुमानी वाला रंग चाहिए? अब चूंकि उत्तर प्रदेश बिहार में जो है वो जो सिंदूरी रंग का सिंदूर लगाया जाता है आज भी, बेसिकली वो सिंदूर होता है। अब लेकिन महानगरों में जो सांस्कृतिक बदलाव हुआ, उसमें जो लाल रंग का जो सिंदूर केमिकल का जो प्रकार की दुकानों में मिलता है वह सिंदूर लगाते हैं, तो उसको मानसिक रूप से वह स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि यह सिंदूर है। मित्रों, हमारी जितनी भारतीय भाषाएं हैं इन तमाम देशों में सुरक्षित हैं, उनके अभी वह खत्म नहीं हुई हैं। ट्रिनिडाड में जैसे हिंदी या गयाना में हिंदी जरूर खत्म हुई है, लेकिन अभी बीच वहां पर उसके जीवित हैं। कल बात मुन्ना लाल जी ने की थी चर्चा में, फिजीमा का जिक्र किया, क्योंकि बहुत समय नहीं बोलना है। मैं आपको फिजी में सुरमणि जी का एक प्रसंग बताता हूँ। मैंने वो साक्षात्कार किया। सुरमणि नाम सुनने से लगता है आपको कि वह साउथ इंडियन होंगे, दक्षिण भारतीय होंगे। 1034 पृष्ठ का शायद आज उपन्यास भारत में भी कोई नहीं लिख रहा होगा, और मुझे सौभाग्य रहा मैं फिजी में भी और भारत में भी उसके विमोचन में रहा। उसकी भाषा भी काम में एक सैंपल आपको मैं दिखाऊंगा। और वो मैंने उनसे पूछा कि आपने लिखना किससे सीखा है ऐसे, क्योंकि वहां भी राजनीति है, फिजी में भी खड़ी बोली बनाम क्षेत्रीय बोली, क्योंकि वहाँ अवधिगत मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं एक मेरा उस पर और जिज्ञासा भी जानने की। अब आपको मैं बताऊं कि उन्होंने तुलसीदास से लिखना सीखा है। मैंने कैसे कहे, वो धीरे धीरे लिखते थे, उन्होंने बहुत लिखा, लेकिन धीरे धीरे लिखते थे, मैं वो धीरे धीरे लिखता हूँ। तो मैंने आपने सीखा कैसे, आपको अंग्रेजी है यहाँ? कहे मेरे पिताजी एक अंग्रेज के यहाँ काम करते थे, तो जो अंग्रेज रद्दी को फेंक, मेरे पिताजी को रद्दी फेंकने के लिए दिया करता था कि चाहे उसको फेंक आओ या कबाड़ी बेच दो, मेरे पिताजी उसको सहेज कर रद्दी को मुझको पढ़ने के लिए अपने घर उठा लाया करते थे। तो मैं उसको रद्दी को पढ़ के हिंदी लिखना सीखा हूँ या अंग्रेजी लिखना सीखा हूँ। बस मेरे घर की स्थिति ये नहीं थी कि मैं स्कूल में जाके सीखूं उसको। तो जो ये संघर्ष रहा भाषा और संस्कृति को बचाने का, ये गिरमिटियों को हमारी बहुत सीखने की बात है। अब इसकी मैं आपको जो फिजीमा का जिक्र हुआ, मैं उसकी भाषा आपको उस उपन्यास की पैरा सुनाता हूँ। कथा हो रही है, उस कथा का विवरण है। सत्यनारायण जैसे हम लोगों की कथा होती है, प्रसाद बटा, पंजीरी, खीरा, तरबूज और हलवा, सवेरे रोट चढ़ा। और रोट शब्द जो है वो वही लोग जानते हैं जो बिल्कुल गांव से जुड़ गए हों। रोट चढ़ा, सबका मीठा रोटी मिला, हमारे प्लेट में खीरा और तरबूज पंजीरी के सनाए गए। सनाए गए शब्द जो है कि जो मिक्स हो गया दोनों। अब वो खड़ी दिल्ली बहुत नहीं समझ पाएंगे कि सनाए गवा।
रामायण खलास होके देर नहीं, सांझ सोपुर शुरू, राम पर हाथ उठा के चुप कराई, जोर से खखार के गटई सफा की हिस। अब जोर के खखार के गटई सफा की हिस। कोई बोले बिना आपन भाषण शुरू करे, रामचरितमानस के बिना हम फिजी वासी सब अनाथ हैं। कटिया धीरे से फुसफुसाई बिंदा के कान में। अब फुसफुसाई शब्दावली में बार-बार कान में फुसफुसाई बिंदा के कान में, तो जो उन्होंने पात्र लिया, पात्र क्या लिया? बिंदा, जो भारत के भी किसी गांव का ही पात्र होगा, शहर का पात्र नहीं होगा। ये लंबा है, मैं छोड़ रहा हूं। तो मित्रों, इस प्रकार जो हमने भाषा और संस्कृति को हमने हमारी गिरमिटियाओं ने सहेजा है। अभी मेरी उत्तर प्रदेश सरकार ने किताब को सम्मानित किया, वो कजरी पे और बारामासा पे थी। तो मैं जब कजरी पे काम कर रहा था तो मेरे मन में आया कि गिरमिटिया देशों में भी कजरी और बारामासा गया होगा। तो मैंने फिजी और मुझे सूरी खोज करते समय मुझे बहुत सुंदर कजरी मिली सूरी नाम की और वहाँ की अपने फिजी की। मैं आपको एक ये आप ताजुब माने कि उन लोगों ने कैसे रचा उसको, और उनका जैसे वहां पे सरदार काम कराने आता था। अभी कजरी जो मिली हमको, ये एक मुन्ना, एक वहां पर सुनीता नारायण है, उनकी नानी की डायरी में दर्ज थी, 90 पुरानी डायरी में, तो वहां से नोट करके उन्होंने कजरी को भेजा। अब कजरी क्या है सुरीनाम से? आए सरदार भार काम है भारी, किलबिल करे दरोगा, सांझ का ठोके केवारी, नींद के मारे व्याकुल होइए दैबे हजारन गारी, आए सरदार काम है भारी। अब ये पूरी परिस्थिति को ये कजरी जो है ये बता रही कि सरदार जब काम कराने आता था तो कैसे दरवाजा को खटखटाकर हमको उठाता था। हाथ में अपने कनक को दारी, बगल में कटनी दावे, तेरे रामा बगल में कटनी दावे, आगे आगे चले दरोगा, पीछे है नरनारी, आए सरदार का मरघारी, न्यूरे घास कटावे, काटी ना जाए कटारी, आंगन ऐसे चिकन मांगे। आंगना जो है ऐसे चिकना मांगता है, आंगन ऐसे चिकन मांगे, गुरु कहा ये काम है भारी, आए सरदार काम है भारी। अंत में 4 महीना काम करावे, छठवें दे उधारी, कह कबीर सुनो भाई साधु, दास केवल हारी, आए सरदार काम है भारी। इसी प्रकार की ये फिजी से है, उसका भी एक मैं सुन दे रहा हूं। भाषा इसमें ना जो मूल बात है, उनका जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य है वो तो भारत से जुड़ा है, लेकिन समय के साथ जो शब्दावली है वह कैसे बदलाव है। जैसे कृष्ण जी के ऊपर है, हे सखी आज मुझे शाम से मिलाए दे, मुझे शाम से मिलाए दे, हे सखी मुझे, उसमें कानन कुंडल हाला कन्हैया, कजरारे के है नैना इनके, मधुर मुस्काना कन्हैया नैना तिरछी राके। भले इनका मीटर, भले इनकी लय थोड़ी सी गड़बड़ हो, लेकिन जो इनके भाव, जो शब्दावली है वो भारत की आज भी भारतीयता वही रची बसी है। मित्रों, बहुत लंबा हो जाएगा, वहां मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ मुंशी रहमान खान, तमाम मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है, मैं उनको पढ़ के सुना सकता हूँ कैसे इन लोगों ने अनपढ़ जो लोग थे, जो नहीं जानते थे, रामायण की शैली में कैसे मुस्लिम उन्होंने अपने रसूलुल्लाह का उनको पूरा एक तुलसीदास की चौपाइयों के माध्यम से उन्होंने उनका वर्णन करके सिखाया। और अभी जैसे सुहानी रात की चर्चा तो हमारी रानी जी कर चुकी है, वहाँ का राष्ट्रीय गीत है। मैदानी रामायण की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जो पीएचडी है वो लोक साहित्य पर है, अभी लोक नाट्य पर है। जो आप इन देशों में आप रामलीला देखते हैं, ये तो आज पैसा आ गया, आज वैभव आ गया, आज मंच बनने लग गए, लेकिन जो भारतीय संस्कृति का जो वहां पर इतना विस्तार हुआ, वो मैदानी रामलीला के बीच में, जैसे आप इंडोनेशिया जाते हैं तो उसको भी आज देखते हैं, लोग बीच में जो है वो अपना मंचन करते हैं, लोग चारों तरफ उसके बैठते हैं। उसी प्रकार जो है गांव बाहर जो ये होता है गाँव में, तो मैदानी रामलीला आज भी उन देशों में और संस्कृति में गंगा तालाब मॉरिशस से बैठी हैं, त्रिता जी दिवाली नगर ट्रिनिडाद में, इस प्रकार के पूरा। और मुझे जो लगता है अंत में कि हमको अपने गांवों से डायस्पोरा जोड़ना, हमारा अभी जो मैं कभी देखता हूँ, जो हमारा शहरी वर्ग है वो डायस्पोरा से जुड़ रहा है, हमारे गांव भारतीय डायस्पोरा से अभी नहीं जुड़े हैं। मैंने जो महसूस किया जब भरत जगदेव अमेठी आए, भरत जगदेव गयाना के राष्ट्रपति रहे, मैंने उनको देखा। अब हमारे बहुत सारे गांवों में अब तो चूंकि प्रचार माध्यम आ गए, टीवी आ गया, लोग मॉरिशस का नाम जानते हैं, गयाना का नाम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते कि वहाँ क्या है। उन लोगों के साथ संवाद करना चाहते हैं, भाषाई दिक्कत है। तो मुझे लगता है
हमारी सरकार को यदि जो हम आगे बढ़े, इसमें मुझे लगता है जो हमारा ग्रामीण भारत है इसको भी इस डायस्पोरा से जुड़ना चाहिए। और दूसरी एक बात और है जो हम बात करके अनिल जी ने कहा, जो काल विभाजन की बात हुई, अनिल जी इस पर निश्चित रूप से काम होना चाहिए, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि प्रवासियों का अभी मान्यता नहीं मिली है। प्रवासी की डायरी जो है भवानीदास सन्यासी ने तब लिखी थी महात्मा गांधी जी के समय में। पूरा महात्मा गांधी के दक्षिण भारत से भारत आने की पूरी यात्रा का उनपे कैसे पत्थर मारे गए, कैसे उनका उस पूरा प्रवासी की डायरी में पूरा वर्णन है उसका। उसके बाद बनारसी दास चतुर्वेदी ने जब प्रवासी पत्रिका निकाली, उसमें उसके जो अंक देखेंगे पुराने आप, हमारे गिरमिटियाओं का, हमारे प्रवासी साहित्य का इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि आज तक सामने नहीं आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर चांद का प्रवासी अंक इतना महत्वपूर्ण अंक है, चांद का जिन्होंने देखा हो, उसमें पीछे महात्मा गांधी का संदेश छपा है चांद के प्रवासी अंक में। मुझे लगता है जो है अभी प्रवासी साहित्य पर बहुत काम किया जाना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दयाल सन्यासी के एक 15 किताबें लिखी, प्रवासी भवन का उन्होंने दिया था। गांधी जी के साथ इंडियन ओपिनियन के संपादक रहे और हाजीपुर जेल में जाकर के सत्याग्रह उनके हिंदी की प्रतिष्ठा इतनी थी कि उन्होंने जमीन, उनकी पत्नी जगरानी ने कहा कि आप हिंदी प्रेस खोलो, और उन्होंने अपनी जमीन बेचकर नटाल में हिंदी प्रेस खोलकर प्रवासी नाम की पत्रिका निकाली और उसको गयाना और सूरीनाम सब देशों के अलावा अंग्रेज के जासूस पढ़ते थे और इंडिया ऑफिस को बोलते थे। लंबी बात है, लेकिन इन्होंने मुंशी रहमान खां का नाम कहा। मुंशी रहमान खां रामायण गीता जी में लिखते थे, उन्होंने सूरीनाम आने के बारे में भी लिखा है, दिवस तारीख महीना लाला रुख जहाज नजीना, इस पर आए इतने नरनारी, और दोनों के एक महतारी एक मुसलमान कर रहा है। तो इस तरह का उसी देश की राजनयिक सुनैना जी हमारे पास ऑनलाइन उपस्थित हैं। हमारे पास गयाना, त्रिनिदाद और कैरेबियन के सभी लोग आए थे। तो अब मैं सुनैना जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपना वक्तव्य दें। सुनैना जी। Okay. Good morning, namaskar from the side of the Embassy of the Republic of Suriname. I'm Sunaina Mohan. I am the Second Secretary at the Embassy, and it's a great pleasure to connect with all of you today. I believe they hear me, right? Yes. Okay.
Okay, so let me get to it. It's a pleasure and an honor to be connected with all of you from this side. Due to some unforeseen circumstances, we couldn't be physically a part of the conference. It's a great conference, and as Suriname is a diaspora country, it is more than an honor to be and to connect with all of you. But as we can see, Suriname is a part, and I see myself on the screen, so I believe you can all hear me all and you can see me all. Let me begin with this. As the conference has started, I must share some beautiful things about Suriname. Suriname is one of the diaspora countries of India. In 1873, many people, approximately 34,000 people, actually Indians, they left India and they went to Suriname to work in the sugarcane fields, the Guyana-India, as we know, and we still have all those things in Suriname. Now, I am proud to share that I am one of those. I'm the fourth generation of these people who actually departed or went from Suriname from India to Suriname. And ऐसा कहे जाए तो अभी तक हमारे पास बहुत कुछ है. As you can see, I still can speak a bit of Hindi, and we have the 6 cultural fields of the native language of Suriname is Dutch, because we were colony of the Netherlands, of course. But what our people did, हमारे जो पूर्वज थे, जो उन्होंने किया हमारे लिए, ये बहुत अनोखी बात है. I'm trying to speak a little bit so that you can understand also, and you can see that we still have it. And ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है. सौभाग्य की बात ये है कि अभी तक सुरीनाम में हम सरनामी हिंदी बोलते हैं. Sarnami Hindi is a big influence, and I believe a huge influence of Bhojpuri. As कैसे रहे, कहाँ जा रहे हैं, कौन सीख रहे हैं. These are some things, some beautiful things that Suriname still has, and we actually got it from our ancestors. देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जाते हैं, लेकिन उस देश में अगर आप फिर भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं और ये अपने बच्चों को दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है. तो इसीलिए मैं अपने पूर्वज को, अपने जितने भी लोग आए थे, उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ. मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सुरीनाम में अभी तक the 6 cultural fields are alive. 6 cultural fields of Suriname are the भाषा, as you can hear, हम अभी भी हिंदी बात कर सकते हैं. सरनामी हिंदी उसे कहते हैं. भाषा, भेषा, we still have the sari and the salwar, the bhesh, and as you can see, we all still have that. If you would go to a party, to a vivah, then you will see all the beautiful saris and the women wearing those beautiful gowns and everything. So, bhasha, bhesha, the bhajan, we still have the songs, the bhajans. Anything you would say, any religious aspects you would search, you would find them in Suriname. So the bhasha, the bhesha, the bhajan, the bhojan, we still have our masala, we still have our roti. It is a bit transformed, but we still have our bhasha, our bhojan, the bhuta, our history. We as Surinamese and Surinamese Indian, we are very proud of our history. Our people, the Guyana-India group has done a lot of things for our country. Thanks to them, Suriname is where we are right now. So our history is very strong. We still know where we come from, and the most important thing, we have the 6 cultural fields, and the most important one is the bhavana. We still have the same norms and values in Suriname. We still have the love, the appreciation, the
गर्व की बात है कि हमारे पास अभी भी वो सारी चीज़ें हैं जो आप भारत में देख सकते हैं। Maybe a bit transformed through the time, but we still have all of them. So this is from my side and the side of Suriname. Again, I want to tell you it's due to unforeseen circumstances we couldn't be physically there, but from our heart we are there. We are very proud of the organization for organizing such a great conference. From the side of the Embassy of the Republic of Suriname, from the side of our ambassador, His Excellency Arun Kumar Hardinji, we want to wish you all the best. Suriname is a part of you, and you are a part of Suriname, and we are walking next to each other, and we will work for a better relation, for more success in the future. Thank you very much. Thank you very much. And if you need anything from this side, we want to say, please connect with us. If we can mean anything to you, it would be more than a pleasure. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सुजाना जी। हिंदी भाषा भारत को लाल कर कई देशों में चली गई, लेकिन सरनामी हिंदी ऐसी है जो सूरीनाम से नीदरलैंड तक, और नीदरलैंड में भी सरनामी हिंदी का प्रयोग होता है। उसमें पत्रिका निकल रही है, रचनाएं हो रही है। तो यह हिंदी की शक्ति है, सरनामी हिंदी की शक्ति है। और सूरीनाम में जो हिंदी के वहाँ के राष्ट्रपति संतोषी जी ने हिंदी में संबोधन किया था, यह भी एक प्रसन्नता की बात है। दोस्तों, समय कम है और अब जो सबसे बड़ा आकर्षक कार्यक्रम अभी है वह है कि सॉफ्ट पावर में सब कुछ की चर्चा हुई और सबसे स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर जो है वो सिनेमा, जो संसार के कोने कोने में हिंदी फिल्म, हिंदी सीरियल्स लोग सुनते, देखते और गाते हैं। और उस पर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए हमने अनुरोध किया था खालसा कॉलेज के प्रोफेसर जसविंदर जी को। जसविंदर और हिंदी पंजाबी की बहुत प्रतिष्ठित है, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से इनके 25 से भी ज़्यादा रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। मैं आप और इनके बीच में नहीं आना चाहता। और नमस्कार सभी को। आज डायस्पोरा के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मेरा विषय है भारतीय फिल्में और संगीत, डायस्पोरा संदर्भ। मनोरंजन की दुनिया में फिल्में अपनी ओर से एक पीपीटी बनाने की कोशिश की है जिसमें बेटे की हेल्प ली है। तो अब यहाँ पे हेल्प जो है धर्म प्रकाश करेगा मेरी, तो कोई कमी पेशी रह जाए तो उसका जिम्मा धर्म प्रकाश को देंगे हम। बेटा तो यहाँ है नहीं अभी जी। मनोरंजन की दुनिया में फिल्में सबसे लोकप्रिय और सस्ता साधन रहा है। पूरे विश्व में फिल्मों को बहुत चाव से देखा जाता है। भारतीय सिनेमा, जिसे वर्तमान समय में बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, इसकी लोकप्रियता की त्रुटि हर जगह होती है। इसका एक कारण पूरे विश्व में फैला भारतीय डायस्पोरा भी है। भारत में प्रवास को दर्शाती हिंदी फिल्में इस संदर्भ में 1970 के दशक में आई पूर्व और पश्चिम अत्यंत चर्चित व लोकप्रिय फिल्म रही, जिसका संदर्भ प्रवास से दूर के पुत्र को विदेश से अपने देश वापस लाना था। इसका गीत संगीत अत्यंत मनोहारी और कर्णप्रिय था। एक गीत आगे
इसका एक गीत जीरो दिया है भारत में, सब लोगों को गिनती आई, जिसके द्वारा भारत की भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिन की भारत इसके अंतर्गत ही 1986 में आई नाम फिल्म का उल्लेख किया जा सकता है, जिसकी कहानी भी विदेश जाने पर धोखा खाने से किसी मामले में फंसाए जाने पर भारत वापसी की है। इसका एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ जी मैं सुनाऊंगी तो जो बैठे हैं उतना है। चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, हम बेवतनों को याद वतन की आई है, वतन की मिट्टी याद आई है। इस फिल्मों का मूल उद्देश्य अच्छे जीवन और रोजगार की तलाश में बाहर के भारतीयों को वापस लाना था। वहां रहते हुए भी भारतीयों का भारत के प्रति देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहना ये दर्शाता है। पीछे रह गए परिवार में रिश्तों की कदर करते हुए उनके प्रति लगाव और याद में छटपटाहट को भी दर्शाया जाता रहा। भारत से अटूट नाता विवाह के माध्यम से नहीं, वो स्किप करके वो लगा दीजिए। नेक्स्ट जो है स्लाइड, भारत से अटूट नाता विवाह के माध्यम से। भारतीय जीवन में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है। इस कारण कई वर्षों से विदेशों में बसे भारतीय अपने संतान के विवाह की उम्र के समय भारत की ओर देखने लगते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चों के विवाह भारतीय लड़के या लड़की से हों। इस संदर्भ में कई फिल्मों का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेश, नमस्ते लंदन, स्वदेश इत्यादि। इनका मूल भाव संतान का विवाह भारत में होने पर वहां से भविष्य में अटूट नाता बना रहेगा। भारत में संपन्न पारंपरिक विधि विधान से किए गए विवाह संबंधों के स्थायित्व के बारे में भी मन में विश्वास बना रहता है। यहाँ विवाह के माध्यम से संबंधियों व मित्रों से एक बार फिर से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। विदेशों में पले बड़े लड़के व लड़की को भारतीय संस्कृति और विधि विधान से जोड़ने का सप्रयास भी कहा जा सकता है। समस्याओं को उजागर करती फिल्में। प्रवास से संबंधित कुछ फिल्मों में किसी समस्या को आधार बनाकर भी पेश किया जाता है, जिनमें 2023 में प्रदर्शित मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के अनुसार फिल्म में मिसेस चैटर्जी से उसके छोटे बच्चे इसलिए छीन लिए जाते हैं क्योंकि उनकी मां उनका लालन पोषण उचित ढंग से नहीं कर पा रही। वास्तव में मिसेस चैटर्जी भारतीय ढंग से बच्चों को खिलाती पिलाती है और कई साल लगे मिसेस चैटर्जी को नॉर्वे की सरकार से अपने बच्चों को वापस लाने, बच्चों की कस्टडी वापस लाने में। इसके द्वारा विदेशों की अजीब नीतियों और कानूनों के बारे में जानकारी मिली। इंग्लिश में विदेशों में बसे परिवार ने मां को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने के कारण अपने ही घर में पति व बेटी द्वारा मजाक बनाए जाने पर वहां स्वयं भाग दौड़ कर किसी संस्थान में जाकर अंग्रेजी सीखनी पड़ी। विदेशों में भाषा की समस्या से दो चार होना स्वाभाविक ही है।
इसी प्रकार से गैर कानूनी तरीके से विदेशों में घुसपैठ करने के तरीकों को कई फिल्मों में दर्शाया गया, जिसमें व्यक्ति की जान को भी खतरा बना रहता है। इस संदर्भ में 2023 में आई डंकी, 2021 में की आई शिद्दत उल्लेखनीय है, जिसमें नायक जहाज के नीचे पंखे पर बैठकर हवाई सफर करता है और रास्ते में कई ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। इसी के अंतर्गत पंजाबी फिल्म आजा मैक्सिको चलिए का जिक्र भी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत पंजाबी फिल्में चल मेरा पुत, 3 भाग का जिक्र भी किया जा सकता है, जब पुलिस के डर से उन्हें लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागना पड़ता है। पंजाबी फिल्म जट एंड जूलियट में डिपोर्ट किए जाने की समस्या को दर्शाया गया। प्रवासी भारतीयों द्वारा फिल्मों का निर्माण। लंबे समय से विदेशों में बसे कुछ भारतीय फिल्मकारों द्वारा भी फिल्मों का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत भी भारतीय रीति रिवाज से विवाह किए जाने, उन रस्मों की प्रासंगिकता को यूरोपियन जीवन शैली से पगी युवा पीढ़ी को दृढ़ कराना मुख्य उद्देश्य रहा। इस संदर्भ में गुरिंदर चड्ढा की वेटेड लाइफ बेकम ब्राइट एंड प्रिटिशियस को देखा जा सकता है और इसमें मीरा नायक की मॉनसून वेडिंग भी अत्यंत चर्चित रही, जिसका एक बहुत प्रसिद्ध गाना था, रब्बा रब्बा नी बरसा सैडी कोठी धाने पा। अगर बसता तो अच्छा लगता। इसी प्रसंग में 2006 में मीरा नायक द्वारा निर्देशित द नेम सेक का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें कलकत्ता से गए एक दंपत्ति की संतान गोकुल और सोनिया नामक भाई बहन को वहां अचानक हुई पिता की मृत्यु के बाद अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनकी मां एक घरेलू महिला थी। वहां किसी प्रकार की जान पहचान न होने के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भाई बहन वापस आना नहीं चाहते थे और वहां उन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ी। इसी प्रकार कुछ दुविधा से जूझती कुछ अन्य फिल्मों को भी देखा जा सकता है, जहां युवा पीढ़ी को समझ में नहीं आता कि वे किस देश के निवासी हैं। माता पिता हर समय भारत की सभ्यता व संस्कृति का गुणगान करते हुए उन्हें दिल से भारतीय होने पर जोर डालते हैं, जबकि वहां के माहौल में परवरिश पाने के कारण वे विदेशों की आजाद जिंदगी और खुलेपन को जीना पसंद करते हैं। उन पर भारतीय तरीके से विवाह करने के लिए दबाव बनाया जाता है, जिस कारण भी युवा व किशोर पीढ़ी दुर्दशाग्रस्त रहती है और उचित प्रकार से किसी एक जीवन शैली को अपनाने के कारण तनाव से घिर जाती है। ऐसी समस्याओं के लिए अमेरिकन देसी ABCD मीन्स अमेरिकन बोर्न कंफ्यूज्ड देसी के नाम उल्लेखनीय है। दूसरों के सामने अपनी पहचान बनाने के लिए अक्सर प्रवासी भारतीय अपनी संस्कृति, खान पान और लोक कलाओं की ओर लौटते हैं, जिसमें मिसिसिपी मसाला और टुडे स्पेशल उल्लेखनीय है, जिनमें विदेशियों के सामने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए कुछ लोग अपने रेस्तरां में भारतीय व्यंजनों को बनाते और परोसते हैं और बदले में उन्हें बहुत प्रशंसा प्राप्त होती है। तब उन्हें लगता है कि उनके द्वारा लिया गया ये निर्णय कितना सार्थक है। पंजाबी फिल्मों का योगदान। प्रवासी जीवन को प्रदर्शित करने में पंजाबी फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है। पहली बार पंजाबी फिल्मों को पंजाब के खेतों और गांवों से निकालकर विदेशों तक ले जाने का बड़ा काम पंजाबी के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता हरभजन मान ने किया। इस प्रसंग में जी आया नूं, असा नुमान वतना दा, मिट्टी वाजा मारदी, दिल अपना पंजाबी के अलावा बहुत सारी फिल्मों का उल्लेख किया जा सकता है। इन फिल्मों की विशेषता ये है कि इनके अंतर्गत भारतीय व पंजाबी संस्कृति, लोक कलाओं का प्रचार किया गया। साथ ही वहां मुसीबत के समय अपने देसी भाइयों द्वारा सहायता व सहयोग को दिखाया गया। इन फिल्मों के माध्यम से भारतीय जीवन के समय दरपेश आती समस्याओं, अकेलापन और विदेशियों के बीच गुण मिल न पाने के दर्द को भी दिखाया गया। उस समय अपना देश, गांव, यहाँ की मिट्टी की सोंधी महक व रिश्तों के अपनेपन की खलती कवि को भी दिखाया जाता है।
पंजाबी गीत संगीत की ताल पर विश्व भर के लोग नाचते गाते देखे जा सकते हैं। दलजीत दोसांझ ग्लोबल आइकन के तौर पर उभरे, जिनके शोज पूरी दुनिया में सफल रहे। ओटीटी मंच पर प्रवासी जीवन। ओटीटी के मंचों की बहुतायत के कारण एक ही समय में दुनिया के अनेक देशों तक पहुंच संभव हुई। इसमें हमें कई ऐसी सीरीज देखने को मिलती है जिसमें हल्के फुल्के अंदाज में रोजमर्रा की परेशानियों, आपसी मनमुटाव, संस्कृतियों का आपसी टकराव देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत कुछ सीरीज जैसे द बिग सिक, नेवर हैव आई हैव, 4 सीजन्स और यूनाइटेड कच्चे का उल्लेख किया जा सकता है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स और प्राइम जैसे ओटीटी मंचों पर प्रसारित होते रहे हैं। पिछले वर्ष अमेरिकन सिख नामक एक एनिमेटेड फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया, जिसे एक अमेरिकी सिख विश्वजीत सिंह ने लिखा और मिशेल शेफ विकास खन्ना ने इसका निर्माण किया। भारतीय फिल्मों पर संगीत का प्रभाव। भारतीय फिल्मों के जबरदस्त प्रभाव के कारण ही कई विदेशी मूल के कलाकार भारतीय फिल्मों में संगीत वीडियोस में काम करने को तत्पर रहे हैं और उन्होंने फिल्मों के द्वारा यहाँ काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है, जिसमें से कुछ प्रमुख नाम हैं हेलन बर्मा से, मनीषा कोइराला नेपाल से, जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंका से, बॉब क्रिस्टो इंग्लैंड से, टॉम आर्टर अमेरिका से, पंजाबी फिल्मों की अभिनेत्री नीरू बाजवा और नोरा फतेही कनेडा से। ऑस्ट्रेलिया के क्रिएटर वेटली ने आशा भोसले के साथ मिलकर एक वीडियो में काम किया। भारत का शास्त्रीय संगीत ही श्रेष्ठ नहीं, फिल्मी संगीत का जादू भी सभी के सिर पर चढ़कर बोलता है। इसी कारण कैरेबियन देशों में प्रत्येक समारोह के आयोजन में भारतीय गीत संगीत को गाया व बजाया जाता है। इन देशों के बाशिंदों ने, विशेषकर युवा पीढ़ी ने, भारतीय गीत संगीत की धुनों को अपने अंदाज से भी मिक्स कर दिया, जिसका जिक्र इंद्राणी जी भी कर रही थी। इसी कारण इसे चटनी म्यूजिक कहा जाता है। चटनी की तरह ही जो सामान्य भोजन की ही नहीं, जीवन में भी रंग भरकर उसे और भी तीखा और मजेदार बना देता है। चटनी में शामिल कई प्रकार के मसालों का मिश्रण स्वाद को बढ़ा देता है। उसकी धुनों व लय पर लोग मस्ती से झूमते हुए गाते हैं, भले उन्हें गाए जा रहे शब्दों के सही उच्चारण मालूम ना हो और ना ही उनके अर्थ। इनमें से कई गाने तो ऐसे हैं जिन्हें इंडियन एंथम का नाम दिया गया है, जैसे सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। अगर ये बजेगा तो ये दोनों गाने जो है इसमें लगाए हैं मैंने, बस मुझे इतना ही जो है वो मालूम है। इन्हें खुशी के हर मौके पर विशेष बजाया जाता है। निष्कर्ष। भारतीय फिल्मों में डायस्पोरा के संदर्भ की उपरोक्त चर्चा से ये स्पष्ट है कि प्रवासियों के जीवन से फिल्मों का कितना निकट संबंध रहा है। भारतीय प्रवासी जिस देश में रहे, उन्होंने यहाँ की सभ्यता, सभ्याचार व संस्कृति के मुख्य स्तंभों, बोली बानी, लोक धाराई परिपेक्षों और त्योहारों को संजोए रखा, जिसका जिक्र अभी सुनैना जी ने किया कि 5 जो है भाव उन्होंने बताए, भाषा, भेष, भोजन, भावना। तो उसी का जिक्र जो है मैं बता रही हूँ कि त्योहारों को सजाए रखा। इन फिल्मों के माध्यम से हुए प्रचार प्रसार के कारण केवल एशिया में ही नहीं, यूरोप व अफ्रीकी देशों में भी लोग विवाह के समय भारतीय परिधानों जैसे लहंगा, शेरवानी पहनने लगे हैं। वे विधि विधान से विवाह करने के लिए विशेष तौर पर भारत आने लगे हैं। कैरेबियन देशों के युवक युवतियां अपने पूर्वजों के देश से संबंध जोड़ने के लिए भारतीयों से विवाह करने लगे हैं। भारतीय संगीत के प्रति दीवानगी के कारण यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे हारमोनियम व तबला सीखने के प्रति भी रुचि बढ़ने लगी है। यहाँ तक कि दंगल, पीके, 3 इडियट जैसी फिल्मों ने यूरोप के साथ चीन, कोरिया में अत्यधिक रूप से बिजनेस किया और बहुत ज्यादा करोड़ों का बिजनेस किया और सराही गई। पिछले दिनों आई पुष्पा 2 ने पूरे विश्व में मिलाकर
कई हजार करोड़ रुपए का बिजनेस किया। प्रत्येक भारतीय भाषा, चाहे वह हिंदी, पंजाबी या अंग्रेजी में बनी हो, सभी ने एक भारत एक राष्ट्र के भाव फिल्म जीवंत किया और विश्व में भारत व भारतीयता का पंचम बैल लहराया। धन्यवाद। अध्यक्षता और हमारे अध्यक्षता ने आपको निराश किया होगा सोचा होगा कि यह सत्र बहुत ही सार्थक रहा और खास करके मित्रों यह सत्र बहुत ही सार्थक रहा क्योंकि अभी जितने विद्वान वक्ता आए उन लोगों ने बहुत ही संक्षेप में बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य दिया। सुरीनाम की कमी का हम अनुभव कर रहे थे। सुनैना जी ने अपने द्विभाषिक रूप से अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करके इस सत्र की मर्यादा को विघटित किया। हमारे जो बीच वक्तव्य में प्रोफेसर अजय मुंगे आए थे, अगर हम लोग कुछ नहीं बोलते इन्हीं का वक्तव्य हो जाता तो यह सत्र सार्थक समझा जाता, लेकिन अन्य वक्ताओं ने खास करके पंडित रानी जी ने और ये हमारे अनिल जोशी जी ने, राकेश जी ने और मैडम ने काफ़ी विस्तार से नहीं तो कम से कम काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से अपनी बातें कही और संस्कृति की क्या शक्ति है वो भी बताया। इस संदर्भ में रामायण की बार बार चर्चा हुई और मैं कहना चाहता हूँ कि रामायण के बारे में कहा जाता है कि जो यहाँ से गिरमिटिया मजदूर गए वो अपने साथ रामायण ले गए। ऐसा संभव नहीं था, लेकिन हम मानते हैं इसलिए नहीं संभव था कि कोई बाजार से पकड़ के ले गया है, ले जाया गया, कोई रामलीला देखते हुए पकड़ के ले जाया गया और वो अपने हाथ में निश्चय ही रामायण की पोथी नहीं रखता। ऐसा हुआ कि फिजी में जिनका नाम आप ले रहे थे, क्या नाम है, फिजी में पंडित तोताराम उन्होंने माधुरी में लिखा कि पूरे देश में इंद्र सभा नाम की किताब की 7 प्रतियां, रामचरितमानस की 5 प्रतियां और 2-3 किताबों का नाम दिया कि अल्लाह की थी और एक मोहम्मद हसन नाम के व्यक्ति किराया पर उसको देते थे जो 4 दिन के लिए छाने आठाने थे। उस देश में जहाँ की अब हर मंगलवार को एक मतलब 2000 मुस्लिम छोटा सा देश जनसंख्या रामायण का पाठ करते हैं। उस देश में फिजी में जहाँ कि पहले कहा जाता था रामायण महारानी की जय, हमने पूछा आप क्यों कहते हैं तो कहते थे कि अंग्रेज कहता है कि विक्टोरिया महारानी की जय, तो हम विक्टोरिया महारानी की जय नहीं करके मैंने पूछा रामायण महारानी कैसे हो गए, तो रामायण महारानी की जय करते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठी हुई है सरकार बुजुर्ग, उनके देश में रामायण सेंटर है और वो वहाँ के पार्लियामेंट से पास है और उस पार्लियामेंट में इन्होंने जो उसका बनाया था पार्लियामेंट प्रस्ताव, उसमें एक पंक्ति जो था कि हिंदू धर्म के विकास के लिए किया जाएगा, बताया गया था कि समस्त धर्मों के विकास और संवर्धन के लिए रामायण सेंटर का काम की स्थापना किए रहेंगे। उसका नाम राम मंदिर नहीं रखा गया, क्यों कि राम मंदिर अयोध्या में भक्ति का प्रतीक है, तो रामायण सेंटर संस्कृति का प्रतीक है। भक्ति और संस्कृति का बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। भक्ति में भी संस्कृत निहित है, लेकिन दोनों का अंतर ये होता है कि वो भक्ति भी सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखती है और संस्कृति भी सभी के प्रति सद्भाव। इसी तरह आप देखते हैं कि त्रिनाल में जाते हैं तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करके सीताराम कहते हैं, तो सीताराम वहाँ का राष्ट्रीय अभिवादन है। और इसी तरह जितने भी देश के लोग हैं वो चाहे कई मामले में तो मॉरिशस के चाइनीज रहने के लोग भी जो है वो वहाँ
हिंदी बोलते थे। गयाना के गोला बाजार में आप खरीदने जाइए तरकारी तो लोग वो भारत का नाम देंगे, और असली अंग्रेजी बोलेंगे कि पुट ए लिटिल फॉरेन बेले की रोटी। तो इस तरह की वहाँ हिंदी नहीं है, लेकिन वहाँ की एक किताब भाग दौड़ा बहुत ही मशहूर किताब है। अभी वो ओरल ट्रेडिशन की चर्चा हुई, संसार के सभी साहित्य में ओरल ट्रेडिशन का महत्व रहा है, क्योंकि लिखना तो बाद में हुआ, और भारत के जितने भी महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, कोई शिव पार्वती को पढ़ रहे हैं, कोई कालभूषणी को कोई कथा कर रहे हैं, कोई युद्ध क्षेत्र में कृष्ण संदेश दे रहे हैं, और उन्हीं से महाकाव्यों का सृजन हुआ है। तो ओरल ट्रेडिशन की खोज करनी चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि हमारे सत्ता बुद्धू जी ने जो है वो जिसकी सराहना प्रधानमंत्री ने भी की कि इन्होंने गीत गवई की रचना की, और हमें गौरव है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद ने उस पुस्तक का प्रकाशन किया, और वह यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के रूप में मान्य है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे संस्कृति की जो शक्ति है उसमें स्टेबिलिटी होती है। जो इकोनॉमिक शक्ति है, आज अमेरिका धनवान है, कल चीन हो जाएगा, कल कोई और देश हो जाएगा, लेकिन हमारे डायस्पोरा के साथ जो सांस्कृतिक संबंध है वो उसमें कमी नहीं आने वाली है, और अब नई पीढ़ी आ रही है, उसको बरकरार रखने का काम भारत के लोग और भारत की सरकार को है। ये हमें देखना चाहिए कि डीजी की पत्रिका में 75 वर्ष से चल रही थी, शांतिदूत क्यों बंद हो गई। एक प्रस्ताव कल किया सरकारी की 2 नवंबर को, इसके बारे में क्या कि मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। 2 नवंबर को जब मॉरिशस में लोग पहुंचे, उस दिन को गिरमिटिया दिवस बताया गया। मित्रों, हम लोगों ने इस पर बहुत विचार किया। यहाँ से जो गिरमिटिया शब्द ही कहाँ प्रचलित हुआ उसकी एक अलग कहानी है। मॉरिशस में, गयाना में, सूरीनाम में, कहीं भी नहीं गिरमिटिया शब्द नहीं, कहीं कुली कहते हैं, कहीं कंत्राती कहते थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जब नामक अपनी किताब लिखी, उसमें उन्होंने उसके हिंदी में लिखा हुआ है कि 1860 को इतने अक्टूबर को जो लोग आए वो गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे, और महात्मा गांधी ने इतना बड़ा वक्तव्य दिया दुबे जी कि वे सत्याग्रह के बीज को लेकर के आए। अगर वो नहीं होते तो सत्याग्रह नहीं होता। ये गिरमिटिया मजदूरों की शक्ति है कि उन्हीं के कारण सत्याग्रह हुआ, और गांधी के कारण संसार जान सका। गांधी ने मनीलाल डॉक्टर को मॉरिशस में भेजा, फिजी में भेजा, लेकिन गयाना, ट्रिनिडाद, सूरीनाम को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी। वहाँ पर बाद में दिन बंद हुए, एंड्रूज गए। उससे पहले महात्मा गांधी के जो 5 प्रिय लोगों में थे, कमला देवी चट्टोपाध्याय गई थी, और उन लोगों ने काम किया था, लेकिन वो लंबी कहानी है। मेरा विचार ये है, हम लोग ये 12 मार्च को करना चाहते थे, क्योंकि 12 मार्च को गांधी जी ने जब मुंबई में भाषण दिया कि आज 30 जुलाई तक अगर नहीं खत्म करोगे तो हम सत्याग्रह करेंगे, तो 12 मार्च को 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन डाला। लॉर्ड हार्डिंग उस समय में थे कि ये समाप्त हो जाएगी। गांधी जी का कहना था कि तुमने ऑर्डिनेंस, डिफेंस में ऑर्डिनेंस लगा दिया, लेकिन कोई समय नहीं दिया कि जब हमें मजदूर मिल जाएंगे, जब हमारी ये व्यवस्था होगी तब हम समाप्त करेंगे। अगर नहीं करोगे 30 जुलाई को तो हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। तो 12 मार्च का बहुत ही साफ शब्दों में उस गजट नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आज के दिन से इस प्रथा के अंदर किसी भी व्यक्ति को जहाज पर नहीं लाना जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो 20-22 तक वो चलता रहा। तो इस तरह हम एक विचार करके जो सभी देशों के लिए लागू हो, एक गिरमिटिया दिवस बनावे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, और प्रधानमंत्री के वक्तव्य के अनुपालन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 12 मार्च को ही ये कोशिश करती थी, होली आ रही, तो हम नहीं कर सके, इसको हम करेंगे। और ये विश्वविद्यालय का भी हमारा सहयोग रहेगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा। DRRC जो ARSP का एक अंग है, उसकी स्थापना एम्बेसडर मुद्गल ने की थी, और उन्होंने जो काम छोड़ा उसको पूरा करना तो कठिन है, लेकिन हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि मुद्गल यार सुबह बढ़ा गए हैं। मैंने गोपाल जी से कहा था कि गवर्नर से समय ले जाना आसान है, मुद्गल जी का समय निकालना कठिन है, लेकिन हमारे प्रति उनका स्नेह और सौभाग्य अगले सत्र को
हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। मुदगल जी का 20 वक्तव्य होगा, स्वपन गोपाल बोरा रहेंगे और वह निश्चय ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण सत्र होगा। तो आप लोग उसमें आइए। मैं अपने विद्वान वक्ताओं और अपनी ओर से आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि इतने धैर्य के साथ गंभीरतापूर्वक आपने सुना और हमें से समय दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय को और सभी प्रबंधकर्ताओं के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इस तरह एक एकेडमिक वातावरण में हम अपना कार्य कर सकें। बहुत धन्यवाद। Thank you, the chair and the keynote addresser and all the speakers offline and online of this technical session number 2, which included the regional, cultural and linguistic perspectives of Indian diaspora, and it made a very important session. And now we will go forward for the next technical session, that is technical session number 3. The topic is economic perspectives. I request Ambassador Sushil Kumar Sinhaji, the Senior Vice President of ARSP, to chair this session. So please come on the dais and have your seat. I request Ambassador Anup Kumar Mukherjee, the former Indian High Commissioner to Mauritius, to come on the dais to deliver a keynote address. And I would now request His Excellency Mr. Bharat Kumar Siraj to come on the dais, as he will be the most elected speaker of this session. So, please. And next, Professor Gopal Araraji, you are requested to come on the dais as a speaker. We know him since yesterday. He has been conducting the sessions very aptly. He is the Secretary of ARSP. Now, the speakers, the chair and the keynote address giver are all on the dais. I request our students to felicitate them and, in our traditional way. First, Ambassador Sushil Kumar Sinhaji will be felicitated by the students of this university with Uttadiya, the watch and a memento, and a broker present, Dr. Lee from the office of our Honorable Vice-Chancellor. I request our students to felicitate now Ambassador Anup Kumar Mukherjee. Now, students are felicitating Ambassador Anup Kumar Mukherjee, who was the former Indian High Commissioner to Mauritius, with watch and gifts from this Department of Sanskrit, University of Calcutta. Now, our students will felicitate His Excellency Mr. Bharat Kumar Siraj with the token of gifts, a very engraved watch, a memento, and a broker gift from the office of the Vice-Chancellor. There comes the bag with a folder. Now, Professor Gopal Araraji will be felicitated with a folder and an engraved watch. Yes, this is a photo frame from the Department of Sanskrit.
gifted to His Excellency. Professor Gopal Arunaraji will be contributed with a folder and a very decorated watch by the students of this university. The felicitation program being over, I request the chair, Ambassador Sushil Kumar Singhal to conduct the session and to invite Ambassador Anup Kumar Murgalji to deliver his valuable keynote address. The mic is all for you, sir. Thank you. Good afternoon. I know the time is, we are having a 2 technical sessions one by one, and I will be testing your patience, but please bear with us. We had a very fruitful discussion in the first session, and which gave a way forward how India has become a soft power, and what is the contribution of the Indian diaspora in becoming that soft power. Another aspect of that soft power is the economic power. Now we will be discussing, we'll be looking for the way forward, direction from our seniors, how economically the diaspora has contributed to the development of their own adopted country, as well as how they have contributed to the development of India. As we know, India is the largest recipient of the remittances. We get about $100 billion plus remittance every year. And we are, the number is very critical, and become reach the critical mass in form of, we have about estimates are 30 to 40 million Indian diaspora strong. And that diaspora has contributed immensely in IT, and in the technical transfer also. We don't talk about the technology transfer that they are helping us. The Indians who are settled abroad, they bring technology. They are, because they feel comfortable. So they are bringing technology transfers also. Similarly, they are making investment in the form of the direct investment as well as through the shares. So I'll stop here, and I'll request Ambassador Anup Kumar Mudgal, who is a former High Commissioner and very close contributor to ARSP, and as our previous chair has mentioned about him, I will stop here and I request you. Thank you so much. Good afternoon already. Yes, sorry, good afternoon. So, thank you, Chair. In fact, when somebody says that I will do a keynote, I really get very nervous. Yeah. So it will not be a keynote, right? I'll share a few thoughts, because though I'm not an expert on diaspora matters, but I have lived with them for all my life. So as a result, there is a kind of an experience which I have about kind of how to deal with these issues. So I will share a few thoughts with you, and I don't think I am qualified to address to the distinguished experts sitting here. That is beyond my qualification. I would rather be talking to the youngsters here, the youth. Yes? Why I will do that? Because as part of my various assignments, I meet youngsters literally on every day. I meet the youth in universities, I meet the youth in schools and colleges, and also both in rural India and urban India. And I continue with that practice wherever I was in other countries. I always went to meet the youngsters in universities and ask them what exactly they had in their mind, right? So let me see whether I am able to do justice with the topic or not.
In fact, I was tempted by Indrani's reference to, a Westphalian restriction on multiple identities, and then how to fix the round pegs in round holes or square pegs. Because I thought maybe if I had an opportunity, I would have gone through the evolution of statecraft, yes, starting from the feudalistic state right up to the modern. But why I'm saying that? Because today the world is taking a turning point in terms of the statecraft, these transitions, and those transitions are going to challenge a number of principles and thoughts we thought they were so dear to us. Yes? So let me start with that first one, because many of my colleagues mentioned about the tangible part of the economic aspect of diaspora. They mentioned about, remittances, which reached at one point about 127, something like that, $1 billion. In addition, if I limit to only this, just to put this in perspective, if it is $120 billion, it's very close to 12 lakh crore rupees. Now, can you imagine the size of the union budget latest was something about 50 lakh crore rupees. What are we talking about? The remittances alone were equivalent to something about 20% of the union budget, right? Add to that the tourism receipts, where again diaspora plays a very major role. International tourist receipts in India are very close to $27 billion. Add that, can you imagine the figure goes further? And then even the FDIs, where are these FDIs being channeled through? Again, heavily diaspora countries. They do influence a lot of that. Mauritius, my dear colleague, is sitting here. In fact, the major channel of FDIs into India, so is Singapore, right? So when you look at all those aspects, diaspora's economic aspect matters to the youth. So I'm sure I hope youth is paying attention to this, because sometimes we look at the foundational part of diaspora, which means the culture and the history and all that stuff, but then the superstructure which the diaspora is helping India to create is relevant to all of us. But these were some figure crunching, but in my view, diaspora's future role is going to be much more critical. Now, I will take you back to your vision. Now, this youngster sitting here, what is your vision? What do you want to be, in fact? I'm sure, to simplify the whole thing, India, we want to become a developed country by 2047. Yes? Now, when I say developed country, what exactly is a developed country? Yes? There is an economic aspect to that. There are non-economic aspects to that. And in my view, I talk about the economic part in the sense, the tangibility of the money part, but the non-economic part, the technology part, that is going to really have a major impact. Today's economy is technology. You have to remember this. Yes? Now, we want to become a developed country. Now, for that to become, we need to grow, there are various different estimates, we need to grow double digit every year. Yes? Now the issue is, how do we grow double digit every year? India's economy, again I put this thing in perspective, India's economy is heavily dependent on the external sector. If I tell you, don't be surprised, very close to 50% of India's GDP is externally driven. Yes? And that in a very, very critical way, because for your vision of developed country, the critical inputs, say for example energy.
We are heavily dependent on external sector for energy, and without energy we can do nothing, right? Including the renewable energy, in fact. Technology. You think of any technology, we are heavily dependent on external sector. Finance. I talked about some figures, but it goes much beyond that. Yes? Then finally the climate change. Now, can you imagine any of these segments coming true without diaspora's role? The answer is simply no. That 34-35 million Indian diaspora members sitting in more than 100 countries, they are sitting on a treasure of knowledge. As Professor Dubey mentioned, diaspora is a flag bearer of knowledge, skills, technology. Now, you know, technology is something which sometimes the others don't want to share. Yes? Because that is a very, very critical thing. You want certain technology, but they would not share with you. Because why would they not share with you? Because these things work on trust. Because, yeah, as you know, most of the technologies have, you know, different uses, and some of the uses are sometimes very complicated uses, right? You call them dual-use technologies. Yes? And sometimes the critical technologies which you do not want to share because you want to capitalize on that. So the trust. You see, trust in this relationship is absolutely essential. How do you trust somebody? You trust somebody you know. Yes? Now, we have a story. As India, we have a story to tell to the world. But the world will trust more when that story is conveyed to them by members of a diaspora. Because they understand the Indian story in Indian language, and they can convey that story to the recipients in their language. Yes? And they are a bridge. They are a bridge of that trust. And if you are able to engage diaspora constructively, I think that trust deficit in terms of sharing technology can be plugged. And we can access important technologies for meeting our own goals in terms of economic growth, on goals in terms of plugging the technology gaps, on goals in terms of climate change and all those modern technologies. Yes? So I think when we come to diaspora, especially the economic issues, I would say please pay more attention to the technology part, because economy will flow. Yes? If we are not able to, if you are not able to occupy the front seat in cutting edge technologies, believe me, nothing else will happen. Because the future world is going to be driven by technology. Right? Nobody, you may hate technology, but you will not be able to do anything without it. Yes? So the youngsters, please pay attention to that, because we thought that we are a young, large country. Yes? And we thought, okay, we have demography, and can we convert that demography into demographic dividend? Yes? Now the dividend would not be automatic. We may have demography, we may have youth, we may have large numbers, but those large numbers on their own will not turn into demographic dividend. And that dividend needs skills. Yes, we thought because of our numbers, we would become the providers of skills to the entire world, but it's not happening. What to say of the world, even in India, the industry is not able to find the skills they need. You know what, 29% Indian graduates are unemployable because we have not been able to skill them the way the industry wants. So if you are not able to provide the right skills for our Indian industry, how do we provide to the world? But that is where diaspora can play a role. Because we need to understand what are those skills the world needs.
It is called the global skill need mapping. Yes? And then developing those skills in India so that we are able to match those skills, and that is where diaspora can play a role. Because they understand both sides of the story. They understand their needs and they also understand our capability. And then they can connect both. It's called matchmaking of skills and their needs. Yes? So that is where diaspora can play a major role. In fact, when I was in Munich, the government of India told me to prepare a report on skill development because the Europeans are known as masters of skilling. So I prepared a report. I had to go around for different countries and different institutions to understand how they skill people. Believe me, I was shocked to the core how detailed they are, how comprehensive they are in terms of skilling the youth. Yes? And as a result, they are able to match the skills with the needs of those nations and they are more productive. Let's open our eyes. We do not have to only skill our people, we have to skill them in the right way, in the right domains. If we don't do it, I do not want you to join that army of 29% graduates who are considered unemployable because they don't have the right skills. And that is where diaspora can play a role. And the same thing would apply in climate change and all kinds of cutting edge technologies. So this is my perspective, Gopalji. I think I would not go beyond this because that has become too detailed and I do not want to bore you with those details. But you must keep this concept in mind. You have a wonderful diaspora. They have certain niche capabilities and we need them. Right? We need them. And if we do not identify them in right moment, right time, believe me, they will get tired of us. Yes? Before they get tired of us, stand up and seek that support because it is for you. I am too old for that now. Okay? With these words I stop. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador Hon'ble. What he has brought out very clearly, apart from the tangible, we have to look for intangible, and technology transfer, matchmaking is very important. And in that, the role of Indian diaspora and the government of India, because government of India is also planning, as I mentioned, that to India to be a developed country by 2047. For that, I think the role of diaspora is immense, lot of scope, and we need to prepare a roadmap. And the role of diaspora, ARSP, I think is very important. So thank you very much, sir. Thank you. I will now request Mr. Dhruv Arora. He's the founder CEO of SFI. He's based in Singapore. He's going to talk to us online. So we thought that this to be a kind of interactive session where we can talk to the people who are on the ground, who are working on the ground, and to understand how we can take advantage. Again, like as Ambassador said, that how to bring them together. I think this is going to be very important. So, Mr. Is there? Mr. Yes, I am. Am I audible? Yes. Yeah, Mr. Dhruv, floor is yours. Okay, fantastic. I mean, firstly, you can put on your video also. We want to see you. Share my views and my thoughts. I think it was really interesting when Mr. Gopal mentioned about what we were trying to achieve in today's session. So maybe the best thing that I could do is quickly in the next maybe 5 or 7 minutes try to recap on some thoughts that I had around the topic of discussion today. I'm happy to keep it very interactive and if there are any questions, happy to take them after. But I think just to kick off, maybe a quick background about myself. So I grew up in India. I grew up in when Mumbai used to be called Hon'ble. I went to IIT Hon'ble. I graduated from there in 2008.
as some of you might be users of, which was eventually then acquired by Zomato. But about 6 years ago, I started on the journey of building Syfe here out of Singapore. Syfe is now one of the largest digital wealth management platforms across APAC. We have operations in Singapore, Hong Kong, and Australia. And happy to talk more about it, but coming back to the topic in this thing. See, when I was told about this topic, I think some of the areas that came up was that what does a middle class, Indian boy who's grown up in a Delhi, in Bombay, how do you end up, first go to banking, coming back, and then eventually, launching a business. So I basically realized that somehow by the virtue of actually growing up in India and growing up also more importantly in a middle class family, I think there is one thing that we somehow take for granted that we have but many don't. It's actually this ability to adjust to circumstances. And sometimes you can call it hustle, sometimes colloquially we call it the word jugaad. But at the end of the day, this is while it's got some negative connotations, I would say generally if you're going to start and run businesses, it's actually a strength. And I think that is something which is almost a part of your value system, which you build as you go in a place like India. And you have to find your way through. I mean, it starts very early. There's no doubt in it. I was lucky enough to go to IIT Bombay. But even when I went, they had like 2,000 seats or 200,000 applicants. Now, a lot of people don't realize this, but the selection rate of IT is lower than that of like Harvard and Stanford in the world. So at the end of the day, I think this fact that look, you have to some extent fight to survive in some ways. And at the same time, this ability to adjust, I think it leads to a very different kind of hunger. Which I would say is generally a strength that we have and something we should, in a way, celebrate and encourage more than, pick up in the other way around. Now, at the same time, there are obviously challenges, right? You can't just, show up in a new place and say, okay, now this is not like, 200 years ago where people say they put a flag and okay, this is ours now. Yes, you have to, be conscious of the cultural influences of the place you are in. You have to be conscious of the rules, the regulations, the ways. I think sometimes the way how we might operate might not really, associate with some of the other people. Especially something like in my business, for example, we have people now from very different nationalities. And I think that ability to adjust is different when it is you adjusting, but then it's also different when you're adjusting to different cultures and different nationalities and so on and so forth. And I think that is always something which will be a little bit of a challenge point if you're part of the of the diaspora. But again, you look at some of the most popular technology companies in the world now are run by Indian CEOs, and I think some of the points that I mentioned earlier is with the opportunity to somehow bridge this if you can use that figure and that ability to adjust, but also be respectful of cultural nuances and rules and regulations, and in many cases, being okay to be treated like the outsider. I think there is obviously a big opportunity that people have unlocked, and I am still very early in my career. But of course, as I said, there's great examples of very successful diaspora across the world. And leading tech companies, of course, are a great example. So I'll say that's a little bit on where I think about the challenges, the opportunities and the strengths of diaspora working overseas. Now, I think one of the other points that came up was, how do we or us diaspora feel about the ease of doing business out in India? And I would say that the feeling is mixed, to be honest, because how do I say? There are some things which are really very good. In fact, if you look at what Antar and UBI has done, it's a role model for many countries across the world. I mean, I would say the payment ecosystem in India is probably the best in the world, if not even the top like 1, 2. I mean, way ahead of the other countries, right? So if you are doing businesses and you want to have money movement, etc., and all things like piggybacking on back of these kind of tech stacks is very powerful.
one more really good thing, and maybe less relevant for me because I'm considering a passport holder, but is the ability of getting e-visa and all that. This was a very painful process, like 5-7 years ago, but today you could get it in 24 hours, right? So those kind of things are really very good, I would say. On the flip side, though, when it comes to getting any kind of licenses, whether you want to open a shop or a franchise or anything, there is paperwork, there is statewide norms, there are some dealings which you have to have, and that if you haven't been part of the ecosystem for some time, it can be a bit overwhelming. I think to be honest, struggled for the first 6 months because I was in UBS, this banker wearing a tie and a suit and everything, and I'm basically selling vegetables, go to Azad for Mandi, and that kind of negotiations. Then you have someone coming, they want something on the side. So I think some of those things are still, a bit tricky. So overall, if you can find the method in the madness, as they say in some ways, I think you can obviously try that because the economy and some fantastic businesses are built out of India. But I would say if you haven't been part of it, and if you are an outsider, or if you've not been there for too long, it can get a little bit overwhelming. And while I think things are improving, it does feel that there is definitely some room to get there better. Maybe on the last point, which I had, and I'm just open to any other further thoughts or questions out there, is there's obviously a lot of recognition that Diaspora has a little bit of a double-edged sword, because one is okay, they go up and everything is great, they spread India across the world. On the flip side of it, it's also look, you're losing some of your best talent, right? Is it brain drain? Is it brain game? And it's quite an interesting topic. And I probably have two observations on this. I would say, firstly, I would think if you go back 20 years ago or so, I think the opportunities that were available in India were far too limited and not very attractive. So actually, people had, if they wanted to unleash their full potential, they had to go overseas. And in a way, India is, I think, if I'm not mistaken, is still one of the largest remittance markets back in the world. So there is a positive cycle fact of that as well. But that was still about 25 years ago. I think in recent times, just the sheer opportunities, startups launching, successfully exiting, and actually, India is one of the best startup markets in the world right now, is actually shifting that, right? So I actually feel that a lot of people, will not really go out. The threshold to go out is a lot. So I don't have the numbers at the back of my hand, but I was recently back at IIT Bombay, and I think the ratio of people who are ending up with job positions overseas will actually come down quite drastically. And even that this is actually much lower now, because you're getting good opportunities, you're getting good jobs, and you're getting generally, if you have the affordability, the lifestyle can be actually very good in India, right, because of some of the other services being cheap. The other point I would say is that even in the cases where people do go abroad, right, we spoke about remittances and all that, but to give my example, and I think the speaker just before me was talking about this thing about the youth, 29% unemployed and they're not getting a job and all. And a topic that's been very, very close to my heart is about employment. And by the way, I 100% agree. I think, ability to give youth meaningful, skillful jobs will eventually decide whether as an economy we succeed or we fail. Because this is our biggest strength, but will also be our biggest weakness. And coming back to that topic, I think at the end of the day, for our franchise, we have offices in these countries, but we also employ 70 people in India. Now, if I was doing a job in India, for example, I would have taken up one position. But now, by the virtue of me being able to do what I'm doing, I have created 70 roles. Now 70 people, they have families of 4, you end up providing livelihood for 280 or people in that way. And I think that's also a framework to consider. So you could argue, is it really a brain drain? Because at the end of the day, it's circling back to the economy in multiple ways, and I think all of us are very proud to be Indians in that way, right? I mean, I'm still Barcelona. So I feel that kind of close knit ties, and just think about always thinking about what could I do directly, okay, if I'm going to build a team of engineers or customer support or whatever functions, should I consider India?
I think something is also very, very powerful. So I feel it is this brain drain game. I think we might be over-indexing on it, but there are positives which come along with that, right? I'll pause here. Hopefully, it covers some of the topics that were, I thought relevant for today's discussion. But open for any questions, any thoughts or anything else. Dr. Thank you very much. Very insightful practical insight of what you have experienced and. Oh, sorry. Sorry, I couldn't hear you. Yeah, so I know my mic was off. My apologies. I said, what you gave us the insight of the problems which, as you faced in India when you were setting up, you were part of the Blinken, and what we are talking about the ease of doing business. That is an important aspect which we are facing. Everybody talks about that, and the government of India is, of course, very much focused on that. And tell me just one question. When you talked about the cultural differences, how you overcame, if you can tell us very shortly, because we are running slightly out of the schedule. I think it's an interesting one, right? Because I think for me the first challenge was when I had gone to Hong Kong, and I would say Singapore is actually still probably easier because largely English speaking, fairly big Indian diaspora already lives here. 10% of the population coming in. So actually there is like a stronger, amount. So actually Hong Kong was even tougher and when I started. To your question, how did you overcome? I think the first and probably the most important thing was realizing that at the end of the day you're a guest in someone else's home, right? You can eventually say this might be your home. Eventually maybe, and maybe not, maybe you want to come back with you and all that. But I think realizing that is very, very important. And I think as we grow and we have to almost assimilate a little bit to that movement with conscious effort than having them assimilate to you. You don't go to someone's house and tell them how they do things, right? You might not agree with them, you're not supposed to do them, some maybe have to. I would say that perhaps was the very, very first setup. I think the other thing which I would suggest people, and this takes some conscious effort, is that I think it's relatively easy to go back in your comfort zone. So, nothing wrong against you always and always being just with, people who are but you need a conscious effort to actually understand, meet other people, get to know them, right? Actually bridges boundaries. And eventually they are commonalities. I would say in today's day, the more it is a lot easier than what it was 30, 40 years. The reason is people are watching the same Netflix shows. They're eating the same McDonald's, they're driving the same cars, they're listening to the same, music. So I think there's a lot of commonalities that you have to find, but you have to make sense. Drew, I have to stop you here. Those are two things. Unfortunately, there's no kind of thing. But as I was thinking on the spot, I would say probably those two things come to my mind when it comes about culture. So thank you very much, Drew, for giving this cultural aspect also, among other things. So really appreciate your contribution to us. I think we have all become enriched with their information what you have provided. Thank you very much. Thank you so much for having me. May I now invite His Excellency Mr. Dharmendra Kumar Siraj, to High Commissioner of Cooperative Republic of Guyana, to enlighten us with this. Good afternoon, I must say. We're a university that is 168 years old, and we're obviously dealing with food for thought. But I'm aware also about the stark reality is that we also need food for the stomach. And I don't want the audience to start walking out from the panelists here. So I'll try to, as much as possible, be as brief and also at the same time to provide relevant information that will give you the platform for you to ask some engaging questions.
I want to take this opportunity to thank, of course, Vice-Chancellor of the University, Madam Bharat. So, Shanta Datta for being a part of welcoming us here at this prestigious university, and of course ARSP, the DRRC, for inviting me to be a part of the audience of the panels here. Ladies and gentlemen, Mr. Chairman, fellow panelists, the economic perspectives which involves trade, commerce, and industry between Guyana-India, Guyana, and the wider diaspora is of course a topic that can take hours for us to debate on. And even as we are speaking, there are different aspects of this relationship that are engaging different sections of our population and also our government. But President Mohamed of Guyana only recently sent a letter to the chairman of the Cricket Board of India requesting support for an Indian team to take part in the global super competition, global super league competition in Guyana that is supposed to be hosted sometime in August. Some of us, you might be aware that as we have the Indian Premier League, we also have the Caribbean Premier League, and of course we have patterned it after India. We have 6 teams in the Caribbean Premier League. All 6 teams are owned by Indians in the Caribbean. 2 of them are owned by Indians in Guyana, and 4 by Indians out of India itself. And this tells a story as to how sports, how we're using sports as a locomotive to address economic concerns and economic cooperation between our 2 countries. Historically, trade and economic cooperation and engagement, if we go back to 186 years, would have been to the benefit of the colonial masters who would have come to India, secured indentured laborers. The first to have arrived in Guyana would have been on the 5th of May, would have been on the 5th of May, 1828. And that relationship did not benefit the Indian laborers, nor did it benefit India. And it took us a very long time for us to arrive at this point where we're beginning to realize our potential as to how we can use our trade and economic agreements to enhance the welfare of our people. And at yesterday's technical session, first technical session, I recall clearly His Excellency Ambassador Supra talking about the rising tide. And how is it that the rising tide can lift all the boats? The small boats, the big boats in India, the small boats, the big boats, also in the diaspora. And to the extent that we are now basically exploiting opportunities is to the extent that we have resolved bread and butter issues that are core to our existence, and now we're exploiting the opportunities
opportunities to engage at a different level where we exploring also different options. Before, these options did not exist. And there are those in the world that are considered superpowers in North and in Europe who would want to limit our options to what it has historically been. And even now, the slave trade or the triangular trade still have a huge influence on how the peoples of the South move around. And the slave trade essentially would have seen goods and trinkets and all of that moving from Europe to the African coast, trading here with African slaves, going to the West Indies, to work on the plantations, the riches move from the plantations of the West Indies back to Europe. Today, travel is almost essentially the same. Trade is almost essentially the same. And now we're being afforded options as to how we can more or less develop cooperation between the South. Here in India, we like to call it the global South. Global in the sense that we're trading, enhancing trade more and more between countries of the South. We have seen the establishment of the BRICS that is intended to provide an option for the developing countries of the South to exploit more trade with themselves as against only trading between the South and the North. And of course, they are pushback from North America, from Europe, because they would like the status quo to remain. We, on the other hand, we would like to see our countries be provided with more options. And here India is providing essential leadership in the area of thinking differently, that's the human resources, in the area of trade, in different materials, and all of that. And we welcome this development, and it's having a tangible impact on the growth of our country itself as we seek to boost more and more trade between our countries. Guyana is strategic from a number of perspectives. We are English speaking. We are the mainland of Latin America or South America. We of course enjoy strong historical ties, cultural ties with India, and we can provide the gateway to huge market opportunities in that part of the world for India economic growth. We are a member of CARICOM. We have the CARICOM Free Trade Agreement. We are a member of different other economic blocks that can provide, if there are investment in Guyana that can provide access to market. We are part of California, which is the European Economic Partnership Agreement. We have a limited trade agreement with Brazil. Brazil is a huge economy. We can provide a foothold for investors here. We're part of Mercosur, which is an agreement between several countries of Latin America itself. We have now developed a program where we're pushing to do the ease of business, address the ease of doing business. We're talking about a single window electronic system, whereby investors can have tangible opportunities. The investors can have one area, one focal point where they go in and have all these issues addressed. We have significant oil and gas reserves now. We have gold, bauxite, precious metals,
and we engage in large-scale agriculture. We of course have an open market economy with a diversified production base. We try to promote ecotourism, and in the last 10 years we've been talking a lot about renewable energies, renewable energy in keeping with also India's phenomenal development in the area of renewables. Our economic growth has been substantial in the recent past, and if I can give you some numbers also as a reflection of how our economy has been growing, I can just quote our budgetary allocation. In the year 2020 was just about $329.6 billion. In 21, close to 383, 22 to $552 billion. In 2023, $781 billion. In 2024, $1.1 trillion. And in this year, our budget has seen significant growth also to $1.382 trillion. So this gives you a sense of how Guyana's economy is booming. And it provides, like I said, all the conditions for enhanced economic cooperation with a country like Guyana. Our economic growth has also been nothing short of phenomenal. In 2022, the growth was 63.4%. In 2023, we started 3.8%. In 2025, our growth is likely to be around 40%. And of course, we appreciate that this is on an ever-widening economic base. So as a percentage might be coming down, the fact of the matter is that the value of the growth itself is going up. Indo-Guyanese plays a significant role, Indo-Guyanese of the Indian diaspora, in terms of providing a solid economic base for our people. The diaspora development itself is led by Indo-Guyanese. We're strong in agriculture, we're strong in business, we're strong in trade, and of course in governance. Guyana's president is of Indian origin. The president of Suriname is also of Indian origin. And I recall when I was here for the first time on an official engagement in the year 2018, it was at a forum organized by Prime Minister Bose. It was members of parliament of Indian origin who would have met in Delhi. Both Mohammed Yohanani was a member of parliament then he was here. Santoki out of Suriname was a member of parliament then in 2018. Both these gentlemen are now president of their respective countries. So here also it gives you an idea of how Indians, how people of Indian origin have been growing in their respective countries and leading the charge itself. And you know, in 1838, between when the first vessel arrived there, between 1838 to 1970, over 288,000 Indians would have arrived in Guyana itself. Of that amount, 75,898 choose to come back to India because that was also part of the deal that they struck. Majority, of course, remained in Guyana. Today we compose about just over 2% of our population. We have almost a similar amount of people of Indian origin born in Guyana who resides overseas itself, primarily in North America. And from in the initial stages, we have our people that have been influenced tremendously by the culture of the North, because we're exposed to that. Geographically,
with thousands of miles away. In terms of time itself, we are 9.5 hours behind. When we're waking up, you're sleeping. When we sleep, you're waking up. So these are some of the difficulties, not only in terms of time, but also of distance, in terms of us having closer and closer relationship with our two countries. And of course, there is also the economic factor. The tide that is rising all the vessels now is having that kind of impact. And now because our economy is doing fairly well, our people are doing fairly well, we now have the income that can empower us to more and more pursue the development of not only economic relationship, but also cultural relationship with India itself. And India itself, given the fact that India itself is rising economically and is playing a major role in global trade, is having an influence with Guyana and what we do in terms of enhancing our cooperation. And if I can just, before I close, give you an idea as to how we have developed in terms of trade itself, I can tell you that the trade balance between Guyana and India in the past was more skewed in favor of India. That is, our imports from India has been significantly more than our export. And of course, everything that we want to do in Guyana now, in the phase of development that we go through, we would look towards India, because you would have already done it here in India, and you would have probably done it a million times bigger than we are envisaging to do. We have a very small population, just about 800,000 people. The country is 214,000 square kilometers. So we have a very low population density. And we're currently working aggressively to see how we can have Indian expertise go into Guyana itself to help us with our development agenda. In 2018, our export to India would have been just about 1.1 million US dollars. Our import from India was 28.2 million US dollars. So that, of course, gave us a negative variance, and for us, and a positive variance for India. By 2023, we would have exported to India 313 million US dollars from just 1.1 million in 2018. And our imports from India would have been $85.6 million, which give Guyana a positive trade balance in terms of doing business with India to the value of $227 billion itself. But if you take all those years cumulatively, we would still have a negative balance. Of note, what would have contributed significantly to Guyana having a positive trade balance with India was the oil and gas sector, which is our new frontier. So we have not enhanced or increased our traditional exports like in hardwood, in precious metals, bauxite and so on, that would have resulted in that positive trade balance. It's in our new economic frontier, which is oil and gas. We would like to continue in that direction, to provide more exports and to diversify our exports and to provide more from our oil and gas sector to India itself. Whilst at the same time, we would like to increase our imports from India of the technology, especially in the area of renewables, technology in health, in education, in information and communication technology. Over the past 2 months, we have had a visit
of our Prime Minister to talk about renewables. We have had the visit of the Minister of Health to talk about the use of information and communication technology in providing health care. Of course, one of our major inputs from India here is also from pharmaceuticals. And we continue along that direction. We've also had recently, in the same period, the visit of our first lady to India itself. And before I take my seat, I want to mention, of course, the fact that Prime Minister Modi was in Guyana a few months ago. So all factors taken into consideration is pointing to a direction where there is great willingness on the government of Guyana and on the government and people of India to increase and improve our cooperation in the spheres of the economics, in the sphere of culture, in the sphere of sports, and the multi-dimensional facets of our relationship. And this, I think, augurs well for both of our countries. And notwithstanding the fact that we are so far away, we have managed to more or less bridge those gaps, and we continue to work on that. And I must say that, notwithstanding the fact that the first Indians would have arrived there just about 187 years ago, we have still managed to maintain some aspect of our culture, some aspect of our language. We have not done as well as some other countries in terms of a significant portion of our Chinese people speaking Hindi and all of that. But I can tell you, every single wedding in Guyana, whether it's a Hindu wedding or a Muslim wedding, of people of Indian origin, is done according to either Hindu rites or Muslim rites. With the full mosque, with the pandit, or the pandit presiding over the ceremony in Hindi, and we're forced to follow, of course, and also with the music, in the area of music. All Guyanese loves Indian music. We dance to Indian music. 99% of us don't have a clue of what it means, what the music means, but music is universal. It's about the drums and all of that. So we have managed to maintain some aspect of our cultural identity, and we're now moving to enhance our economic cooperation. So our countries, if I should borrow the phrase from Ambassador of South Africa, His Excellency, our countries can rise together on the tide of economic and cultural development. We have some challenges, we have to work on those challenges, but together we will ensure, we will, I'm certain, be able to conquer all those challenges in a way that will be beneficial to our country, to our people, to our government. I, of course, will not have been able to touch on all the factors that might be of interest to you, but I would want to encourage the chairman of our proceeding to provide a platform where we can have engagement. I like the idea of having engagement because we are able to use whatever resources are at our disposal to address specific concerns that you might have in the different areas of the subject matter under consideration. I want to thank you very much for allowing me this opportunity to say these few words to you, and I welcome your feedback. Thank you. Thank you very much, High Commissioner, for giving information about Guyana, and also I'm very encouraged that you are one of the very few countries who want to increase imports. So, thank you very much, sir, once again. And now I'd like to invite Professor Gopal Arora, Secretary ARSP, and I don't think he needs any introduction, but still, I want to, in the context of this topic, I want to mention that, he has played a very important role in, encouraging Indian SMEs, their business in various countries, including TNT, Mauritius, Suriname, Fiji. So, floor is yours. And Professor
Thank you very much, Chair. Talking on the economic perspectives, I will try to be as economic with my words as possible. Observing all the protocols, taking them as observed. My presentation is divided in 4 parts. I'll start with 2 propositions, then I'll discuss about the challenges of doing business, especially with the Guyana countries, then my own experience, my case study, and then a few suggestions. So these are the 4 parts, please. So the first proposition is that, 2 propositions in fact, that the culture and commerce, we need not compartmentalize them. They do overlap. Culture and commerce, they do overlap, and since ancient times we have been seeing when traders used to go to far off places, they carried, a part of their culture also. The Silk Route and all those things, and when the saints go, along with them the businessmen also go, so they all grew together. Even in present time, you have seen the example of Kumbh. It has generated, it's a socio-cultural and religious event, but it has generated business of over 200,000 crores of rupees. When I was coming yesterday, the whole market was very busy at 9:30. So I asked, why it is so busy? He says, sir, it is Ramadan time. So that religious, cultural events and business, they all can go together. So that's my first proposition. Second proposition can sound a bit paradoxical. So when I say that they grow together, we have to appreciate the point that when it comes to economics, when it comes to doing business, the prime factor has to be the economic and commercial viability of doing business. Culture can be a sweetener to that deal. It can create a comfort zone, but it cannot by itself become, the prime reason for business. That is my second proposition. First part is over, less than 2 minutes. Second is now about when we are trying to look at the possibilities of doing business with, especially I'm concentrating on Guyana countries like Commissioner of Guyana is there, then Mauritius, Fiji, Suriname, Guyana, all countries are being represented here. Look at the population. Trinidad, about 1.5 million. Guyana, 850,000. Suriname, 640,000. Fiji, about 930,000. Mauritius, about 1.3 million. 5 countries taken together, just a little above 5 million. Now, it's a challenge, because if you want to do investments there, you have to look at the economies of the scale also. What is the market size? So we have to find a solution, to that challenge. Second is the logistical issues. When we go to Caribbean countries, recently the price of a container to Suriname, Fiji or Trinidad, it's sold to as high as 12,000 US dollars for a container. From Bombay to say Trinidad, to Suriname, to Guyana. And if the person there wants to import from Mexico, he can import at $1,500. So that logistical issues, the cost of traveling, that also is a big challenge that we have, we have to realize that. So we must, confront the reality. Third is some, the foreign exchange conversion issues and the repatriation issues. In some of the countries, the people there are facing problems in repatriation. The banks say that we don't have enough, foreign exchange. If you bring foreign exchange, we can repatriate for you. I mean, it's a reality. Not in Guyana, sir, but in some of the other countries, this is an issue which is being faced. So these are some of the challenges which I said. I will not dwell much on that. Another, I finish in 2 minutes, sorry. So now my own case study. You see,
it's around 25 years ago that one of the organization, which was working with the diaspora, they contacted me and said, sir, you are, involved with economics and we want your help in connecting, and maintaining some business relations with some of these countries. Yes, we did contact the, missions there and the other organizations which were, like NCIC, purely cultural organization. We contacted them. They said, okay, you come over, bring your business people, and we'll give you some space there at that Diwali ground. In a temple, about 40 business people, they went there for the first time. Dr. Indrani is here at Diwali Nagar. It's I think around 2003 or somewhere like that. So then, they started that the people were not aware of what India is producing. You see, they were all importing from New York, they were all importing from, say, Mexico or Panama, all the Indian product, third-party suppliers. No direct business, was there. So we tried to create linkages, the business linkages there. Yes, there were challenges, but good thing was that, our Indian mission also supported and the organizations there also. So here is what the culture part came, that facilitated, creating the business linkages also. And I will tell you, the similar experience we repeated in Suriname, in Guyana, in Fiji, in Mauritius also. At that time, Dr. Ananda Bose is there. There was a lady called Bimla Bihari. They also had a NGO kind of thing. So they tried to, create those type of linkages. Now, how it has helped? Dr. Indrani said that she was finding it difficult to find a sari issue over there. But Dr. Indrani, you go today. I'm telling you, people, if they want to marry, even a person of Afro origin today wears a sherwani in his wedding. This is what is happening. The girls wear lehenga. Not only that, people from Central America and other places, they come to Trinidad for their buying of wedding. Indian products, Indian cloths. So all these things, that linkages, you see, we have been able to create and, create an environment for those kind of things. So this is some of the, positive sides that if we do it even at a smaller level. And from here I will come to the final part of how we can, meet all these challenges. One is that, you see, since the size of all these countries is small, creating a manufacturing facility, doing investment there may not be as commercially viable. Especially the large corporates, they avoid. I will again give you an example of one of the Caribbean countries. The Indian ambassador called me and said that we are doing some big event, we want to promote India. I have written to CII to bring a business delegation here, but they are not interested, they are not responding because the size of the market is very small. Can you help us? This was it. So I said, what do you want to do? He said, we just want to create an ambience of India and Indian heart or something like that. So I said, okay, I'll try, if I want to do, if I can do, help out in something. So we did. And today that country, if, nobody knew what is India and Indian products. So today, so many Indian products are there and they are enjoying the market is. So it is not necessary always to focus on large corporates. There is a lot of scope for the MSMEs also. The Indian entrepreneur is outgoing, he can go, he can do good business provided to give them this support. Like the MBA and other parts, it is very much possible. So create a supply chain, create a hub, and from that hub you can be a distribution point for all these different countries, like the master said about the Guyana or other things. Wherever it is possible to do that. So this is one point which we can do. The other is, when we go to all these countries, everywhere we say that there is a Chinatown. But in how many countries there is a little India? Only in Singapore? Maybe a couple of other countries on fingers you can count.
So you have to promote, you see, the Indian business who can work on the ground there, and there, you know, they can actually kind of, you know, promote their business as well as in culture also. So that is, you see, the other point that the third is coming to that your CARICOM point. Now, yesterday also I was discussing. CARICOM is a good order, but you have to improvise on that model and bring it to a model in line with something like EU, where there is a seamless movement of you see goods. You import goods in one country, then you can move it to all different countries. Now here the challenge is that in the CARICOM system, you have to kind of do some value addition, create an industry there, and then if you take it to the other country, then the custom duties and other things are not there. But if some kind of an arrangement can be done on the model of EU or on our own GST model that we have from one state to the other state, no further tax or anything, to IGST, and then they just adjust it amongst themselves. So that can actually promote. So if you can give some kind of you know, favored nation status to countries where we can have that seamless movement of goods without payment of additional duties across the, you know, I'll say seashores now, because most of the countries there are, you see, the islands, etc., but not Guyana and Suriname, sir. So that, you see, is another thing which I think is one thing which, if we work seriously on that, so it can help us. Of course, services sector is one of our strong points. So language is also one of our strong points. So that can also be promoted. Mr. Chair, I think I have been able to conclude it in 10 minutes. Thank you very much. Appreciate it. Thank you very much, Professor Arora. You have given you know, the both sides, because based on the technical experience, you have also explained how we can overcome. I think it's a very important lesson to all of us, and we can, you know, carry it home and discuss it further, and you know, see how we can go. Now I'd like to invite Ms. Astha Agarwal. She's a senior research fellow, political science at Baba Mastanath University, Datta. She's online. You are audible, but can we see your face? Yes, sir. I'll be sharing my screen, so that's why I will not start my camera. I'll be sharing it with you. Just a minute, sir. Good afternoon, everyone. This is Chair and His Excellency from Guyana. My name is Astha Agarwal, and I'm pursuing my PhD on India's cultural influence of power, teaching Diaspora as a crucial pillar for India's mission goals. My presentation today is titled From Sugar Plantations to Tourism Pioneers. Astha, I will stop you for a second here, because of the times. Hello. So let's start with my presentation now. So this is a picture of President and Mr. Modi from the Mauritius, the Grand Commander of the Star, and he was the invitation and his highest citizen of the Mauritius. And here Modi quoted, our forefathers were brought here from various regions of Europe. When we consider that diversity in language, lives, and living habits, this place to be represents community Hindustan Hello, Astha, can you stop for a second? Astha, can you just listen to me? You know, we have a very short time, so you have about 5 to 6 minutes. So you know, make your presentation accordingly.
and what is the way forward. That was very important. Thank you very much. Now, I would like to invite Ms. Dr. Komal Chitara. She's an assistant professor. Komal, you have to finish in 5 minutes, and your presentation you can send it and we'll share with our members. Can you hear me? Sir, actually there is some issue with the voice line, but am I audible? You are audible. What I'm saying that because we are running way beyond. I am sorry that you are the last speaker. Not that you are not important. You are a very important speaker. But we are all running out of time. So what I'm requesting is you can tell us in 5 minutes, and if you have a presentation, then you can share with us, and we will circulate. Okay? Thank you. So, just should I just
trade options, these are very important. How we make use of that and how we use it for making India a development 2047. I think that is the takeaway. Thank you very much for your patience. There is an announcement. 30 minutes for lunch. The lunch is ready outside. Please have your lunch here. And an important announcement. The post-lunch session, which is a roundtable discussion on diaspora issues and road ahead, will be held in this hall. And a parallel session of paper presentation by scholars of Sanskrit will be held in the Harding building next to this building in room number 7, that is Vidyabhyasa in its third floor, and it will be chaired by Professor Ripampa Mukhopadhyay of Sanskrit department. And those who will be presenting their papers are required to contact Professor Mukherjee after lunch. They will be there, and we will meet here for the valedictory session altogether by 4:30 p.m. Thank you.
who are going to attend this session take their places. This is a roundtable discussion session on diaspora issues and growth ahead. Professor, can I sit next to you? This is the world of technology. When I was born in the what you call the East-West corridor, north. I was living in New York at that time. I would have missed you. I So you learn over and over how many ships went and how many people went.
विषय जो अभी नहीं है ना वो संस्कृत बोलेगी ना
A very good afternoon to all our esteemed guests. We are going to begin the post-lunch session, which is a roundtable discussion with its topic as Diaspora Issues and Road Ahead. This session will be chaired by Sri Shyam Paranne. He is the Secretary General of ARSP. I invite you, sir, to come up on the dais and oblige us. And the speakers will be, and the speakers will be Mr. Keshav Tiwari, the Second Secretary at the Embassy of Guyana, and Dr. Rajni Sarin, Executive Member, ARSP, Dr. Sunita Pahuja, former Second Secretary, Indian High Commission to Mauritius, and finally Dr. Anita Verma, retired professor in Romania, University of Bucharest. I invite you all to come upon the dais and grace the session. Now it's the time for felicitate the speakers on dais. I request our students to first felicitate Sri Shyam Paranne, Secretary General ARSP, with token of gifts from the University of Calcutta.
I would request our students to felicitate Mr. Parishad, the Second Secretary at the Embassy of Guyana. With a memento from the Department of Sanskrit and with an engraved Vedic watch and a Dokra horse from the office of the Vice-Chancellor. Next, I request our students to felicitate Dr. Rajni Sahin, Executive Member, ARSP. Dr. Sunita Pahudra will be felicitated now by our students. She is the former Second Secretary, Indian High Commission to Mauritius. And finally, Dr. Ananda Bose will be felicitated by our student. She is a retired professor in Romania, University of Bucharest. Now I request the chair, Shri Shyam Parande, to convene the session, and if the mic is all yours, sir. Last name Parande is a bit difficult for me. Yes, I was missing the R every time. Sorry. No, but I think many places and immigration. They ask me, why Parande? Why not Pande? That's not. Well, we are into a session. This is a roundtable discussion. And in the age of the virtual conference, the round table is virtual. Rest we are all physically present. With that in mind, तो गोल में परिसंवाद में गोल में गायब है, परिसंवाद के लिए सब उपस्थित है. And as I look at my panel, you might have observed it's 40-60, little imbalance towards women. So that's a strength, Nari Shakti to the fore in reality. Well, since yesterday, we have enjoyed the sessions. And more than that, the content of the sessions, even the inaugural, sent a message that we need to be more seriously working on diaspora issues, especially the Guyana-India. And we have thought of everything else yesterday because it's interdisciplinary. Today and yesterday. The very geographical location of all these countries, the Guyana-India countries, is strategically very important. And that's where India, as is growing and is trying to be among the top countries of the world, it's essential for India to connect with
was there, and then he changed Australia. And he changed his mind, traveled all of a sudden, got all the heads of those island nations together. He sends a message. These are the important places that we have. Malaysia, Singapore, the whole of Asia is very much influenced by these two countries. Look at Mauritius, the whole of Indian Ocean, right till the South Pole. Strategically very important, and that's why this time when Prime Minister visited Mauritius, he had in store the External Affairs Minister as well as National Security Advisor. Look at South Africa, how it's located. And it's the most powerful country in that continent and richest one. And our diaspora is there. East African countries where diaspora is present. It's important. Look at the Caribbean countries, which is North America and South America. It's strategically located. All these countries are close to equator or on each side of the equator. That's one of the major now focus that India as it grows will focus on. And this diaspora, diaspora is important. That was the strategic view I had. And this will be, I think, crucial as we go. But we'll start the roundtable discussion. And I invite Dr. Ananda Bose to start the session with her presentation. Ananda ji, the floor is yours. It's a roundtable. Please, everybody, even who are in the panel or otherwise, who wishes to express can, but the time limit is like 5 to 7 minutes. Don't cross that. नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद कोलकाता विश्वविद्यालय और बाकी संस्थाओं के सहयोग से आयोजित इस वैश्विक कार्यक्रम में भारत की सॉफ्ट पावर में संस्कृति की भूमिका पर चर्चा करते हुए, जहां हम अपनी जड़ों की बात करते हैं और जैसा कि यहाँ लिखा भी है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारी संस्कृति करती है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जो संस्कृति से संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से गठित किया गया था, उसी संबंध परिषद ने मुझे 3 वर्षों तक अर्मेनिया और 2 वर्षों तक रोमानिया में हिंदी भाषा पढ़ाने का कार्य किया। आज के इस मंच पर हम पिछले 1 दिन से यानी 2 दिन हो गए हमें 3 विषयों पर मुख्यतः चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले ये है कि भारतीय भाषाओं की संस्कृति की सॉफ्ट पावर, भारतीय भाषाएं और फिल्मों व संगीत का प्रभाव। तो ये तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। तीनों विषय एक दूसरे पर निर्भर हैं और सुबह भारतीय अर्थव्यवस्था की भी बात हुई, देशों में विदेशों में किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, ये भी एक विषय रहा। तो प्रारंभ करती हूँ। मुझे भाषा पढ़ाने के लिए कहा गया और मैं अपने अनुभवों से, चूंकि बहुत सारे विषयों पर सुबह से बात हो चुकी है, तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि जब कभी भी हम कोई भाषा पढ़ते या पढ़ाते हैं तो सांस्कृतिक विविधता और उसका महत्व स्वयं उससे जुड़ जाता है। और अगर सॉफ्ट पावर की बात करें, जो आज का विषय, यहाँ पर सुबह भी इस बारे में बात की, आदरणीय नारायण जी ने उस पर विस्तृत बातचीत की, तो उसी को बढ़ाते हुए इसमें पावर में सम्मान, संवाद, स्मृति, सुरक्षा और संस्कृति एवं सभ्यता, ये 5 चीजें जुड़ी हुई हैं। और जहां तक समता या समानता का संदर्भ है, वो इन सब में महत्वपूर्ण है।
भारत जैसा देश जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, जिसकी कूटनीति के मूल यही संस्कृति और समता है, उन सॉफ्ट पावर पर चर्चा करने के लिए ये विषय वास्तव में बहुत बड़ा है। चूंकि समय कम है तो मैं कुछ ही अपने अनुभवों के आधार पर छोटी छोटी बातें यहाँ पर रखना चाहूंगी। तो मेरे जीवन में सॉफ्ट पावर का महत्व सबसे पहले मुझे उस दिन समझ आया जब मैं अर्मेनिया में हिंदी भाषा पढ़ाने के लिए गई और हमारे राजदूत, वहाँ के राजदूत मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के, दूसरी यूनिवर्सिटी के रेक्टर से मिलवाने के लिए ले गए। अब वहां पर मेज पर तमाम तरह के अर्मेनियाई मेवे, फल, फूल सब व्यंजन सजे हुए थे और रेक्टर महोदय ने हमारा स्वागत करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि भारत में अतिथि देवता होता है। हम आपकी संस्कृति के माध्यम से स्वयं को जोड़ करके आपस में अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते हैं और हम भी जानते हैं कि हम अपने देश में अतिथियों का स्वागत सम्मान कैसे करते हैं। तो यहाँ पहले दिन ही भारत की सांस्कृतिक परंपरा की पहली सॉफ्ट पावर मुझे देखने को मिली और उसके बाद मुझे समझ आ गया कि मेरे शिक्षण के मूल में यही रहेगा, यही चीजें लेकर के मुझे आगे बढ़ना है। और हमारे उस समय के राजदूत श्री माननीय अचल कुमार मल्होत्रा जी ने मुझे पहले दिन ओथ लेते हुए ये कहा कि तुम्हें सॉफ्ट पावर की क्षमता के साथ आगे बढ़ना है। और फिर मैं जुड़ती चली गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम, दोनों देशों के त्योहारों को मनाना और कुछ नाटक करना, कुछ इस तरह की चीजें हमारे शिक्षण में चलती रही। अब यहाँ पर भारत की सॉफ्ट पावर और कूटनीति, जिसके मूल में संस्कृति और सभ्यता की दोनों ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे थे। उन्हीं दिनों मेरी एक कविता कि ओ मेरे मान, तुम मेरे होने और हो जाने के बीच सदियों की सभ्यता की यात्रा हो या फिर वो पुल हो जो मुझे मेरी विगत से जोड़ता है। तुम मेरी गर्भ नाल से जुड़ी उस देश से हो, लेकिन तुम जुड़ चुकी हो मेरे अंतर्मन से। और इस तरह से मैंने अपने अनुभवों को अपने जीवन से और भारत की संस्कृति से जोड़ते हुए अपना काम आगे बढ़ाया। अब आगे की बात करती हूँ। उसके बाद लगभग 3 साल बाद मैं बुकारेस्ट यूनिवर्सिटी पहुंची। सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति को इस यूरोपीय देश में स्थापित करना आसान नहीं था। यहाँ पर भी हमारी संस्कृति ने अपनी जड़ों से दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ कराया था। और ये उन दिनों की बात है जब सॉफ्ट पावर का मंत्र जो है यूनेस्को ने भी स्वीकार किया था और वो था योग की सॉफ्ट पावर। योग और आयुर्वेद का प्रभाव फिर से मेरी पावर बने। इसके अतिरिक्त जो एक विशेष बात आज मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ वो ये कि साहित्य ने मूल रूप से अपनी निहित शक्ति को विकसित करके मुझे उस देश से जोड़ा। बुकारेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए गई तो वहां पर इसी यूनिवर्सिटी की यानी कि कोलकाता यूनिवर्सिटी की प्रसिद्ध साहित्यकार भाषाविद अनिंदा बोस प्रोफेसर और लेखिका के रूप में पहले से ही प्रतिष्ठित थी। उनके नाम पर एक बांग्ला विभाग भी बनाया गया था और उन्होंने वहां के राष्ट्रीय कवि की कविताओं का अनुवाद भी किया था। भारतीय मूल की संस्कृति और सिद्धांतों को उन्होंने वहां पर स्थापित किया था। अनिंदा बोस वहां पर घर घर में चर्चित थी और मुझे उस ग्राफ को और आगे ले जाना था। वहां पर फिल्म संगीत मेरी सहायता नहीं कर रहा था, वहां पर फिल्में मेरे साथ नहीं जुड़ रही थी। वहां पर मुझे संस्कृति और साहित्य के माध्यम से छात्रों से जुड़ना था। ये वही अमिता बोस थी जिन्होंने अपना जीवन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सांस्कृतिक परंपरा और मूल्यों को रोमानिया में स्थापित करने में लगा दिया। आज इस पटल पर हमने बहुत सारे देशों की बात की, लेकिन मेरे मन में ये सुबह से उमड़ रहा था कि हम कुछ यूरोप के देशों की भी बात करें, कुछ अन्य देशों के बारे में भी चर्चा करें। तो मौका मिला तो मैं इसलिए इस सदर को यहाँ पर रख रही हूँ।
अब एक चीज और कि बॉलीवुड से इतर यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य और संगीत ये भी दो देशों के संबंधों को प्रगाढ़ लगाने के लिए। अब बॉलीवुड में जहाँ राज कपूर और संगीत ने मेरा काम आसान किया था, यहाँ योग साहित्य और अनुवाद ने मुझे और सुदृढ़ बनाया। साथ साथ वहां पर मंत्रों के प्रभाव, भारतीय संस्कृति का असर देखिए कि मंत्रों का प्रभाव बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म पर भी कक्षाओं में चर्चा हुई थी। और उन्हीं दिनों पंचतंत्र की कहानियां भी बहुत प्रचलित होने लगी, उनका मंचन हम करने लगे और रामायण पर भी चर्चा प्रारंभ हो गई थी यूरोप जैसे देश में। और उन्हीं दिनों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR ने मेरे अनुरोध पर रामायण की कहानी रूप में लिखी गई बाल रामायण की कुछ प्रतियां भी मुझे वहां पर भेजी। तो ये कुछ अलग तरह के अनुभव हुए जो मैंने इस पटल पर आज आप सबके साथ साझा किए हैं। देखिए, जब कभी भी होता यह है कि हम सभी व्यक्ति एक दूसरे से अपने साझा भविष्य के रूप में सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। आज भारत की सॉफ्ट पावर जो उसकी जीवन सांस्कृतिक विरासत तथा विश्व में फैले हुए उनके प्रवासी भारतीयों के माध्यम से प्रदर्शित होती है, वही भारत की सहिष्णुता, समावेशिता और संस्कृतियों के आदान प्रदान का अभिन्न अंग है। कहने को बहुत लंबे अनुभव है, रोमानिया और कोलकाता के बीच का इतिहास बहुत लंबा है। शॉर्ट में कह देती हूँ कि रोमानिया और कोलकाता के बीच में ये संबंध उस दिन शुरू हुआ था जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने रोमानिया के कॉन्स्टांसा बंदरगाह से बुकारेस्ट यूनिवर्सिटी में पहुंचकर अपने पहला भाषण दिया। तो देखिए, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं रोमानिया की उस बुकारेस्ट यूनिवर्सिटी में गई जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर गए थे, जहां अमिताभ घोष ने नए प्रतिमान स्थापित किए थे, और आज मैं उनकी यूनिवर्सिटी में यहाँ आकर इस विषय पर चर्चा कर रही हूँ। और मेरे सामने जो ये इतने सारे छात्र यहाँ बैठे हैं, इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, ये उन सब के लिए भी गर्व का विषय है कि इस विश्वविद्यालय की जो छात्रा रही हैं वो विदेश में जाकर के उनके नाम पर एक विभाग स्थापित किया गया और उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं को वहां पर इस तरह से घर घर में पहुंचाया जो सबके लिए गर्व का विषय बना। तो एक सांस्कृतिक पुल का निर्माण इस तरह से हुआ। सॉफ्ट पावर ने दो देशों को जोड़ा, संस्कृति ने संबंध को स्थापित किया और सुदृढ़ बनाया। और अंत में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों से ही समापन करना चाहती हूँ। वहां पर मेरे विश्वविद्यालय में ये पंक्तियां लिखी हुई थी, मैं फोटो मेरे पास होता तो शायद मैं यहाँ दिखाती। वहां ये लिखा था, अंग्रेजी में था, मैं उसका हिंदी अनुवाद दे रही हूँ, कि भारत मन की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी के लिए है। हम दूसरों को अपनी सर्वोत्तम संस्कृति का आतिथ्य प्रदान करने के लिए भारत के दायित्व को स्वीकार करते हैं और दूसरों से उनकी सर्वोत्तम चीजें स्वीकार करने के भारत के अधिकार को स्वीकार करते हैं। इसी पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। और मैं उल्लसित हूँ कि आज मैं उस मंच पे हूँ जिस मंच पे कभी उस देश की कवयित्री ने नए प्रतिमान स्थापित की गई थे जो यहाँ से कही। नमस्कार। आपके अनुभवों के कारण बिल्कुल साक्षात चित्र खड़ा हुआ कि आपने वहाँ रोमानिया में जैसे उनको पुनः भारतीय संस्कृति से जोड़ा। Now, just an introduction of a special guest. Amongst us today in this session is Honorary Council of Suriname, Sri Ravi Agarwal, who is present here. We welcome
Rashtriya, academics as well, executives of the University of Calcutta, ARSP, attendees, respected colleagues, friends, सभी को मेरा प्रणाम, to Jani ji, मेरा Gavra. I'm honored to be here. I'm honored to participate in this conference on a very important topic, topic of growing importance. And I thought I'd share a few thoughts. Thankfully, my High Commissioner aptly covered from the diplomatic perspective. So I thought I'd share from a personal perspective. As an Indian, as a person of Indian descent, also as someone who studies in academia, and also as a young person, to bring a different perspective. I feel as though maybe the average has been a bit older, so I thought it'd be nice to share some personal experience. I don't know which one is worse, to present before lunch or after lunch, but I'll try my best to make it a bit engaging. So far in the conference, we've heard a lot about the what of the diaspora. What is it? What does it amount to? Where it came from? We heard a lot about how to promote, how to promote cultural, linguistic, economic connectivity. But we haven't heard too much about the why. You know, why is it that this is valuable? Why is it that the Indian diaspora represents such a great resource for India, and vice versa? Why India represents such a great resource for the diaspora? And as a young person, growing up in this age of science, of technology, of Google, where every answer is at your fingertips, where everything has a reason, everything has an answer. You know, we start from first principles. We need to know why. And so the question is this Indian culture, this Indian Sanskriti, this Indian heritage, is it valuable? Is this connectivity valuable? I, as I said, have the generational experience that is, I guess I'm sharing with some of my colleagues in the back, students, university students, where, yes, you grow up questioning everything. Everything is questioned. No longer do you follow tradition blindly. You must now question everything. Everything is scientific, technical, can be answered, has a reason. I was fortunate enough to study in the UK. I studied philosophy, politics, economics, and I found a particular liking for philosophy, you know, and I found that because I found myself really seeking to find meaning and answers to some of the fundamental questions in life, as I'm sure all of us have, and all of my fellow youngsters at the back continue to do. Studying philosophy in the UK, studying Western philosophy, Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Hegel, you're left with sometimes more questions than you have answers. You know, I found that the studies are philosophy, the way they reason in terms of morality and ethics, is extremely technical. Extremely technical. It goes down to logic, it goes down to mathematics, it goes down to counting happiness. That's how I guess the Western tradition has sought to understand the world, at least in some sense, in terms of philosophy. What did I find in the UK? Well, I can tell you what I lost. I lost my faith. I lost my faith. I instrumentalized my tradition. I saw it as something that can be used for a purpose. It's useful for a purpose, useful for community, useful to bring people together. I didn't see behind that. And I became more relativist. Everything between right and wrong, there was no such difference between right or wrong.
after returning to Guyana, working for some time, still searching, I began to reconnect with my old practices that I grew up with in my household, practices of meditation, practices of wonder, just being more intentional. And ultimately, I believe that it is these practices that actually led me to serving in India, to working in India, to being here in India. And what I found is that having studied here now Indian philosophy, a bit of Vedanta, you know, having learned meditation techniques, practicing meditation techniques, having learned the yamas and niyamas, the things to do, the things not to do, and the whys to do it. You know, having bought a harmonium, practiced some singing and bought a tabla, having traveled 15 states and explored India, you know, I'm left convinced of His Excellency's Mr. Bose's sentiment that India has something to teach the world. As a young person, that's my humble view. India has something to teach the world. I don't wish to delve too much into the suggestions of how we may dive into the connectivity, explore connectivity. We've covered the why, at least from my end. So just a few words on the how. Firstly, Ambassador Mughal earlier said that India needs diaspora for economic prosperity. But coming from the diaspora, I would say that the diaspora needs India as well. I would say that connectivity is more important now than ever, and to that end, I must congratulate the ARSP, the Government of India, on the work that they've done in this regard, on the KIP, the Knowing the Program, on ITech programs, on these facilities that allow people to exchange with each other, which I believe is a fundamental core of how we remain connected, how we remain intertwined, interdependent, as we move along in the world together, as we move in our various trajectories. So, to that end, the few humble hows that I can offer as a young person is to continue this drive of student exchange, of interest between these two nations, between these many nations, between Guyana and India. Continue student exchange, continue trainings, continue greater engagement, keep the closeness, and pursue it. And I believe this is an end in and of itself, also a means to an end, a greater end, where the ideas, the orientations, the philosophy that India can teach to the world are allowed to be taught and expressed and found in different corners of the world. I would also suggest that we find creative ways of meeting with the diaspora. The diaspora is not a monolith, it's not homogeneous, it's different everywhere you go. And we need to develop strategies to access these communities, because just as how we understand that, say, Indian culture is fragmented, it's broken into a million different pieces in a million different places, you know, so too 800,000 people, or say 400,000 Indians in Guyana, are also broken into their little communities, their little matyas, their little orientations, whether you're Vedantic or Arya Samaj or Ramakrishna or even Muslim. So we must find creative ways to meet with the diaspora, to access these communities, to engage with these communities, and ultimately, I think any strategies developed now to deal with these diasporas will be useful as India goes forward to interface with the diaspora that is now developing, the new diaspora that has become the talk of the town in America, in Europe, in the Middle East.
when they become their own identities, just as the Kermitia communities have become their own identities, then we must, or India must meet them as they find them as well. So these strategies will be useful then. So on that note, I just wish to once again thank the organizers. I see Diaspora, I see India, and the connectivity as something great and something to be cherished and something to be worked on diligently. And I thank the organizers, I thank everyone here present, and hopefully we have a great conference. Thank you so much. You put across what the youth think in their minds and the diversity, but India's diversity is India's strength. Across the states, all over the country, you feel that every district has its distinct identity, and yet it mixes very well, it amalgamates very well. It just gets together when it comes to the country or the culture, the Sanskrit. And whenever youth feels about the questioning, you talk about. And the most famous dialogue world over is Bhagwan Sri Krishna and Arjuna in the 4th chapter, while explaining to Arjuna, Sri Krishna Bhagwan says, Tadviddhi paranipatena pariprashnena sevaya. If you are serious about learning, he is advising a Shishya. If you are serious about learning, understand that you have to go before the group. So that's humility. But then, immediately, he says, Pariprashnena sevaya. While you serve with humility, go on asking questions. Don't scare your guru. It's the inquisitiveness that matters. That's what Bhagwan Krishna. And then of course, Upadekshantite Jnanam, Jnanas Tattva Darshanam. Then only you can achieve what knowledge or what wisdom you wish to. If you don't have the humility and you don't have the anxiety or anxiousness to ask questions, you will never learn the secrets of wisdom, philosophy. So that did very well. I will invite now Dr. Rajni Sarin. Rajni Sarin is a professional medical doctor amongst us, but she has been for the last 2 decades or more serving the society full time and is part of our Antarashtriya Executive Committee as well as the Roma, which is candidate for the Roma Studies Center. नमस्ते, आप सभी जो मेरे सामने बैठे हैं, परम आदरणीय महानुभाव और इस मंच पे विराजमान सभी महानुभाव, आप सभी का अभिवादन। बहुत छोटी बात करना चाहती हूँ। मैं सभी वक्ताओं को बहुत ध्यान से सुन रही थी और बहुत देशों में मेरा जाना भी हुआ जहाँ हिंदी प्रचलित भी है और जहाँ हिंदी जानने की कोशिश की जा रही है। एक ध्येय वाक्य यहाँ लिखा हुआ है, बस इसके विषय में बात करती हूँ तो उससे पहले मन में ये आ रहा है कि कोलकाता की माँ काली के श्री चरणों में प्रणाम करूँ। मैं प्रणाम करती हूँ इस धरती की जो गुरुदेव रविंद्र जी जहाँ जन्मे और फले फूले विश्व में नाम किया। इस धरती को प्रणाम इसलिए भी करना जरूरी है कि भारत आजाद हो। उसका एक कठोर नारा कहूँगी मैं, यहाँ से निकला सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ से।
यदि मैं प्रणाम नहीं करती हूँ तो मेरा आना, मुझे लगता है कि बाद में मुझे दुख मिलेगा कि मैं यहाँ आकर इस धरती को प्रणाम नहीं किया और ऐसे ही चली गई। आप सबके समक्ष यहाँ पर अनेक विद्वत जन हुए हैं, कितने उपन्यास पढ़े हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो शरद चंद्र जी की नाम याद आ रहा है। पहले तो जो भी साहित्य निकलता था वो इसी धरती से निकलता था। ऐसी धरती को बार बार नमन। माँ शारदे को नमन। हम बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं ICCR के सामने। ये कहना चाहती हूँ मैं कि हिंदी पढ़ाओ नहीं, हिंदी सिखाओ। हिंदी पढ़ाने के लिए बहुत विद्वत जन जाते हैं यहाँ से, जो प्रोफेसर होते हैं या बहुत ज़्यादा हिंदी जाते हैं। थोड़े दिन वो लोग सीखते हैं, सर के ऊपर से चला जाता है और भूल जाते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ हिंदी सिखाने की, बोलचाल की भाषा की हिंदी, जो वो लगातार बोलते रहे और छोटे छोटे वाक्यों में लिखते भी रहे। मैं लंदन गई, वहाँ मैंने देखा स्पेनिश पढ़ रहे थे बच्चे। मैं वहाँ गई, कैसे पढ़ रहे थे? खेल खेल में पढ़ रहे थे। आज गार्डनिंग करेंगे तो पौधे को कैसे कहते हैं स्पेनिश में? पानी डालने को। वो बच्चे सब गार्डन में घूम रहे थे और एक एक बात उसको बच्चे रिपीट कर रहे थे। वो लोग खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था क्लास नहीं है, खेल है। इसी तरह अमेरिका में मैंने देखा कि वहां पर पढ़ाई हो रही थी, टेबल टेनिस खेल रहे थे और वो खेल खेल में बात कर रहे थे, बच्चे उसे रिपीट कर रहे थे। आज जरूरत है साधारण अध्यापक जो नॉर्मल टीचर्स हैं वो जाए और इसी तरह से खेल खेल में सब बच्चों को सिखाएं। हिंदी सीखने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। जब मैं ये बात कह रही हूँ तो मुझे बापू की याद आ रही है, गांधी जी की याद आ रही है। सामने चित्र लगा है, जब आज़ादी का नारा हुआ था तो ये हुआ था एक भाषा होनी चाहिए जो पूरे भारत को जोड़ देगी। कौन सी वो भाषा? वो हिंदी भाषा। इसी तरह अगर ये नारा हमें सफल बनाना है बस दो का, तो हिंदी ही पूरे विश्व में राज कर सकती है। सरल हिंदी जो आसानी से बोली जा सकती है और आसानी से समझी जा सकती है। अब आज हिंदी, जब मैं छोटी थी तो रामायण भी हिंदी में कही जाती थी, अब वो अवधि में पहुंच गई। ये विडंबना है। कभी कई बार ऐसे लगता है कि क्या वोटों के लालच में ऐसे हो रहा है, हिंदी बढ़ गई है। एक मैथिली हिंदी हो गई है, कोई अवधी हो गई है, कोई ब्रज भाषा हो गई है, कोई बिहारी हो गई है। ऐसा नहीं था और होना भी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। गिर मिथियास की बात हो रही है। गिर मिथियास अकेले बिहार से नहीं गए हैं। मुझे उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जगहों का पता है जहाँ से गए हैं, और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी पता है, ज़्यादा समय नहीं, जो सोच विचार के गए थे, अच्छे थे, मिडिल क्लास के थे, संपन्न थे। वो अपने लालच में गए कि और ज़्यादा संपन्नता बढ़ाएंगे, और यहाँ से जो इस तरह के लोग प्लान वे में गए, वे सब अपने साथ धर्म और संस्कृति को लेके गए। जो अचानक में गए उन्होंने दुख भी उठाया। अचानक में जाने वाले 34 लोगों में 11 लोग तो रास्ते में ही मर गए थे, बीमारी से मर गए थे, लंबा सफर था। बहुत सारी है बात करने के लिए, कभी और मौका होगा तो करूँगी। अभी तो सिर्फ एक ही ध्यान, एक ही बात, वंदे कुटुंबकम, पूरे विश्व में हिंदी को फैलाना है तो सिखाना है, सरल हिंदी को सिखाना है। इस ICCR में जहाँ पर भी उनकी ब्रांचेस हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, और इसके साथ में एक उदाहरण देना चाहूँगी। मेरा लड़का कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो मुझे आके बता रहा था। आज मैं गैलरी से जा रहा था तो बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई कमरे में 2 लोग बात कर रहे थे और बहुत आप करके बहुत कायदे से बात कर रहे थे। हम लोग तो फिर भी इतनी अच्छी तरह बात नहीं करते हैं। 2 कदम आगे बढ़ के पीछे लौटा, उस कमरे में जाके देखा वो लोग पैक कर रहे थे। उनसे पूछा क्या तुम भारतीय हो? नहीं, हम भारतीय नहीं हैं, हम फिजी से आए हैं। ये हमारे सामने जोशी जी वैसे फिजी रह चुके हैं। ये अच्छा लगता है अगर इस तरह से सीख जाए और जगह जगह आपस में भी हिंदी में बात करें तो बस वे कुटुंब की भावना ही
आगे बढ़ेगी। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए परमात्मा में संपूर्ण निष्ठा हो, आत्मा में दृढ़ता हो। हमारे सामने विद्यार्थीगण बैठे हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके विचारों में परिपूर्णता हो, जो आप सोचे वहां तक पहुंचे। जैसे एक साइकिल चलाते हैं तो पीछे का पहिया मजबूती रहता है, लेकिन जब तक आगे के पहिए की डायरेक्शन सही नहीं हो तो सही जगह नहीं पहुंच सकते। इसी तरह आप अपने विचारों को अपने बड़ों से राय लेके आगे बढ़ाइए और जीवन में सफल होइए। आपकी सेवा में नम्रता होनी चाहिए, आपके विचारों में परिपूर्णता होनी चाहिए, कला में निपुणता होनी चाहिए। जहां भी रहे आन बान शान से रहे, सुख से जीवन यापन करें, जहां हो यशवान हो। इसी भावना के साथ आप सभी को नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी की प्रमुखता और जैसे भारत आगे बढ़ रहा है तो ये महत्वाकांक्षा भी रहनी चाहिए कि हिंदी। और क्या वैसे जैसे आपने कहा कि विविध भाषा भाषी भारत में इतने सारे हैं। The experiment in Durban that young Mahatma Gandhi tried when he started the school over there, तो तमिल विद्यार्थियों को तमिल में सिखाना, हिंदी विद्यार्थियों को हिंदी में सिखाना, गुजराती विद्यार्थियों को गुजराती में सिखाना। And there were youth and others who voluntarily started teaching the students. कारण वहाँ टीचर्स ही नहीं थे, समस्या तो वो थी, there were no teachers. तो जब मन का ये पक्का इरादा होता है, संकल्प होता है, तो सब जुड़ते जाता है। और हम कितनी भी भाषा बोले, भारत की भाषा, हमारे संस्कृति के विविध पहलू विविध तरह से विविध जगह पर अवतरित होते हैं, प्रस्फुटित होते हैं, किंतु वो सांस्कृतिक स्ट्रेंथ जो है, वो संस्कृति की जो ताकत है, शक्ति है, वो इतनी महान है, वो सबको संभाल लेती है। तो सर्व समावेशक ऐसी यहाँ संस्कृति है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपना डायस्पोरा है। डायस्पोरा स्प्रेड अक्रॉस टुडे से एटलीस्ट 140-150 कंट्रीज देख ले, कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। कारण ये विविधता को हम समझते हैं। किसी भी देश में जाकर भारतीयों ने दंगा किया ऐसा नहीं है, कारण हमारा जो ट्रेनिंग हुआ है, मानसिक ट्रेनिंग जो हुआ है, प्रशिक्षण जो हुआ है, अपना मन दूसरे को समझ लेता है सहजता से, वो अपनी स्ट्रेंथ है। उस वो ध्यान रखना, वो कभी खोना नहीं चाहिए। तो मैं भी हमारी अगली स्पीकर डॉक्टर सुनीता पाहुजा जी को बुलाता हूँ और करता हूँ तो अपने विचार रखें। बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन, मंच पर सत्र के अध्यक्ष और अन्य सभी साथी, सभी को करबद्ध प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले इस सम्मेलन में जो आयोजक हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त परिषद है, डायस्पोरा रिसर्च सेंटर, सभी को बधाई भी देती हूँ। धन्यवाद तो मुझे बुलाने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं भी इसमें शिरकत करूं। लेकिन बधाई की बहुत ही सफल रही ये 2 दिन जो हमने चर्चा की। चर्चा का हमारा विषय यही था कि हम डायस्पोरा के विभिन्न पहलुओं पर हमने चर्चा की, किसी एक विषय पर नहीं, लेकिन डायस्पोरा हमारे केंद्र में था। और हम चर्चा ये कर रहे थे कि उद्देश्य ये था चर्चा की कि कैसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं उनमें हम क्या ऐसा रास्ता अपनाएं आगे अपने डायस्पोरा के साथ, कैसे संबंध बना के रखें, किस दिशा में चलें कि जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा सिद्धांत कहें, जिसे हम काफ़ी मूर्त होते हुए देख रहे हैं,
इसे कैसे और व्यापकता प्रदान करें और कैसे और ज़्यादा सशक्त भी बनाएं। तो मैं समझती हूँ हमें काफ़ी सफलता मिली है, कई चीज़ें सामने भी आई हैं कि हम क्या किस दिशा में जाएं, क्या क्या करें। तो एक बार पुनः बधाई सभी आयोजकों को, और मेरा सौभाग्य भी रहा, सम्मानित भी महसूस कर रही हूँ यहाँ से बोलकर, क्योंकि खुशी और संतुष्टि बोलने से ज़्यादा इस बात की है कि बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नई बातें भी पता चली और बहुत सी पुरानी बातों को नए परिप्रेक्ष्य में देखने का भी एक नज़रिया मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करें कि हमने जैसे डायस्पोरा की बात की, तो हम सभी जानते हैं कि लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा हमारा डायस्पोरा जो भारतीय डायस्पोरा है वो विश्व के कोने कोने में बसा हुआ है, और भारतीय डायस्पोरा जो है वो विश्व में सबसे बड़ा डायस्पोरा है। तो उसका प्रभाव हमें अन्य देशों में तो देखने को मिलता ही है कि जिन देशों में वो है, हमने कल से कई देशों के नाम लिए, इसलिए मैं उनको दोहराऊंगी नहीं, कि हर देश में जो भी डायस्पोरा गए, चाहे वो गिरमिटिया के तौर पर पहले गए, उससे पहले भी गए सैनिकों के तौर पर और भी अनेक कारणों से, और गिरमिटिया के बाद भी गए शिक्षा, रोजगार और अनेक कारणों से, लेकिन सभी ने अपने अपने देशों में तो बहुत योगदान किया है हर क्षेत्र में, और भारत से अपना जुड़ाव बनाकर रखा निरंतर। और उनका कारण जो है वो मैं समझती हूँ भाषा और संस्कृति, क्योंकि भाषा और संस्कृति हम कहीं भी जाएं, जैसे सब लोग जो जाते हैं भारत से वो यही कहते हैं कि हम भारत को छोड़कर नहीं गए, हम भारत अपने साथ लेकर गए। तो उस भारत की झलक हमें हर देश में दिखाई देती है। और डायस्पोरा जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सभी देशों में है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बात हम सभी श्रेणियों के डायस्पोरा ने जो योगदान दिया, उसमें जो गिरमिटियाँ हमारे भारतवंशियों में कहें, उनका योगदान इस दृष्टि से हो जाता है कि वो अपने जो साथ लेकर गए थे भाषा और संस्कृति, हम सभी जानते हैं कि गिरमिटिया जिस संघर्ष से गुजरे और जिस तरह उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को न केवल संरक्षित किया, उसका संवर्धन भी कर रहे हैं और संपोषण भी कर रहे हैं। तो ये जो गिरमिटियाँ हैं, ये अपनी भाषा और संस्कृति जो लेकर गए थे उनके साथ जुड़े रहे, और कमोबेशी सभी गिरमिटिया देशों में लगभग एक सी स्थिति है, दशा और दिशा व्यथा उनकी सब एक सी है। लेकिन क्योंकि मुझे अवसर मिला 3 वर्ष ट्रिनिडाड और टोबैगो में रहने का और 3 वर्ष मॉरिशस में रहने का, तो मैं थोड़ा सा अपने अनुभव उन देशों के साझा करूँगी, और जो मुझे लगा कि क्या क्या और हम इस दिशा में कर सकते हैं, क्योंकि आकर भी मैं आप सबसे जुड़ी हुई हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त परिषद में वैश्विक हिंदी परिवार में हमारे काफ़ी सदस्य बैठे हैं, तो जब हम काम करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ नई बातें भी हमारे सामने आती हैं और हम नई चीज़ें करने के लिए उत्साहित भी रहते हैं। और मैं इस बात के लिए भी सौभाग्यशाली हूँ कि मॉरिशस और ट्रिनिडाड दोनों देशों में 2 बड़ी हस्तियाँ जो आज यहाँ भी मौजूद हैं, डॉक्टर सरिता जी और डॉक्टर इंद्राणी जी, आपने वहाँ पर भी मुझे बहुत संबल प्रदान किया, ऐसा लगता था जैसे अपने ही परिवार में रह रहे हैं, तो आभार आपका। और इतिहास की बात नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि मॉरिशस और ट्रिनिडाड दोनों की भाषा की बात जहाँ तक करें, तो भाषा के लिए परिस्थिति बहुत होती है, राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन जो प्रयास है डायस्पोरा का, वो ट्रिनिडाड में भी, चाहे हमारा सांस्कृतिक केंद्र है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कल्चरल कॉर्पोरेशन, या निधि हिंदी निधि है वहाँ पर, आर्य समाज है, और वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़ में हिंदी पढ़ाई जाती है, मंदिरों में, सामुदायिक केंद्रों में, सब जगह हिंदी सिखाई भी जाती है। पढ़ाने और सिखाने का फर्क कर रहे थे, तो बिल्कुल सिखाई जाती है, क्योंकि वहाँ रामायण से छोटे छोटे संवाद लेकर बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बड़े नाटकीय ढंग से उनको नाटकीय प्रशिक्षण देते हुए, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं कि वो उस चीज़ में आनंद भी लेते हैं और सीखते भी हैं। और यहाँ जैसे कहूँ तो जब मैं ट्रिनिडाड में थी तो 5 दिन वहाँ डॉक्टर विमलेश गांधी वर्मा जी का आना हुआ। उस 5 दिनों में हमने कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जो बहुत ही मतलब आज तक एक सफलता मिली। तो मैं समझती हूँ जैसे इस तरह के जो प्रशिक्षण है वो 5 दिन ना करके किसी को एक लंबा समय, बहुत लंबा नहीं, 30 दिन का, 30 दिन के लिए यदि भेजा जाए और वो प्रशिक्षण जो किया जाए वो छात्रों को ना करके, इस तरह जब किसी को प्रशिक्षण के लिए विशेष तौर पर भेजें तो शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात की जाए। यदि एक व्यक्ति 30 दिन तक जाकर कोई विशेषज्ञ 30 शिक्षकों को प्रशिक्षित करे तो उनमें से 20 तो ऐसे तैयार हो ही जाएंगे जो आगे 20 को तैयार कर पाएंगे, और फिर हर 20 में से हर व्यक्ति
आगे 10, 15, 20 को तैयार करेगा, तो मैं सोचती हूँ लंबी हमारी योजना बनाकर इसका हम लंबे समय तक इसका फायदा उठा सकते हैं। बात मॉरिशस की करें तो मॉरिशस में हिंदी काफ़ी बोली लिखी पढ़ी जाती है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी रोमन में नहीं हमारी देवनागरी लिपि में हिंदी पढ़ते हैं और स्कूली स्तर से ही पढ़ाई जाती है। संभवतः ये कारण लगा होगा इसका। और महात्मा गांधी संस्थान में जैसा सभी जानते हैं कि उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है, PhD तक की शिक्षा होती है। विश्व हिंदी सचिवालय वहाँ है ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के लिए, जो एक भारत और मॉरिशस की द्विपक्षीय संस्था है, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भाषा शिक्षण में और संस्कृति के भी प्रसार में। वो वहाँ की बैठता है जिनकी शुरुआत उन्हीं के बेटियाओं के रामायण बेटिया मजदूरों के रामायण पढ़ने से हुई, जब वो अपना दूध दर्द बांटने के लिए बैठते थे, पढ़ते थे। और फिर उन्हें लगा कि ये भाषा और ये संस्कृति जो है उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को भी संचालित करनी है, तो उन्होंने इसे एक बैठका नाम दिया। और ये जो बैठका है, ये संस्था है कि आज भी बदस्तूर काम कर रही है, बल्कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम कर रही है। और यहाँ जो लगभग 500 से अधिक बैठकाएँ हैं मॉरिशस में अलग अलग जोनों में, और 700 से अधिक अध्यापक हैं और उन्हें शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भत्ता भी दिया जाता है। तो यहाँ पर ये भाषा के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाती है और भाषा के साथ साथ संस्कृति का भी प्रचार प्रसार करते हैं। और एक बात जो मुझे अच्छी लगी, जैसे हिंदी प्रचारणी सभा वहाँ है, वहाँ की जो बैठकाओं का एक दो बार दौरा करने का हमें अवसर मिला, तो वहाँ जो कक्षा शुरू होती है बाकायदा सब वाद्य यंत्र वगैरह लेकर बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा के बाद पढ़ाई शुरू होती है। तो मुझे लगा कि हनुमान चालीसा तो ऐसे ही बच्चों को याद हो जाएगी और फिर वो जुड़ते भी हैं। तो भाषा और संस्कृति का इस तरह प्रसार होता है। लेकिन बात शिक्षण के प्रसार की करें तो आज का जो समय है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर की मदद से कहना चाहिए हम बहुत सारे पॉडकास्ट कर सकते हैं, वेबिनार्स कर सकते हैं, कक्षाएं ले सकते हैं। सिर्फ हिंदी ही नहीं, हिंदी के माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से हम अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे कि अभी सर कह रहे थे कि बहुत विविधता है भारत में, और हम सभी जानते हैं कि वो विविधता हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है, हमारा सौंदर्य है हमारे देश का। और इसी दिशा में वैश्विक हिंदी परिवार ने कक्षाएं शुरू की हैं। मैं आशा करती हूँ कि वो और भी समृद्ध होंगी और भी संस्थाएं हमारे साथ जुड़े कि हम वो सिर्फ सिखाने पढ़ाने तक न सीमित रहकर उसको कहीं ना कहीं प्रमाण पत्र से जोड़ें और उसका जो वैधता है उसकी वो बढ़े। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है, सभी काम कर रहे हैं। अगर थोड़ा थोड़ा और उसमें कहीं इजाफा किया जाए तो शायद हम और सफल हो सकते हैं अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने में। साहित्य सृजन पर बहुत विस्तार से बात की अनिल जी ने, तो इस दिशा में नहीं जाऊँगी। लेकिन जो गिरफ्तियाँ देशों के साहित्यकार हैं, महात्मा गांधी संस्थान है वहाँ पर, और ट्रिनिडाड में भी हिंदी पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में, हालांकि उसका स्तर अलग होता है। पर मॉरिशस में बहुत अच्छे साहित्यकारों को बैठकाओं का भी जो उत्तमा वाला ग्रेड है वहाँ पर अज्ञे जैसे और इस तरह के साहित्यकारों को पढ़ाया जाता है। तो मेरा मानना है कि जैसे भारत के साहित्यकार यहाँ पर डॉक्टर बेगम जी बैठे हैं जो महात्मा गांधी संस्थान में मॉरिशस में हिंदी चेयर पर रह चुके हैं, तो आप एक बात तो करेंगे, सहमत होंगे मेरी बात से कि भारत के बहुत से साहित्यकारों को हम मॉरिशस में पढ़ाते हैं। संभवतः मॉरिशस के भी कुछ साहित्यकार हैं जैसे अभिमन्यु है, धुरंधर जी, इनको पढ़ाया जाता है। लेकिन ये जो पढ़ाना बाकी देशों के साहित्यकारों का, अगर हम उन्हें सीमित रखते हैं डायस्पोरा अध्ययन वाले केंद्रों में, तो शायद हम अपनी जो ऊर्जा है उसको थोड़ा कम, मतलब उसका हम रिजल्ट पा रहे हैं। हमें चाहिए कि वो सामान्य छात्र छात्रों को भी उसकी जानकारी हो। और जैसे हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी के जाने के बाद और फिर उनके द्वारा मणिलाल डॉक्टर जी को भेजे जाने के बाद साहित्य वहाँ पर जो प्रकाशन की व्यवस्था शुरू हुई, जो लेखन जो शुरू हुआ, तो उसकी शुरुआत हुई। तो मणिलाल डॉक्टर जी के बारे में भारत के भी लोगों को पता होना चाहिए। मॉरिशस में सब जानते हैं, लेकिन मैं भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। तो कोई ऐसे लोग भी सामने आने चाहिए या कहीं संस्थागत तरीके से ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए। और जिस तरह सुबह किसी वक्ता ने बोला डॉक्टर पराठ भी राकेश पांडे की बात करें तो उसमें से उदाहरण दे रहे हैं। तो इस तरह की जो भाषा है वो चाहे फिजी बात हो, चाहे सरनामी हिंदी हो,
चाहे नेपाली हो, ये सबको हमें हिंदी से इधर न समझते, इसे भी हिंदी इतिहास हिंदी साहित्य का ही हिस्सा मानना है। और इसी संदर्भ में डॉक्टर रमेश वर्मा जी का मानना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दोबारा से लिखा जाना चाहिए, ताकि हम जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, भारतवंशी हैं, जो अन्य देशों में बसे हैं, उनके साहित्य को भी शामिल कर सकें। पत्रकारिता की बात करें तो ट्रिनिडाड में बॉब गोपी जी ने 2 छोटी-छोटी किताबें लिखी हैं। एक में उन्होंने छोटे-छोटे संवाद कि आप भारत जाए तो आपको टिकट कैसे खरीदना है, किससे कैसे बात करनी है, वो एक पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। एक उन्होंने नाम राष्ट्र दी, क्योंकि ऐसे लिमिटेड देशों में लोग हिंदी से जुड़े नाम हुआ करते हैं, तो नामों की राशि और नामों के अर्थ देते हुए एक पुस्तक निकाली है। कुमार महावीर जी हैं, डॉक्टर कुमार महावीर, उन्होंने ट्रिनिडाडियन हिंदी परिषद कोष निकाला है। तो काम हर जगह हो रहा है, आदेश राष्ट्र से पत्रिका निकलती है, मॉरिशस में साहित्य सृजन तो विपुल मात्रा में हो रहा है, पर मैं समझती हूँ कि आवश्यकता है कि प्रकाशन की व्यवस्था भी हो। जरूरी नहीं है कि हर मॉरिशस लेखक को भारत आकर प्रकाशन ढूंढना पड़े, कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ प्रकाशन ले सब तराश में। कुछ समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया जा सकता है, और अभी तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ कागज पर हो, हम ऑनलाइन समाचार पत्र भी निकाल सकते हैं। हिंदी, संस्कृत, बंगाली, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सब तो पढ़ाई की जाती है। महात्मा गांधी संस्थान में तमिल, तेलुगु, मराठी जैसी भाषाओं के भी विभाग हैं, वहाँ बताया ये सब विषय 28 भाषाएं, 28 सभी भाषाओं का शिक्षण अध्ययन अध्यापन होता है। और वहाँ पर इनके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, तमिल की, तेलुगु की, मराठी की, ये संस्थाएं हैं वहाँ पर, जो बहुत ही शिद्दत से अपनी संस्कृति का प्रचार करते हैं भाषा के माध्यम से, और भाषाओं के विकास को और संस्कृति को वो सिर्फ पढ़ाने सिखाने तक नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बनाने और अपने आने वाली पीढ़ियों में संचालित करने के लिए बहुत सजग हैं, समर्पित हैं। रामलीला की बात करें तो ट्रिनिडाड में मंचीय रामलीला भी होती है, मैदानी भी होती है। रानी जी ने बहुत काम किया है, आप स्कॉलर हैं इस क्षेत्र में, और बहुत ही हमें वहाँ देखने को मिलता है रामलीला बहुत ही सुंदरता से। और मॉरिशस में रामलीला नहीं होती, लेकिन रामायण सेंटर में सभी जानते हैं राम कथा, तो कथावाचक बहुत वहाँ भारत से आते हैं और बहुत सुंदर कथा करते हैं। बहुत लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझते तो भी भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। और कुछ संस्थाएं मॉरिशस सनातन धर्म फेडरेशन जो है रामायण के आराधन गायन की प्रतियोगिताएं वगैरह करती हैं। तो इस क्षेत्र में थोड़ा आदान प्रदान और बढ़ना चाहिए, और ज़्यादा हमें जानकारी होनी चाहिए कि मॉरिशस में क्या हो रहा है। बात करें लोक संगीत की, मैं जल्दी से अपनी बात समाप्त करूँगी, डिटेल्स में पॉइंट्स को छू देती हूँ। लोक संगीत की बात करें तो ट्रिनिडाड में जैसे सुबह भी किसी ने मेंशन किया कि चटनी संगीत है, जिसमें सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है, कैलिप्सो और सोका भी उसमें जोड़ दिया जाता है। मॉरिशस की गीत गवई से हम सभी वाकिफ हैं। मैम ने अभी पुस्तक दी, कल हमने इस पुस्तक को देखा, और यूनेस्को में जो इसे इंटेंजिबल हेरिटेज का दर्जा दिया गया, उसमें जो आपने ग्राउंड वर्क ही नहीं किया, उसके बाद भी बहुत मेहनत की। और बात करें कि सिर्फ उसे उतना एक दर्जा दिलाने की बात नहीं थी, डॉक्टर सरिता बुद्धू उसे जन जन तक लेकर गई है, और जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको ये आगे लाई है, उनको इसमें शामिल किया ही नहीं है, उनको इस काम में लगा दिया है, जुटा दिया है, वो जुट गए हैं। और आपने वहाँ पर 51 स्कूल खोले हैं जो गीत गवई सिखाते हैं, भाषा सिखाते हैं। और 51वें स्कूल का जो इनॉग्रेशन हुआ उसमें मुझे जाने का मौका मिला। 2 नवंबर की बात हम सभी जानते हैं कि विद्या दिवस पर, और इस पर भी डॉक्टर सरिता बुद्धू जी यज्ञ करती हैं सुबह सालों से, जिसमें उन सबको याद किया जाता है। टेलीविजन, रेडियो, इन पर बहुत से कार्यक्रम आते हैं हिंदी में, और त्योहारों की बात भी की जाती है। इन सब में भी हमें थोड़ा आदान प्रदान और बढ़ाना चाहिए। निस्संदेह ICCR और ARSP इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें और काम करें। और गंगा तालाब का महत्व हम वैसे भी जानते हैं, वहाँ पर परी तालाब था, उसमें भारत से जो गंगा जल ले जाके मिलाया गया उसका नाम गंगा तालाब हो गया। अभी मोदी जी जब भारत गए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने उनका स्वागत गीत गवई से किया गया, और वो जब भारत से गए तो गंगा जल लेकर गए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी को, मॉरिशस के राष्ट्रपति जी को भी गंगा जल दिया। और बस थोड़ा सा काम और करें तो जैसे हिंदी प्रचारण सभा की बात में कर रही थी, वहाँ पर लगभग 150 साल पुराने दस्तावेज हैं, जैसे दुर्गा का पुण्य किया था डिजिटलीकरण, ऐसे उनमें डिजिटलीकरण करने की जरूरत है। क्योंकि एक बार मैं बस अपनी बात समाप्त करूँ, एक बार मौका मिला था वहाँ जाने का, और वहाँ के राष्ट्रपति महोदय भी आए हुए थे, तो उन्होंने थोड़ी जिज्ञासा दिखाई कि इनने लिखा क्या हुआ, अखबार की खबर नहीं हुई 1834 1850 की, तो वो देखने लग गए। और
मतलब मुझसे अनुरोध किया कि आप पढ़ेगी, मैं पढ़ती जा रही हूँ, तो बार बार पढ़ने को मिली, और आगे पढ़िए और आगे पढ़िए, मुझे मैं समझ रहा हूँ, हालांकि मैं हिंदी पढ़ नहीं सकता। तो बहुत अच्छा होगा कि इनकी ऑडियो बनाई जाए और इनका डिजिटलाइजेशन किया जाए, तो इस क्षेत्र में हम कार्य कर सकते हैं। और ILRP में जो दर्द हमने देखा मॉरिस हसन खान जी का, वो मैंने महसूस किया है मॉरिशस में रहकर, बहुत काम करा मॉरिशस इस क्षेत्र में, लेकिन निस्संदेह मॉरिशस अकेला या जितने भी डिजिटलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, इसमें हमें भारत की जो सक्रियता है वो बढ़ानी होगी, और सभी देशों से हमें जो भी हमें समर्थन मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय भूमिका निभानी पड़ेगी। हमें मोदी जी ने भी इसी तरह का एक संकेत किया है कि हम इस दिशा में काम करेंगे। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत आभार। का भी बेटा और सरलता से दिया जा सकता है, समय की कमी है, प्रवाह। और एक नरेश जी आने वाले हैं, आइए नरेश जी क्विकली। Thank you, sir, for inviting again for this important session. Yesterday already we had so many speakers who have covered so many dimensions related to the culture, social, political, or the current issues of the Indian diaspora. But today actually I will just focus on the 5 important points in case of this Indian diaspora issues. This particular session is related to the roundtable issues and a road ahead in the context of the diaspora. First of all, I would like to actually emphasize the importance of the relevance of this particular conference, because this is interdisciplinary conference. In case of India, I don't know there is any interdisciplinary conference already conducted over the India, because this is the first one actually ARSP taken this initiative to conduct interdisciplinary conference. And the thing is that we have a actually disciplinary domain. We don't have an interdisciplinary domain in case of India. We have to must thank to our current government, because they have taken actually MEP 2020, and there is so many programs actually or courses have been designed to actually to cover the interdisciplinary and multidisciplinary approach to cover understand the deep meaning of the policies and challenges of the particular subject, whether it is diaspora of migratory issue. So that is very much important. And second important contest I would like to emphasize here that the strengths and challenges to actually available data sources in case of India, particularly in migration and diaspora studies. We have already spent until 15 years in case of diaspora studies in the Center for Diaspora Studies in Gujarat. The thing is that we have a limited set of indicators. Like we have a census data, we have a limited information. We don't have a different indicator or sub-indicator or parameters to actually cover the diaspora issue. So that needs to be actually covered with the census or the other process of data analysis. But here is a sample survey. We cannot ignore the importance of the sample survey, because we are as an academician in the case of India, they are much more reliant on the sample survey. So that sample survey very much relevant and need to be emphasized more financial support to actually cover the in-depth study for diaspora issues and carrying the help of sample survey. And third important point, sir, I would like to actually emphasize here to establish data resource centers in the different universities. Whether it is related to Guyana-India, our Prime Minister Ananda Bose already emphasized in case of Oman when he to the Kutchi diaspora, how they actually created community experience and how they contributed the host society, and how actually multi-kind communities or traders, they have established their own identity. Similarly, other actually Caribbean countries or the other old diasporic countries wherever the Indians have presence, they have made their own identity and presence. And this already has been important diaspora already highlighted by the actually this UN Sustainable Development Goal, because in case of contribution made by the migrants and diaspora. So that can be actually very much important. And
Fourth important point, to promote actually more educational courses, is whether it is a BA level or MA level, to actually in case of diaspora or migration issues. Because hardly in the university we have courses pertaining to actually Indian diaspora. We have areas studied courses in case of JV. We have actually some of the university we have like Vara Center for Diaspora Studies there, our university is there. So we have actually limited courses in case of diaspora. We need to promote actually much courses related to whether it is a BA level or whether it is related to MA level. And research is already going on. So that we need to be very much emphasized within this conference, within the interdisciplinary perspective. And last important point actually I would like to emphasize the immigration bill. That is very much relevant in the case of India. So that is already pending almost 41 years. Now that the draft is already prepared, I think Government of India very soon actually proposing to come in Parliament session. And that is very much relevant in case of so many actually diaspora policies and programs pertaining to actually migrant labor and particularly related to the Indian diaspora, those who are willing to work in different countries. So these are the important points in the context of NRI and PIO. I would like to mention here. Thank you very much. Thanks very much, and I thank the panel, but before I conclude, I have a point to make. We are working on, as suggested by Professor Secretary also yesterday, that we should work on regional diaspora, and today we are talking or meeting in University of Calcutta. This is an important meeting because Bengal diaspora is also spread all over the world, but they are less connected. And this can be a region where we need to penetrate, go out, reach out to them, and get them connected. And can Calcutta University of Calcutta be a center for all such initiatives? Is a question, I think. Thank you very much. आप बहुत बड़े ध्यान से और धैर्य से सुनते रहे, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और पैनल को अवश्य करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। Recording stopped. Thank you, Chair Sir, Shri Shyam Parande, and all the panelists, and having a huge successful session, and the last technical session it was. After this, we will have our valedictory session, but in between there is a few minutes to get entertained, and our student, he will recite a Bengali. समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया जा सकता है, और अभी तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ कागज पर हो, हम ऑनलाइन समाचार जैसी भाषाओं के भी विभाग हैं, वहाँ बताया गया ये सब विषय पढ़ाई, ये भाषाएं पढ़ाई, सभी भाषाओं का शिक्षण अध्ययन अध्यापन की संस्थाएं हैं वहाँ पर, जो बहुत ही शिद्दत से अपनी संस्कृति का प्रचार करते हैं भाषा के माध्यम से, और भाषाओं के विकास को और संस्कृति को उस ग्रामीण भी होती है, मैदानी भी होती है। इंद्रानी जी ने बहुत काम किया है, आप स्कॉलर हैं इस क्षेत्र में, और बहुत ही हमें वहाँ देखने को कथावाचक बहुत वहाँ भारत से आते हैं और बहुत सुंदर कथा करते हैं। बहुत लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझते, तो भी भावनात्मक बात समाप्त करूँगी। लोक संगीत की बात करें तो इंटरनेट में जैसे सुबह भी किसी ने मेंशन किया कि चटनी संगीत है, जिसमें सभी भाषाओं के शब्दों को प्रयोग होता है, जोड़ दिया जाता है। मॉरिशस की गीत गवई से हम
सभी की बात नहीं डॉक्टर सरिता जी उसे जन जन तक लेके गई है और जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको के आगे लाई है उनको इसमें व्यापारों से बात की जाती है। इन सब में भी हमें थोड़ा आदान प्रदान और बढ़ाना चाहिए। निस्संदेह ICCR और ARSP तलाक में भारत से जो गंगा जल ले जाके मिलाया गया उसका नाम गंगा तलाक हो गया। अभी मोदी जी जब भारत गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो दस्तावेज हैं जैसे दुर्गा का पुण्य किया था डिजिटल जानिएगा और वहाँ के राष्ट्रपति महोदय भी आए हुए थे तो उन्होंने थोड़ी जिज्ञासा दिखाई कि इनमें लिखा क्या हुआ था। मैं पढ़ती जा रही हूँ तो बार बार पढ़ने को देखिए और आगे बढ़िए और आगे हालांकि मैं हिंदी पढ़ नहीं सकता तो बहुत अच्छा होगा कि और इस हसन खान जी का वो मैंने सुन सीखा और इस मैं पढ़ती जा रही हूँ तो बार बार पढ़ने को देखिए और आगे बढ़िए मैं समझ रहा हूँ हालांकि मैं हिंदी पढ़ नहीं सकता तो बहुत अच्छा होगा कि और इस हसन खान जी का वो मैंने महसूस किया है मॉरिशस में रहकर बहुत काम कर रहा है मॉरिशस क्षेत्र में लेकिन इसमें वो बढ़ानी होगी और सभी देशों से हमें सब जो भी हमें समर्थन मिलेगा কথা ছিল যে সুপ্রিয় পাখির ভাষা শুনে কচ্ছপের মতো হেঁটে আসা ট্রাম দেখবো আর জীবনানন্দের জন্য আমার মারা হবে কখনো খিদে পেটে বসন্ত টেবিলের কাছে কখনো গিরিশ মঞ্চে নাটক নম্বরে মৃণাল রায় ছবি সারা দুপুর পড়ে থাকবো বইয়ের উপর উঠে হয়ে বই পাড়ায় কফি হাউসে ঠান্ডা কফি সামনে নিয়ে ঈশ্বরের চেয়ে বেশি ভাববো ঈশ্বর চন্দ্রের কথা ছিল কথা কার সঙ্গে হয়েছিল আমার রবীন্দ্র সদন নেটির জল মরুমিট কার সঙ্গে like we have sensor data, we are as a case of India, they are much more reliant on the central service. So that central service very much दोबारा से लिखा जाना चाहिए ताकि हम जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं जिन्हें दो छोटी छोटी किताबें लिखी हैं एक में उन्होंने छोटे छोटे संवाद क्या भारत जाएगा और टिकट कैसे खरीदना है किससे कैसे बात करनी वो एक दूसरे मुझे बहुत अच्छी लगी। कुमार महावीर जी हैं डॉक्टर कुमार महावीर उन्होंने जनरेटेड हिंदी परीक्षा कोर्स निकाला है तो काम हर जगह हो रहा है। आदेश पत्रिका कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ प्रकाशन में सब करा सकें। कुछ समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया जा सकता है और अभी तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ कागज़ पर हो हम ऑनलाइन समाचार जैसी भाषाओं के भी विभाग हैं वहाँ बता रहे ये सब विषय पढ़ाई ये भाषाएँ पढ़ाई सभी भाषाओं का शिक्षण अध्ययन अध्यापन की संस्थाएँ हैं वहाँ पर जो बहुत ही शिद्दत से अपनी संस्कृति का प्रचार करते हैं भाषा के माध्यम से और भाषाओं के विकास को और संस्कृति को ये काबिलरी होती है मैदानी भी होती है। इंद्रानी जी ने बहुत काम किया है आप स्कॉलर हैं इस क्षेत्र में और बहुत ही हमें वहाँ देखने को कथा वाचक बहुत वहाँ भारत से आते हैं और बहुत सुंदर कथा करते हैं लोग बहुत लोग समझते हैं शुद्ध नहीं है संस्कृत को भी भावनात्मक भारत समाज को लोक संगीत की बात करें तो चटनी संगीत है जिसमें सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है फिर उसको जोड़ दिया जाता है। मॉरिशस की गीत गवाई से हम सभी की बात नहीं डॉक्टर सरिता जी उसे जन जन तक लेके गई है और जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको ये आगे लाई है उनको इसमें व्यापारों से बात की जाती है। इन सब में भी हमें थोड़ा आदान प्रदान और बढ़ाना चाहिए। निस्संदेह ICCR और ARSP भारत से जो गंगा जल रिसाइकिल मिलाया गया उसका नाम বর্ষায় চুপসে যাবে রাশটিহারি এভিনিউ কাছে গ্রাম ছেড়ে যাওয়া হবে না। রায়গঞ্জের আকাশে পুরোপুরো মেঘ জমবে আর আমি বসে থাকবো একা দরজা জানলার সাথে অন্ধকার ঘরে শ্বাস ফেলার শব্দ যেন না শুনি এমন নিঃশব্দে
আমার আর লেজওয়ালা ঘুড়ির পেছনে সারা বিকেল ছোটা হবে না। স্বপ্নগুলো না পেয়ে পেঁচাতে পেঁচাতে স্বপ্নের বয়স ফুরাবে। समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया जा सकता है और अभी तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ कागज पर हो, हम ऑनलाइन समाचार जैसी भाषाओं के भी विभाग हैं वहाँ बताया गया ये सब विश्व 28 भाषाएं 28 भाषाओं का शिक्षण अध्ययन अध्यापन संस्थाएं हैं वहाँ पर जो बहुत ही शिद्दत से अपनी संस्कृति का प्रचार करते हैं भाषा के माध्यम से और भाषाओं के विकास को और संस्कृति को वो सब प्राइमरी होती है, मैदानी भी होती है। इंद्रानी जी ने बहुत काम किया है, स्कॉलर हैं इस क्षेत्र में और बहुत ही हमें वहाँ दिखने कथावाचक बहुत वहाँ भारत से आते हैं और बहुत सुंदर कथा करते हैं। लोग बहुत लोग समझते हैं जो नहीं भी समझते वो भी बात समाप्त करूँगी। लोक संगीत की बात करें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सुबह की किसी ने मेंशन किया कि चटनी संगीत है जिसमें
सभी भाषाओं के शब्दों को प्रयोग करके सोलह सौ उसे जोड़ दिया जाता है। मॉरिशस की गीत गवाई से हम सभी की बात नहीं, प्रोफेसर से जन जन तक लेकर गई है और जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको ये आगे लाई है, उनको इसमें व्यापारों की बात की जाती है। इन सब में भी हमें थोड़ा आदान प्रदान और बढ़ाना चाहिए। निस्संदेह ICCR और ARSP में भारत से जो गंगा जल रिसाइकलिंग में लाया गया उसका नाम गंगा तालाब हो गया। अभी मोदी जी से भारत गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो दस्तावेज है जैसे दुर्गा का पूरी किया था डिजिटली जानिएगा। और वहाँ के राष्ट्रपति महोदय भी आए हुए, उन्होंने थोड़ी जिज्ञासा दिखाई कि इनमें लिखा क्या हुआ। मैं पढ़ती जा रही हूँ, वो बार बार पढ़ने मुझे और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, मुझे मैं समझ रहा हूँ, हालांकि मैं हिंदी पढ़ नहीं सकता। तो बहुत अच्छा होगा कि और इस खान जी को मैंने महसूस किया है मॉरिशस में रहकर बहुत काम कर रहा है मॉरिशस इस क्षेत्र में, लेकिन इसमें बढ़ानी होगी और सभी देशों से हमें सब जो भी हमें समर्थन मिलेगा जिससे हमें काम करेंगे। आपने बुक सुना, और मैंने जाने वाला आइए मैं क्विकली ताकि हम जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं जिन्हें दो छोटी छोटी किताबें लिखी हैं, एक में उन्होंने छोटे छोटे सवाल कि आप भारत जाए तो उनको टिकट कैसे खरीदना है, किससे कैसे बात करनी है, वो एक पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। कुमार महावीर जी हैं, डॉक्टर कुमार महावीर, उन्होंने न्यायालय हिंदी परीक्षा कोश निकाला है। तो काम का चला हो रहा है, आदेश कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ प्रकाशन में सब करा सकें। कुछ समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया जा सकता है और अभी तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ कागज पर हो, हम ऑनलाइन समाचार जैसी भाषाओं के भी विभाग हैं वहाँ बता रहे ये सब विषय पढ़ाई ये भाषाएं पढ़ाई सकती भाषाओं का शिक्षण अध्ययन अध्यापन संस्थाएं हैं वहाँ पर जो बहुत ही शिद्दत से अपनी संस्कृति का किया है, स्कॉलर हैं इस क्षेत्र में और बहुत ही हमें वहाँ देखने कथा वाचक बहुत वहाँ भारत से आते हैं और बहुत सुंदर कथा करते हैं। लोग बहुत लोग समझते हैं, जो नहीं भी समझते वो भी भावनात्मक बात समाज को is very useful points to children. लोग संगीत की बात करें तो किसी इलेक्शन के चटनी संगीत है जिसमें सभी भाषाओं के शब्दों को प्रयोग करके उसे जोड़ दिया जाता है। मॉरिशस की गीत गवाई से हम सभी की बात नहीं, प्रोफेसर से जन तक लेकर गई है और जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको
के आगे लाइन है उसमें व्यापारों की बात की जाती है। इन सब में भी हमें थोड़ा आदान प्रदान और बढ़ाना चाहिए, जिसमें ICCR और ARSP में भारत से जो गंगा जल रिसाइकलिंग में लाया गया उसका नाम गंगा तालाब हो गया। अभी बार बार पढ़ने को लेकर और आगे बढ़िए मैं समझ रहा हूँ, हालांकि मैं हिंदी पढ़ नहीं सकता। तो आइए मैं इससे कैसे कोशिश करना है, तो काम बचेगा होगा आदेश कोई ऐसा अभी प्रकाशन किया जा सकता है। और अभी तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ कागज पर हो, हम ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन किस संस्थाएं हैं वहाँ पर जो बहुत ही शिद्दत से अपनी संस्कृति का प्रचार करते हैं भाषा के माध्यम से और भाषाओं के विकास को और संस्कृति को दूसरे प्रामिलरी होती है मैदानी में भारत से आते हैं और बहुत सुंदर कथा करते हैं। भारत समाज को लोक संगीत की बात करें तो और जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको ये आगे लाइन है उसमें व्यापारों की बात की जाती है। ICCR और ARSP नाम गंगा तालाब हो गया। अभी मोदी जी से भारत गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो दस्तावेज है जैसे दुर्गा का हमने किया था जिज्ञासा दिखाई थी मिली क्या लेकिन इसमें बढ़ानी होगी और सभी देशों से हमें सब जो भी समर्थन मिलेगा।
Anthropology is getting lot of medicine. Complicated also.
self-sustaining like iron. They become self-sustaining. They reinvented themselves. They don't want any help. And you know, it's a valuation for that. For you, working with you, because they don't have this kind of money. That kind of money. And you can also start. They have enough money. They have enough money. They'll be more than happy.
We are going to start our valedictory sessions very shortly. Our Honorable Vice-Chancellor will be joining us very soon, and he has come. And our Honorable Registrar Sir has also come. I request to chair this session, Madam, Honorable Vice-Chancellor Madam will chair this session, and this session will be co-chaired by Sri Shyam Parande. So you are requested to come over the dais. And our respected chief guest is Dr. Saru Bose, Director, Maulana Azad. Recording in progress. Maulana Azad, University of Asian Studies. Please have your seat on the dais. And we have our guests of honor, whom I request to take their seats
just opposite the dais, Dr. Sarita Budhuji, former chairperson, Bhojpuri Speaking Union, Mauritius. You are requested to come in front of the dais and have your seat, please, madam. His Excellency Professor Anil Suklal, High Commissioner, Republic of South Africa, is requested to come and have your seat, please, sir. His Excellency Dhamkumar Siraj, High Commissioner, Cooperative Republic of Guyana, he is already here. Thank you, sir. And we have with us our Registrar, sir, Professor Devashish Dash of University of Calcutta. The conference report will be placed by the head of the Department of Sanskrit, Dr. Kamal Kishore Mishra. And finally, the recommendations and concluding remarks will be made by Professor Gopal Aroram, as the Secretary of ARSP. And he will be, I invite you on the dais, sir. And he will be conducting the session later on. No, not later on, from right now. Thank you very much, the distinguished dignitaries on the dais, Vice-Chancellor, Professor Shanta Datta. I have learned how to pronounce now, after 2 days proceeding. Earlier I was mispronouncing as Professor Shanta. So it's Professor Shanta. Thank you very much. This is the game that I have taken. I am here. Our chief guest, Dr. Parishad, Director of Matthias. Our very distinguished guest of honor, Dr. Sarita Budhuji, His Excellency Professor Anil Suklaji, His Excellency Kumar Siraji, and very learned registrar who has worked very hard to make this successful, Professor Devashish Das, my dear friend Dr. Kamal. Welcome to this particular session. This has been a very insightful and thought-provoking 2 days deliberations. We have discussed on the interdisciplinary aspects, on the historical perspectives, on the linguistic, cultural, regional, diaspora perspectives, on the economic perspective, and then in the open house, a detailed report will be presented in due course. The idea of a valedictory session is like in our scriptures we say Shravan, Manan, Nididhyasana. So that is the time now we have heard distinguished scholars. So this is the time when we now do a bit of contemplation, summing up, summarizing, and then from there we will take on the resolutions and then we'll try to translate them into action. So that you see is the whole objective, and this was the seed that has been sown. So with that, to start with, I will invite our distinguished guest of honors, to give us their views on the deliberations in the conference and whatever concluding thing that they have to say. So to start with, may I invite His Excellency Professor Anil Suklaji. Welcome, sir. Thank you, Chairperson. Let me acknowledge all of the high dignitaries, especially our Vice-Chancellor. Thank you so much for having us in this very esteemed and historic university. I feel very privileged to be in this university. I know I have 5 minutes, so I will not take much time. Firstly, I think we must congratulate the organizers for assembling us here over these past 2 days and putting together an excellent program with experts from India and the Diaspora region. I will leave this city of Calcutta much more enlightened and educated on the Indian diaspora. Now, having said that, I have a few points to make. Firstly, I think we need these platforms.
We need much more of these platforms. We've had, as I said yesterday, I've participated in about 5 or so diaspora conferences since arriving in India in October, mainly almost all in Delhi. So it's good to come out of Delhi. And part of the benefit of coming to a conference of this nature, you get to meet other experts, thought leaders, academics, and students. And I want to say, Professor, the next time we come to a university to interact amongst ourselves, and we have such an enthusiastic audience from the student body, please build in a session where we have an interactive session with the students. Because I think we need to benefit from their knowledge and get their views and have the opportunity to dialogue with them. So my appeal is that whenever we go to universities, please allow a session so that we can interact with the younger generation. After all, we are crafting future leaders, not just of India, but of the global community. So I'm saying that we need these platforms, and I hope it can be taken throughout India. I'm glad that I met professors here from Gujarat and Hyderabad. I've appealed to you to take this to your universities and institutions as well. Likewise, we need to do the same in our diaspora countries, amongst our thought leaders, our students, and our universities and think tanks, to have platforms like this. I think this rich history, which is not just India's history, but our history as well, needs to be preserved and needs to be scattered throughout the globe. As I said yesterday, this rising tide of India is also the rising tide of the Indian diaspora. Secondly, I was reflecting on what is the value of this conference? What do I go away leaving this conference as tangibles, apart from the knowledge that I have gained? I think we need to make some practical recommendations going forward. As I said, this platform should continue, but equally important, and listening to Prime Minister Modi ji at the PBD in Odisha, where he set out a series of his thinking, and I don't think it is comprehensive. I think he just put thoughts out there for us to digest and to react to. I think we need to look at creating a global Gurmitya center, and it has to be housed here in Delhi. Because what we need is, with all of the energy that is flowing, not just here in India, but in the diaspora country as a whole, we need a central force to draw us together and to collect all that is happening, that has happened in the past, and to have a focal point. And therefore, I met with ICCR DG Ambassador Singla a few weeks ago to discuss Prime Minister Modi's vision. And I put forward the idea that the Indian government should set up a global Gurmitya center. And we need to look how we bring all of the data, the research that has happened in the past, current research, and research of the future, where we link our think tanks, we link our academics, we link our students, and all of the data that has been collected since the beginning of the diaspora period and going forward. We need a central repository, and I think that is something we should look towards in collaboration with the Indian government, but in partnership with the diaspora communities as a whole. I think it's very important to create a network of universities and think tanks. Not just those that are here in India, but throughout the world where we have diaspora communities and aspects of diaspora studies. It may not be full module, it may just be a module, it may not be a full course, in whatever form. We need to create a directory. My good friend here, Prof. Ajay Dubey, is one of the pioneers in India in this. And I think, Ajay, you should think about this in collaboration with your Indian counterparts, as well as those of us in the diaspora. How do we create a university think tank network, bringing academic students and thought leaders together in this direction? The private sector. We heard from various experts the role of the private sector. When Modi ji meets Satya Nadella, he's not just meeting him because he's the head of a global MNC. He's also meeting him because of his Indian identity and his roots and his attachment to India. Now, I believe the Indian government, especially the Ministry of Commerce, which should take the lead
in creating a facility where we tap in on the global Indian diaspora. You have in all of the diaspora countries, Indians heading major business institutions, even heading multinationals. Are we using this adequately? Can't we bring all of us together and again perhaps creating a database? For me, what is important when I have Indian businesses coming to see me, which I get almost 3 or 4 times a week. In fact, on Sunday when I go back to Delhi, I'm meeting the head of Varun Beverages, Ravi Jaipuria. And I'm introducing him to a South African business person, an Indian business person, who's building a factory for him in South Africa. He's invested, Jaipuria has invested over 2 billion in South Africa and invest another 3 billion rands in the coming years. But I put him in touch with an Indian business person because I know there's synergy there and there's comfort there. Why can't we do this on a global scale? Take advantage of the opportunities that will benefit India as well as benefit us. And not only that, when you look at South Africa is an anchor for much of Africa. When an Indian business person comes to South Africa, use the diaspora to network with the indigenous African business community and to network into the larger African continent of 1.4 billion. We are not doing this. Why? And I'm saying these are some of the things I hope we can take forward. We need to have a roadmap of how we want this new movement, the diaspora movement, to evolve globally. We can't let it just go along meandering without direction. And I think direction has to come from thought leaders here in India and thought leaders in the diaspora community. Not just amongst the government sector. This can't be just a government-driven initiative. It has to involve the whole of society. It has to involve our educational institutions. It has to involve the private sector. It has to involve civil society movements. And I think collectively we have to move this process, but in a coordinated manner. Now, one of the other things I have said is that with the focus on the Gurmukhi community, I've raised this, that we are all part of this Gurmukhi community that started in 1834 and continued to 1917, scattered throughout the empire. And India has brought us into an associate relationship, those of us coming from the Gurmukhi community, where they are now offering us OCI cards. But what baffles me, and maybe there's some logic to what the Indian government is doing, where some countries are recognizing up to the 7th generation, some to 6th generation. In the case of South Africa, 4th generation. My daughter applied for one, was told you can't because you're 5th generation. I don't think we should stagger and divide the diaspora community, especially the Gurmukhi community. We all come from the same roots. We have all suffered the same pain, and we are all today part of this new global evolving order. So let us all be treated in the same vein. So these are some of the issues that I think we need to take up, and I think we need to build structures so that this evolves in a structured manner where all of us can contribute in a meaningful way, working with each other, and most importantly in an inclusive manner, in strengthening Bharat so that Bharat becomes Viksit Bharat by 2047, and we in the global community rise with the rest of Bharat and benefit from that. Thank you so much for having me. Thank you so much, sir. You have summed it up so well, and thank you for those recommendations. We'll certainly incorporate them in the report. Appreciate that, sir. Now I request His Excellency Mr. Dharam Kumar Siraji for his comments. Thank you very much, and let me from the onset once again register my compliments to the organizers of this impressive event. In particular, I want to recognize also Vice-Chancellor, Professor Shanta Datta, like also in my country, I love Shanta, but we spelled it as SH. So I made that mistake myself to be. And coming after His Excellency Supla, it's very difficult to say anything different because as you mentioned, sum it up nicely.
of External Affairs recognizes the importance of the general trust of this conference, looking at the interdisciplinary perspectives of the Indian diaspora, which also led me to think that out of Guyana, we have third, fourth, and fifth generation people migrating to North America and to Europe. So I wonder if they would consider themselves from Indian diaspora or from Guyana diaspora, because that's also engaging the thinking now in my country. I have learned immensely from the different contributions that were made here and from the different countries, and I think we need to definitely organize more similar conferences in our own jurisdictions, and also with this international focus to highlight the importance of bringing together people of Indian origin. It has been long in the making. I recognize that from, as I mentioned earlier today, from the gathering in 2018 when Prime Minister Modi would have invited members of Parliament of Indian origin. And I think it's due to the wisdom and the vision of Prime Minister Modi and his colleagues that they are now pushing for the diaspora to do more and more, to be recognized more and more worldwide. I think the time is long overdue, but nevertheless, a start has been made, and I particularly want to join also my colleague in recognizing the involvement of young people in this discussion. It's refreshing to have it here in Calcutta at the university, one that was established so long ago. And this, I think, takes into consideration that the next generation will have a big role to play in moving this process forward as we seek to make the world a better place. And we definitely need to be exploring different options as individual countries and as countries at the bilateral and also at the multilateral level. I think too long we have been held hostage for one way of doing things to move in with one set of people, and it's refreshing that we are being offered options, and all over the world we should be congratulated for our initiative to take up on new alliances and our initiative in forming new alliances that is targeting ultimately the development of our own people and then the development of the wider community, people in our region and then at the international level. So once again, please accept my heartiest congratulations to the organizers and the challenges to how to get more of similar activities organized so we can flesh out more ideas, more initiatives, be a little bit more creative to take on the challenge and to move as quickly as possible towards more in-depth cooperation at the different levels, economically, politically, culturally, and of course, can't end without saying with sports also. Thank you very much. Thank you very much. Very aptly added two more very important points. One is on focusing on the young diaspora, and the other is the need to hold on new alliances, economically, culturally, even in sports, which is very important. I've always been saying that when you still have those Commonwealth games, why you cannot have games of the PIOs, that will make interesting, and I think that the cricket team will be the number one team in the world. You see, when you have the Indian players and the players from South Africa and from Guyana and other places, that will be wonderful. Thank you once again. And now I have the pleasure
distinguished guests on the especially Professor Vice-Chancellor Professor Datta, Vice-Chancellor, who has given us this opportunity to be here today. I should like to thank, like my predecessors, the University of Calcutta, the Rashtriya Sahayog Parishad, especially Mr. Ananda, the Secretary General, and Mr. Gopal Arora, the Director of the Research and Resource Center of the Antarashtriya Sahayog Parishad, and all the team of the Antarashtriya Sahayog Parishad, and all the distinguished delegates who representatives, excellencies, ambassadors of Guyana, of South Africa, Republic of South Africa, of Fiji, and other countries of the diaspora, and my beloved students who are here. I was also one of you here many decades ago, when one of your parents maybe wasn't born. My friend Mr. Sihara mentioned he is 168 years old. So I think I'm also about same, we are 1834 in Mauritius, almost 190 years old. And I came to this university as a student in 1963. So this is, I should like to thank you. I thank this university that has given me this the knowledge, the skill, which has empowered me to become to be able to contribute my life as a worker, as a social activist, because I think I learned to be an activist in Calcutta here, coming from a very protected family situation in those days. And Calcutta put the steel in me and made me strong, but also I had the soft power of Rabindranath Sangeet, Rabindranath Tagore, and all the various literary great whose photos we can see all around us here, who are giving us their blessings. Therefore, we have, and I should like to thank also the Ministry of External Affairs and the ICCR, who jointly have made this very successful international conference. I am here among us, a friend of mine, the former security advisor and heritage coordinator of the Ports Authority, Mr. Gautam Chakravarti. I welcome you here. You have been the one who introduced me and my friend, late Mrs. Leela Gadadhar Sarup, a very great businesswoman of this place, but she was also a devoted, passionate historian who spent 10 years in the dusty library archives of Kolkata from 9 to 4 for 10 years, getting all first-hand information which we will never be able to get because we will not be allowed to. And she produced, because being a business magnate, she made volumes, 20 volumes of huge volumes of history books which are available, and you may get later contact from me. I will give you the contact. And she also has mentioned about the ship travels. The ship travels to all the diaspora countries. We don't know about all these. So all the history, we can have access to these books as secondary references, and the embassies can have them in their libraries also. And we talk about the diaspora, about our roots, about where we have come from. We have, people have very ideas. From the Bihar se aa rahi. I mean, Kolkata se aa it's correct. But let me tell you, there are so many places in Madras, because there was presidency during the British Raj, British presidency, Madras presidency, Maharashtra presidency,
and the presidency of Bihar, Bombay presidency, the presidency of Bihar or Bengal and Odisha. All these are together. And for your information, let me tell you the Diaspora goes much beyond this. There was during the Dutch period a girl, a slave girl during the Dutch period from Calcutta, Ananda Bose, her name is. She's the first one and she was a fighter. She set fire to the camp of the colonizer, the Dutch. So you must know that this place has more history to give us, which we have to know together with the indentured laborhood, indentured diaspora. During the French period, Marais and Hon'ble got so many Indians to come as free artisans to this. And there were thousands of others, there were Vice-Chancellor, thousands of Bengalis who were settled in Mauritius before the Guyana-India. They also came during the Guyana-India period. All these students here can have an MOU with the University of Mauritius, and you have exchange program. Students of the college here, of the university, and of the university, and students of Mauritius, they come and they can stay with you here and they learn the history of their origin, their roots, Calcutta. And to tell you about these places, we have among North India, Antar, Hyderabad, Ranchi, Bangalore, Bangalore, Singapore, Parishad. I think these were in Bengal. Yeah. And Bihar, we have Shahabad, Patna, Guyana-India, Champaran, Saran, Jalpura, Morni, and also Banya, Bhajipur, Ajamgarh, Hyderabad, Basti, Gonda, Gorakhpur, Banaras, Mirzapur, Jaipur, 24th Pargana, Datta, metropolitan area in that time. So I think we need to go into this deep history, and it's only at a university that this can be studied. Not like people after we come for 2 days, we come, we make a few notes, we present our paper, we go, and then that's done. So this is serious work that has to be done at the historical academic level. Let me tell you, Mr. Gautam Chakrabarti took me for a boat ride along the Hooghly River for 3 miles. We were 3 kilometers, and we saw about all the 19 depots of the Guyana-India. We were only at a few meters by top of Suriname, and the memorial that was put by that boat was there. And when unfortunately a restaurant has come as close as this to it, which we have to look into. So these are points that we have to also look into. Another thing is, this conference has reflected on the deep bond and shared common history of all the diaspora countries, and with India, the common roots and the common roots. That is the Indian laborhood, which I am thankful, grateful to the Prime Minister Modi, who came last week to Mauritius and mentioned it in his speech. Therefore, if we are mentioning that there is no funding for years, this project has been stuck in Mauritius and the Secretariat by UNESCO. I think if Mr. Modi has mentioned it in his speech, I think funding can be had now. We can have money in the pockets of the MBA of the Finance Ministry of India to get the money to get this Indian child labour going. Then we have also not only common roots and rules, we have common food. Yesterday with the food we have some of these in Mauritius also. And we have all the shared Darpuri, South Africa, I have even Darpuri in Guyana, in South Africa, in Trinidad, and in Suriname, and in Mauritius, of course, it is a fast food. And therefore, all these can be looked into as other offshoots of the diaspora. The trauma of immigration, therefore, has been enriched by the sustainability of the enduring cultural ethos and the civilizational ethos. The way forward is, I was very happy. I want to be proud of this who had
And we studied Vedanta, we studied harmonium, Dhamma and Vada to get that satisfaction, that contentment. There will be so many thousands and thousands of young people like you in the diaspora countries, in Mauritius, who are going astray. They are being more Eurocentric, therefore we have to pull them, do something to pull them here. There are many sacred spaces in all the diaspora countries. When the Guyana went, they created, they recreated the Ganga Talab, the Ganga Mai and Mai Bap and so on. And in Mauritius you have Ganga Talab. Sacred spaces like Diwali in Trinidad, which is a UNESCO recognized. Recognized by UNESCO as a tangible World Heritage Site. ARSP in Mauritius is recognized as a World Heritage Site. DRRC is recognized as intangible cultural heritage of humanity. And UNESCO says, what is the value? What language do you speak in DRRC? In Creole, in Hindi? No, not in Hindi, in Bhojpuri. Therefore, the language must be taught in the formal and non-formal process. The government will ask periodical report, which the government of Mauritius must answer that DRRC, the curriculum of DRRC, the Bhojpuri language must be taught in their schools together with all the other languages. Another important thing that one must know, we speak of the Guyana. Could you give me your attention, please, the organizers? We speak of the Guyana. Over 200 years, 190 years of history in Mauritius. When they were especially harder for the Caribbean people, which is so far away from India. They were left on their own. So they मर गए थे वहाँ पर। साउथ अफ्रीका में कोई गांधी जी गए तो कुछ किया वहाँ लोगों के लिए। मॉरिशस में we were fortunate to be here to have गांधी जी, महिला डॉक्टर and प्रचारक और कॉलेज now and then. लेकिन फिर भी we were left to die in our cultural heritage, put under carpet. It was really nobody thought about it, nobody cared for it. It was no culture at all. Our culture was no culture. So, but after all this, we are happy that Mr. Modi's visit to Mauritius, he has given really a big power to the Guyana's languages, diaspora languages, and their food, their values, and especially the DRRC. And you must know that when they were, even in India, Hindi was not yet an official language. When the Guyana's went, they went with their Bhojpuri over here and so on. So what I would like to say that there is a mixed people in Mauritius, maybe also in other countries, like the people of African and Indian origin. They have multiple identities. Where do these people stand? They are Pillars, but they have also Indian surnames. Upper Sami, Kulu Sami, Gopal, so on, Gopal. But these people, they want to know their identities. They are not only Africans. They also have an Indian identity. We have to put this in our paper. How to have these people trace their roots, their Indian roots in India. Thank you very much. Thank you very much, Devi. You speak very passionately. You have highlighted a few very important points like the need to enter into MOU with universities, academic institutions, and in fact we have
Excellency Shri Anil Chuklanji, Professor Anil Chuklanji, Excellency Bharat from Guyana, the chief guest, Dr. Parishad Bose, Madam Dr. Sanita Bose from Mauritius, Esmal Hindustan, our Honorable Registrar Sir, Professor Das, the Secretary General, ARSP, Shri Shyam Parandesar, Secretary Professor Gopal Agrawal, and all the dignitaries, all our beloved students, teachers, head of departments, invited guests, workers, fellows, all of them, you are residing in our hearts. So from all of my heart, I express my deep gratitude to all of you. This is a very important occasion because whenever we talk, the Indian diaspora, the Calcutta is the epicenter. And somehow, Excellency, Calcutta University, established in 1857 during the colonial period, and the Indian diaspora related to the colonial thing. And when I was in Fiji, I have seen their pain, their struggle, their journey from pain to pain. So that's why this important seminar, international conference, world conference, whatever you want to say, you can say, but this is a very important event due to all of you. Due to all of you, all of your initiatives, all of your passions, all of your fires in their heart, our Vice-Chancellor, our Chancellor, our Registrar, all, I have no word. But this session, initially, we have invited, with the help of Professor Gopal Agrawal, have divided in 3 technical sessions. The session 1 is the inaugural session, and I can say the inaugural session was par excellence. We express our deep gratitude towards our Honorable Chancellor Sir and Professor Parishad, the Deputy Prime Minister of Republic of Fiji. We have a very close association. So, and Professor Sanskrit Madam, Ambassador Vinod Kumar Sir, President, ARSP, Registrar Sir. So this was the inaugural session. And I tell you one thing, our technical person, due to help, we are expanding this conference across the globe. And everybody is watching our activity, everybody is very inspiring our thought from the Senate Hall from the Calcutta University. The second session was the technical session, and we have, as I said, the 3 sessions we have decided. The first was historical perspective of this conference. The second was regional, cultural, and linguistic perspective. Third was economic perspective. And after that, the round table discussion, and the last one, the mandatory session now. Within the historical perspective, lots of delegates have discussed in length documentation and the data bank, mapping the oral history and traditions, addressing the roots, indented level, root projects. This was our main theme in historical perspective session. Excellency,
regional, cultural, language perspective. You know, Excellency, भाषा और संस्कृति हमारी जान है। भाषा के बिना संस्कृति और संस्कृति के बिना भाषा दोनों अमूर्त हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक आत्मा है और दूसरा शरीर है। एक्सीलेंसी, धर्म जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि भाषा हमारी पहचान है, संस्कृति हमारी जीवन पद्धति है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी साहित्य में इतनी जुड़ी हुई है। इन सारी चीजों को, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो बांग्ला हो, चाहे वो भारत की तमाम भाषाएं हो जहाँ डायस्पोरिक कंट्री में सब एक्सपेरिमेंट है। सो द रोल ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज इन डायस्पोरा कनेक्ट विद द स्पेशल डिफरेंस ऑफ संस्कृत, हिंदी, Bengali, these are the important factors for us. And that's why even in our department, we already proposed and we are going forward, Diaspora and Sanskrit, we are going to start some courses in the Sanskrit department, Diaspora and Sanskrit, and Excellency, I tell you, I need your blessings because this type of courses in the Sanskrit department with the real of the box concept, and it will be the first initiative throughout the globe from the Calcutta University, from the Department of Sanskrit. So we are trying to do something best for Indian diaspora and language and culture. So the technical session 2, we discussed about all kinds of things, and role of culture in Indian soft power, the hard power and soft power. These are the two important tools for our life. So hard power is a different thing, and soft power is related heart to heart. This is the public, the people to people connect. This is the soft power, and we are working. We all are working for soft power through our little whatever initiative we can do. The third technical session was very important because जहाँ लक्ष्मी है, जहाँ सरस्वती है, सरस्वती का आशीर्वाद मिलना चाहिए और लक्ष्मी के बिना हम चल नहीं सकते। So due to Lakshmi, goddess Lakshmi, the economic perspective for our growth is very important. So in technical session number 3, we discuss in length regarding trade, commerce, industry, technology, and contemporary issues, economic cooperation, and the Indian diaspora. So these are the very important factors. The one hand is goddess Saraswati, other hand is goddess Lakshmi. So we need both. We need both blessings. So technical session we are focusing like this. And after that, after lunch today, we focus about round table discussion, and Professor Aruna has a very important role regarding the round table discussion and diaspora issues and the road ahead. These are the burning issues. We have to address, we have to understand, we have to think, we have to plan, we have to futuristic approach. So these are the things. So we discuss in round table discussion. And after that, our chief guest, sir, Professor Bose, I am telling you the last program, the last activity section is a very important, brief. But in fact, Excellency, our journey starts from the Senate Hall, Calcutta University. And I hope all of you remember this memorable, unforgettable moment. And these are our sessions. Just in brief, thank you very much to give me opportunity to share these technical give some more ideas. Thank you, Anthropology. I will only add that not only the theme of the conference was interdisciplinary, the participants in the conference were also coming from different disciplines. We have very distinguished scholars, academicians, diplomats, very senior diplomats, politicians, and of course the activists, people from the field of literature, culture. So it was very broad-based in
connected from abroad, from Trinidad, from Suriname, from Fiji, from USA. 8 participants connected online and 17 actually came here. Dr. Sanjita Bose came here all the way from Mauritius for this conference. So that was a very important part of it. And now I have the honor of inviting a very distinguished scholar, the director of Azad, Asian Studies, Dr. Sarup Prasad Bose, who is the honorable chief guest of today's program. Please give him a big round of applause. A very good evening to each and all of you. I will not take much of your time because I find the list which is given to me that this session is from 4:30 to 5:30. When I stand up to give the valedictory address, it's nearly 6. The time is over, and here we fail to maintain the decorum. Whenever there is a seminar, I find the time is a free flow one. It will start at any time and it will end at any time. That never means to give this type of minute-to-minute program. Then you give a free flow time limit. Anybody can speak at his own will. Hence, the topic of this seminar remains interdisciplinary perspectives on Indian diaspora, the way forward. I found the main points have already been told by the distinguished Dr. Kamal Kishore Misra ji. Before starting my deliberation, I want to thank Srishan Parandi for inviting me here. It is his letter which has given me the strength to come here and stand before you. I also extend my respectful regards to Anand-ji, the High Commissioner of Republic of South Africa. My regards to Hon'ble-ji, the High Commissioner of Republic of Guyana. The distinguished speakers who have spoken before me. And the points which I have coined, I don't have time to elaborate on. But the point which has been raised by Kamal Kishore-ji, a journey from pain to privilege, he has told us, to define the journey of people who went from different parts of India to the different parts of the world. Now, from our point of view, our organization is under Ministry of Culture, Government of India. We work on soft power diplomacy. So, our request is let us build up relation between the universities of different countries who are being presented here to their honorable high commissioners, so that there can be student exchange programs, scholar exchange program, faculty exchange program, which will strengthen our relations. Now, cultural influence plays an important role in Indian traditions, Indian languages, Indian festivals, cuisines, yoga and Ayurveda. After the government, after our Prime Minister Modi took up this concept of yoga and Ayurveda were popularized. So we can have seminars, workshops on these topics which can help us to build cultural influences in different countries. We see the political impact, the role that Indian diaspora plays in different countries, the political behavior of the transnational ethnic diasporas, and their relationship with ethnic homelands political system. And we have seen how Indians came up in the political ladder and became vice presidents, prime ministers, ministers, and there we have to work out to bring the two countries together or closer at least.
Diplomatic leverage, I told about the soft power, and here we can work. Here also to promote the political and economic interest of both India and the countries where we will be working. And this diaspora can create a strategic link in our foreign policy formulation. And we find if they play these strategic links, how India's influence abroad is increasing in the recent years. Economic drivers are also a criteria. We have discussed it. And I've seen our speakers have told about it. The Calcutta's role as an important city connecting Indians throughout the world. Now here, during the post-colonial era, the role of job market, the role of stock market, the Indian investment in India and abroad, this has to be studied deeply. Here also research is needed. Indian capitalists are playing an important role not only in India but also abroad. Whether we like or we dislike, we live in an age of capitalism. So this role of the capitalists also has to be studied if we want to emphasize the economic drivers as far as linking relations are concerned. Now, cultural ambassadors, here the Indian spiritual leaders are playing a very important role. I don't want to name anyone, but we know that how they are changing the way of life around the world. But the connection between the establishment and these ambassadors, the informal ambassadors, if you can say, has to be more deep and close. They are practically playing a very important role, bringing Indian culture, the Indian way of life to the world. Now, whenever we talk of this diaspora, we think about the remittances we get from them. Now we get one of the highest remittances from our NRIs. $125 billion we got in the financial year 23-24. They play a very important role. Can't we think about the concept of dual citizenship? Why they will be debarred from their Indian citizenship? Let them be citizen in their country, no problem. But why the citizenship of their country from where their ancestors originated, lived, worked, and they still carry the name, the culture, the surname. So why we can't work on this so that they can get this dual citizenship facility and also the facility to have a voice in our voting system? When we are taking their money, when we are engaging them as our informal links with foreign countries, they should also have a say in our decision-making process. They are not foreigners to us. They are non-resident Indians. So when we recognize them as Indians, why don't we also recognize them as part and parcel of our system? Let's think about it. I don't say that this will happen overnight, but let's start working on this. The present government has solved many of the problems the NRIs used to have. The Prime Minister personally sat with them, talked about their problems, solved many of them, and our Foreign Minister has played an excellent role in solving problems of NRIs. So why we can't go a step forward to include them in our system itself? Now this knowledge innovation is also a very important thing, because most of the Indians who stay abroad are affluent middle class or rich class. They are one of the highest income taxpayers. They depend on social security schemes the least. They are not like Pakistanis and Bangladeshis going here and there in different parts of the world and they depend on the social security schemes. Indians rather contribute in the system. So they are very good
professionals. And when we are trying to build up an economy and when we are trying to be the third largest economy around the world, their expertise, their participation, I think will help us. Because as far as foreign direct investment contributions are being discussed, the contribution of NRI are very important. Trade collaborations between them and us is an important factor which has been discussed in the sessions. The sessions have also discussed the global role of Indian philanthropy organizations, like discourse, like Ramakrishna Mission. The Indian philanthropic organizations are playing a very important role around the world. The connections should be rediscovered, and Global Pravasi Rista portal, which NEA has started, which is facilitating communication, access and engagement in the entire developing process. We have to bring these systems and strengthen these systems, because today international organizations, international institutions play a very important role. And 3 crore plus Indians living abroad. There are many nations around the world which doesn't have even 3 crore population. So it is a huge support base India has. We should cultivate. We have just started, where many nations have developed a lot in this connection with their own citizens staying abroad. They have started late. It is better to admit this, and we have to work faster. Now, historical connections we have discussed. I will not go into this because I don't have time. I had a paper on it, but I told at the beginning, as I don't have time, I will not take more than 5 to 10 minutes what they have told. I have already covered 8 minutes. So, at last I want to just say that Indian footprints abroad, the concept of Radha Kumar Mukhopadhyay, Bharat, Brihat Bharat, Yattar Bharat, we should all study the book of Radha Kumar Mukhopadhyay. Once this book was studied deeply, after that this book went out of print. So this concept of Yattar Bharat is very important. India is not only the map we draw, it is a concept, it is a philosophy, which is coming down from the time immemorial. I find a living India in Mongolia, in Southeast Asia, the different versions of Ramayana in Southeast Asia, the temples around, even the presence of Buddhism in Central Asia. There may be no more Buddhists staying there, but the presence of Buddhism is there. The Buddhist stupas, the Buddhist statues of the great Buddha. So we have to discover these Indian footprints, tag them with the concept of Brihattara Bharat, and also a deeper academic relations. Because if you want to have a Indian vertical coming out of the colonial hangover, we need a deeper, closer academic collaboration. With these words, thanks for sharing 10 minutes with me. From the Ministry of Culture, Government of India, from Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, on behalf of the Honorable Governor of West Bengal, who is the President of our institution, I share my deep regards with each and all of you. Thank you very much, Dr. Bose, your words of wisdom and when you say that discipline of time has to be maintained, I entirely agree, sir, and will certainly take a note of it and try to follow that, observe that. Very important points on seminar, holding seminar or different
scriptures. We talk of Shravana, Manana and Nididhyasana, and in studies we have Abhyasa. So if we only listen and then go back, then it becomes only an intellectual entertainment, buddhi vilas and nothing else. You don't get anything out of it unless you really act on that. So the point is that whatever we deliberate, think deeply about that, then we form some resolutions. So we take some resolutions, and then based on that resolution we start the acting. So that is how we translate them into action. So all the very valuable inputs that we have received, we have noted down some points. So with the permission of the chair, sir, we'll just note down those points so that once we have your suggestion, then we go ahead and we'll take it at the forums. Like the project on documentation and digitization and creation of a data bank. This is one important thing on which we have to work. The government and the non-government organizations both have to work. Indentured neighborhood project, very important project, but somehow it kind of had some halt in between. So that I think India should take the lead. This was the view of the participants. It's an important project. Even if that funding has to be given by the government, we should take it up at appropriate levels. Tracing the route is a very important program, very emotional aspect also of it, of a Diaspora Connect. So that also we have to take forward, take that resolution, and we'll be working with the state governments also for that. Because without the help of state governments, only the central government and only at a governmental level, this huge task cannot be. Next is involving the diaspora organizations and providing the funding for the projects. On OCI card issues, it's a very important point because somehow there is a lack of uniformity about issuing of OCI card and which generation we take as a benchmark. It's a very important point, so that also to the policy planners we would like to take that part. Another very important thing is the introduction of diaspora courses in universities. And if a full-fledged course cannot be introduced, then at least papers or chapters in courses like history, anthropology, linguistics, literature, political science, economics, because this has become an interdisciplinary subject. It is not confined only to history or anthropology. So we have to take it. Ultimate aim is to start diaspora courses, but till that time is come, we should at least put the mention of these things, the little discussion of these things at the NCERT courses and the higher learning institutions. We can also take short-term courses which promoted sensitized students, like the students of Sanskrit and others, for them it was an entirely new subject. So we have to take those short-term courses, in the universities. In fact, ARSP has been doing it at different universities. Promotion of Indian languages in diaspora countries is another very important topic. In fact, Anil Joshi is there and he has started some courses online for teaching of Hindi. Sunita ji is there, Nita ji is there, Gram ma'am is there. They are doing good work in that. So we can use technology in that part. On the business front, we have to work, if India can work with European countries for creation of a common market for Indian products on the line of European Union for the seamless movement of goods. The government assistance in promoting Indian products. These are two important recommendations. World Media conferences and regional media conferences to be organized regularly. And Professor Bhatt spoke about how the whole paradigm shifted with the introduction of the formation of the high-level committee, but that was 25 years ago. So there's a need to form a new high-level committee in the light of the dynamics of the diaspora engagement, the way they have changed. Setting up of Global Media Center, maintaining the existing
memorials more professionally. Diaspora networking platforms need to be created. We have to focus on young diaspora, and skill mapping is an important part of it. If you can do the skill mapping, then it can improve the job opportunities also across the countries. Finally, the forging new alliances in the field of economics, culture, and sports, and seminars and workshops on different aspects of soft power of India. So these are the gist of the deliberations that we took in the last 2 days. So in front of this house, so we take them as adopted and we start working on that. Thank you very much. Greatly appreciate your support and contribution. And now I invite Shri Shyam Parandeji, himself a great activist. She has done a lot of work, Seva International, DRRC, and whatnot, total life devoted, for a social cause. I invite you, sir, for the final comments. Distinguished Professor Murthy, Dr. Kamal Kishore Mishraji, Professor Datta, Excellencies, and Mr. Kral, and my sisters, Dr. Sankari, Dr. Laliji, all the dignitaries and dear students. वो केशव कुमार मुझे अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, कारण आपको पता है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम में केशव महाराज है, तो कल से मैं याद कर रहा हूँ उसको, क्यों बोल रहा है, क्यों महाराज नहीं बोल रहा है, हमको अकेला नहीं है, वो रविंद्र ने जैसे सेंचुरीज लगाई ना अभी चैंपियंस ट्रॉफी में 123 years old from New Zealand, ये सब भारत की शान है, भारत के बाहर, और सेनेगल और गयाना और वहाँ के खिलाड़ियों की तो और कुछ मजा है. Like cricketers from West Indies, if you remember, Gudakesh Modi. Gudakesh is a name straight away picked up from Mahabharata and Bhagavad Gita. वो भी West Indies के टीम में है. And there is another gentleman who is Puran, Nicholas Puran from Sri Lanka. सब टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं. तो क्रिकेट इस तरह से इन सारे देशों में, लेकिन अभी इंटरनेशनल कंपटीशन ऑफ खो-खो टीम्स फ्रॉम ग्लोबल वर्ल्ड चैंपियनशिप दैट वाज हेल्ड इन दिल्ली, एंड बिलीव मी देयर वर टेंस ऑफ टीम्स, and in many of them the captains, like UK team had an Indian captain, like Trinidad team was there, right? The Netherlands team was there, and many among them they are Indians. So Indian games are now getting popular worldwide because of the PIO society and the Indians in our eyes. थोड़ा सा फर्क है. PIO, People of India Origin, आज जो इंडिया में जा रहा है ना, वो वहाँ शादी करके बसेगा, उसका बेटा होगा, फिर उसका तीसरी जनरेशन आ जाती है, PIO बन जाए, People of India Origin बन जाए, है ना? So this process goes on. और जैसे डॉक्टर सरोज जी ने कहा कि इनको नेशनलिटी मिलनी चाहिए, सिटीजनशिप मिलनी चाहिए. अभी तो हम बहुत दूर है उससे, we are far away from sir,
We're struggling for OCI and Indira is here. She is 7th or 8th generation. She is not getting the OCI card. Overseas citizen of India card. So the struggle is too strong and too long and too legal. इतना आसान नहीं है. But because of reciprocity of citizenship and all those matters, but ऐसा है. अब ये जब हमने बोला था 3 करोड़ लोग ये अपनी सॉफ्ट पावर में कहा कहते हैं, but soft power has to be expressed through culture. And if we don't practice the culture, we are so influenced by the global culture right now that we just forget what's our culture. हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, and what role we have historically. तो सब सही बात है. जैसे साउथ एशियन स्टडीज की इंस्टीट्यूट क्या है या आप लोगों ने बहुत से लोगों को पता नहीं है, but that's the place where Indian influence across the world. सेंट्रल एशिया में कैसा है, उज्बेकिस्तान में कैसा है, कजाकिस्तान में कैसा है, रशिया में कैसा है, साउथ ईस्ट एशिया में कैसा है, इंडोनेशिया, बाली, कंबोडिया, लाओस, वहाँ कैसा है, देखना है. लेकिन ये सब अभी हमारे पता पर नहीं है. और मैं आपको एक बात कहता हूँ, जैसे डॉक्टर सरिता जी ने कहा कि विद्यार्थियों में ऐसा काम करना चाहिए. और देखो मॉरिशस में कैसे लोग हैं, बांग्लादेश लोग बहुत पहले के लोग हैं, उनको पकड़ लो, यहीं पर पकड़ो. 2 दिन अभी है आपके पास. आई रिमाइंड यू, बिलीव मी, 3 years back, she is 82 plus, and she brought her group of very big boys during the release of the book release. Yeah, they were the book and presented it to Sahayog. Yeah, yes. So this book, and she was singing and dancing. तो इतना स्पिरिटी लोग है, ये दुनिया में हर में फैले हुए हैं और भारतीय से पुस्तक भरे हुए हैं. They have all the qualities. They have the I believe my word, we have lost many traditions, the many and Bharat, and these people have returned them. कुछ वाक्य है जो त्रिनिवास में मिलेगा, जो गवर्नर में मिलेगा, जो हम छूट गया, हमारा छूट गया. कारण 200 साल पहले जब गए तब there are instruments, there are music, there are traditions which we continue to follow, and in the course of time the Bharatiya have lost it. So all that is very important, and as she was telling about the intangible heritage. So there are many things we can come up, and here the challenge to the youth of this country, understand that, to study that, and then get the things done, so that these intangible, precious, history continues to be with us, the traditions continue to be with us. तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद कहने के बाद लोग आजकल समझ में नहीं आता है क्या है, तो इंग्लिश में भी इसका नाम है, और वो नाम है इंडियन काउंसिल फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन. So that's the role of अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद. I am really proud that University of Calcutta, when we accepted to hold this conference and help us, because Bengal has an important role that everybody talked about, and Calcutta, city of port of Calcutta, is important for all of us. And this needs to be studied from Calcutta, from the University of Calcutta and other universities in this region, so that we get the best of the past that we can build future on. With that in mind, I really thank you all. Too long to be sitting here 2 hours. So thank you very much. Namaste and Pra. Thank you very much, dear Shamli. So as we come to the conclusion of this very successful and
organize a conference of this scale and magnitude and in such a short time. Plenty of work has been done. I will say the volunteers of University of Calcutta, the technicians, all those people have worked right, to make this successful. One particular name which I would like to say is a very senior functionary of our ARSP Calcutta chapter, Shri Kunj Bihari Singh Rania ji. Can you please stand up? This is every day from 7 o'clock in the morning, you see, till about 10 o'clock, we had been working. आइए से नानिया जी आप आइए प्लीज. सर हमारे यहाँ एक अन्नपूर्णा का भी कंसेप्ट है, तो जो यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में रुके हुए थे उनके लिए सुबह 7:30 बजे जाकर नाश्ता बनवाते हैं, और जब कॉन्फ्रेंस लंच और डिनर नहीं होते थे तो उनका लंच और डिनर का भी तो हमारे लिए अन्नपूर्णा का भी काम करते थे हमारे लिए. So this is only one of the names. Of course, there are many names. So I will invite Dr. Kamal Mishra now to present a formal vote of thanks and go ahead with the formalities of donations, etc. of the people who are there. Thank you very much. Do you want us to be here or do you want us to be प्रोफेसर गौरव मैडम, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ. इसको हम थैंक्स की जगह पे, धन्यवाद की जगह पे हम एक व्यक्ति को, मैं इंडिविजुअल नाम नहीं ले रहा हूं, मैं एक व्यक्ति के प्रति दिल से, दिमाग से आभार व्यक्त करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर इस काम को अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचाया है. हमारे स्टूडेंट्स, मैं आपका आभारी हूं, हमारे वर्कर्स, हमारे कलीग्स, मैं सभी का, लेकिन वाइस सेशन की जो चेयरपर्सन है, मैं इनका विशेष तौर पर आभारी हूं, क्योंकि इनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, एक्सीलेंसीज है हमारे साथ. तो मैं एक बार फिर से कहते हैं, मधुरम समापे संस्कृत का कहावत है, और हम समापन के अंतिम चरण में हैं. ऑनरेबल पीसी मैडम से मेरी बात हुई है, बहुत सारा काम है, सिंडिकेट की मीटिंग है. उन्होंने कहा कि जब बोलना होगा, जब बताना होगा तो मुझे बुला, मैं बुलाऊंगा उनको, मैं उनसे निवेदन करूंगा. लेकिन मैं दो बात बताना चाहता हूँ प्रोफेसर गुप्ता मैडम को बुलाने के पहले, कि थोड़ा सा हम कुछ काम करने जा रहे हैं. एक तो जब तक हम लोग दिल से सम्मान न करें आप लोगों का, एक्सीलेंसेस का, हमें आनंद नहीं मिलता. आपका सम्मान करना जो भी कलकत्ता की धरती से, बंगाल की धरती से आप लोगों ने बिल्कुल होता है.
मैं अपने स्टूडेंट से कहूँगा कि वो प्रोसीड करें इधर और हमें सम्मान फिर सबसे पहले हम डॉक्टर सरिता बुद्धि जी का जो सम्मान है ये अध्यक्ष महोदय के हाथों में कराना चाहेंगे। अब मैडम प्लीज अब आप यहाँ से Dr. Sarita Guru, who is the felicitating Shri Shyam Parambe, and Kamal Kishore Mishra, the head of the Department of Sanskrit, Sarita ji is being felicitated by Dr. Kamal Kishore Mishra. An aeroplane also, so I get back. इस डिपार्टमेंट की तरफ से बात Now a felicitation class for Sarita ji. There is a Sanskrit shlok in her praise, and it's Bengali and English translation in verse.